Welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent
7 ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡಚಣಿನ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ. 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ರತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಬೀರ್ ಅವರ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಚೆಂಡಿಗೆ ದಾಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ, 2 ರನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಬೀರ್ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಬೀರ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಜಾಬೀರ್. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ರತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9. ಯಾವುದೇ ಗೂಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ತೌಸೀಫ್. ತೌಸೀಫ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತ್ಯಾಗರಾಜ್. ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೌಸೀಫ್. ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ರವರ ಎಸೆತ. ತೌಸೀಫ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ರವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಓಡಾಟ, 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಮ್
ತೌಸೀಫ್ ರವರ ಮೂರನೇ ಸತ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 14 ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಸೀಫ್ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರಿಗೆ 4ನೇ ಸತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸತ ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಹುದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್. ಪ್ರಥಮ ಹುದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡ. ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಹುದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಹುದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್. Very good morning, everyone. And yes, Dhanush, after 1.4 overs completed, 14 for 1. And in the morning session, it's a little bit of shady sunshine. And here is the 2 umpires in this match. There's Azmal Nandavar as well as Vivek Bolur. So friends Kutar getting their good start and losing a very good batsman. There's losing Pritham in that second over of power play. And here is Tausif once again far down the off stump, just driving that. The left-hander batsman Afil is a new face in the friends Kutar team. We are seeing here in this prestigious tournament organized by Friends Urwa group, and as well as they're organizing that Friends Trophy 2026 with the leadership of Vincent and Lara Prasad and Sudesh Bolur. 3 organizers that were always active in their sports field and always supportive people for all the cricketers. I have seen it. And after completion of 2 overs, score is 16 for 1. And in our scorebook, as a scorer, we are here is a Ratish Raj. It's a smiley face, he's laughing. Very good morning, everyone, all the teams and also the medias. Shine Sports. Nisar is the bowler in the 3rd over. 6 overs match and 2 overs power play, and 4 bowlers have to bowl, and 2 bowlers can bowl 2 each overs, and other 2 bowlers can bowl 1 over. That's a 6 overs match. Total timings has been given. That is 28 minutes for the innings. The very good bowler Nisar not taking his big run up, just standing by 2 to 3 steps and bowling. Maybe I saw that in the previous match he got some cramps in his legs, so that he is just bowling with the 2 steps. And see that Apish, the Tagraj driving that to the extra cover region, but little bit wideish field before collecting the ball. Batsman cross for a couple of runs. Score is now jumps to 18. Nisar to Tagraj. Nisar from pavilion end. Again, good delivery. Very good delivery. Beautiful delivery. There's limited over edition deliveries. Always
almost such a deliveries will become dotted deliveries because the ball after pitching, taking a slight turn with the bounce, definitely batsmen will have some trouble to play that deliveries. It's like a overarm delivery, and you can't imagine that bounce of the ball. And after that, a single coming from the bat of Tyagaraaj. Score jumps to 19. 19 for 1, losing Pritham. And one more commentator joining us. There's a Rashid. Very good morning, Rashid. And very good delivery once again. But hitting the pads, ball dripping down to leg stamp, hitting the pads of batsman Shafil. Just a leg by call by umpire. One more run added to the total. So yes, good morning, Pradeep sir. This is definitely turning out to be one more good day of cricket for Underarm cricket. And whenever you see Urwa, we are having the morning matches. It's always the bowlers dominating. And Nisar is definitely bowling in a great line and length and troubling the batters. This turning out to be a great over, which comes to an end. Just 3 conceded in this over. In total, 4 runs came to the scoreboard, 1 in the form of leg by. So 4 runs added and 20 on the board after the completion of 3 overs. Afil and Tyagaraaj. They are certainly looking to get more runs on the board. Tyagaraaj already scored 7 on the board after facing 12 deliveries. But if he stays in the middle for another 3 overs in this first innings, I think the scoreboard is going to look massive. Because 40 on the morning time, they're already got 20 in the first 3 overs. If they can get another 20 runs in the remaining 3 overs, I think that's going to be a good total on the board, isn't it? Yes, Rashid. In the morning session, almost 40 plus runs is always a fighting total. We are having a lot of years. We are seeing this ground, and in the morning session, the wind that blows little bit. Not in a tight way, it's just a soft wind blows, and when the ball is in the morning, there will be a little bit of moisture in the ground also. Then that is why even ball is not coming to the bat very quickly. After 1 hour or 2 hours of the sunshine, then the ball will come as usual. It will make some little bit of good speed in that mat. Yes, exactly. And also team Friends Kuttar, they got some good bowlers. And in the meantime, no ball which has been called. So yes, for the restriction of the fielders, the no ball which has been called. Azmal and Vivek challenge bowler to on-field umpires. They're doing a great job. So three fielders out behind that popping crease. So that's a violation they made in the leg stump. So that's the reason why the umpire has called no ball. I think this is what the experience and good captainship is required, because it's the job of wicketkeeper or the captain more than the bowler. He needs to ensure. So yes, they had 3 fielders behind that popping crease in the leg side. So yes, that's the reason. You need to have understanding of the rules and regulations of the game. Oh, that one completely misses the wicket keeper, and the backup doesn't come in right time, because the batters they cross for a bye single, and scoreboard now moves on to 22 for the loss of 1 wicket. 3.1 overs proceedings are complete so far. Afil is an all-rounder. Usually represents his home team, New Kirti Akkarekere. They're all the youngsters formed a great team in Ullal Cricket Association, and this young man has been playing great cricket, Afil, along with his partner Tyagaraaj. Tyagaraaj is a well-known face. Oh, struck that one pretty hard. Is he getting the distance? I think the fielder has tried his level best. Just going to wait for the confirmation. I think it looks very fine, and yes, that has been saved. That's
certainly I think he saved 4 runs maybe. In fact, it has been referred to the third umpire to check for the whether it's going to be a boundary or a maximum, because if it touches the line and then jumps and connects with the ball, it could be a maximum. Jabir so far has done not so impressive, because he's bowled in a line and length to Tyagaraj. It looked like almost a very easy way for him to Tyagaraj to dispatch it. So 9, Tyagaraj batting on 9 after facing 13 deliveries, but we are just waiting for a crucial decision. And for the second match of the day, I request Brothers Makyar and Galaxy Jokate, please come and start the signing procedure. And it's a save, just 2 runs added. So fantastic work from the fielder. Certainly saved 4 runs for his team. That was an absolutely fantastic save. These kind of fieldings are going to be the key difference in the second innings. If they win by a margin of 2 to 3 runs, I think it's going to be this save that could be the reason for them to win this game. So United Suratkal, they certainly need to make more good fielding, and more than the good fielding, they need to do a great job in the bowling department. Oh, that one almost he came close towards taking that, but couldn't manage to hold on to that. So ball landed perfectly, and Tyagaraj gets another 2 added into the total. With that couple, scoreboard now looks at 26 for the loss of 1 wicket. And this is Friends Trophy 2026, day number 2. Oh, struck that one pretty hard. This time it carries to the fielder and is taken comfortably. Wicket number 2 of Friends Kutar is back into the pavilion. Friends Kutar certainly wouldn't want to lose the wicket of Tyagaraj at this stage, because it certainly looks like losing a well-settled batsman like Tyagaraj. I think, Pradeep, at 26, they're losing Tyagaraj. Tyagaraj was already striking the ball very well. Now the incoming batsman, new batsman, is going to have a lot of pressure, especially coming in at 4th over. And then you are expected to play a very fast-paced innings, scoring big runs. And that's not going to be such an easy job. Nishan comes into the middle. Nishan is a good striker, is a very calm and composed striker, but is a slow starter, a bit slow starter, and he can strike the ball very well as well. So Nishan has got a lot of potential, but he's got a lot of responsibilities and pressure as well on his shoulders to play a good innings here. So yes, once again, I would like to remind all the players of Brothers Makyar and Galaxy Jokate, the signing charts are opened. So I request all the players, please immediately complete the signing procedure. Oh, that's a good fielding from the young man at that deep extra cover region. So that single, and that's a good thinking from Nishan. He's coming fresh into the middle and taken a single and given the strike to Afil, who's well settled in the middle. He has faced 4 deliveries, so Afil, he would need to take the role of Tyagaraj now, because scoring runs, someone needs to do the job of attacking the bowling lineup. If they play a more defensive cricket, it's not going to be enough score on the board, especially in the morning time. Oh, this is, I think, maybe the ball has come through the wickets, or maybe after hitting the legs of the wicket keeper, maybe they are appealing for that automatic stump out, but I think the batsman is quite safe. So they managed to get 1 run in the form of byes. So scoreboard after the completion of 4 overs, 28 for the loss of 2 wickets.
So 8 runs conceded in total in this over, and the bowler Jabir, he just conceded 6 runs because 2 runs came in the form of byes. So doesn't count in the account of bowler. And now Nishan inspecting the ball because he knows now they have just 2 overs play remaining. If Nishan and Afil is able to put 20 runs from the remaining 2 overs, I think that's going to be a massive total on the board. 28 already registered for the loss of 2 wickets. So last 2 overs play remaining. Certainly the batters of Friends Kuttar, they would need to attack because they got some good quality batters still remaining. There is Mahesh, Pradeep still waiting for their turn. They are very good in striking the ball as well. Oh, that is quick running in between the wicket. Fantastic running in between the wicket from Nishan, because in the first time he was running towards the danger end and he completed that very quickly and made it onto that safe end right in time before the throw was received from the bowler. So 2 added. Nisar starting off the proceedings with conceding 2 runs. In his previous over, he just conceded 3 runs in his first over. But here in the first ball itself, 2 runs have been conceded. That's a good stroke. Will they be able to convert that into 2? That could be a chance for a run out. No, the throw comes quite late. These are all the mistakes that is going to make team United Suratkal feel a lot of pressure in the second innings. So Nisar, ball which is racing down the leg side. Bice, which is the signal, came from Vivek, challenge bowler, the main umpire, along with Dasmal. Nisar, he needs to bowl like this because deceiving the batters, he shouldn't even bowl in the line of the wicket. He should deceive the batters in order to play that dot deliveries. If he can manage that, struck that one pretty hard. I think it doesn't, in fact it goes all the way. He couldn't manage to clear the fence, but 1 bounce and into the fence for 4 runs. Scoreboard now jumps up to 37. That's a good boundary because that is going to boost the run momentum for Friends Kuttar. They're slowly and steadily they're getting in to this game. They definitely would want to cross that psychological advantage mark of 45 because if you cross that 45, it's almost going to look like you're nearing towards that 50 run. And if you're having such a good total on the board, especially in the morning time, Friends Kuttar are having a fantastic bowling lineup. They're going for the second as well. Easily they're going to collect that second. Nisar really disappointed with his fielders. He's not at all happy with his fielders because he knows that it should have been just a single, but a little bit of a late collection and a couple has been conceded there. Nisar turning out to be very costly in this over. He's conceded 8 runs so far, and this time once again mistake in the fielding department. He's totally disappointed. One more couple conceded at the last delivery of the over number 5. 41. We were just talking about Pradeep 40 runs and now it's 41 already. Still 1 over left. Yes, Rashid, this over is a little bit costly for United Suratkal, and it's a good over for Friends Kuttar. Managed to get 12 runs, 12 plus runs, I think so. 13 runs, scorer Ratish saying is 13 runs from Nisar, and all couple of runs has been done by the misfield. There's a fumbling by the fielders of United Suratkal. Otherwise that will be all the singles, because the lack of fielding practice is not up to the mark.
so that they are giving that runs for opposition. So this is the last over, and from here, if already it is a very good total now, still 6 more balls to deliver, and from here, if Friends Kutar gets in this over at least 8 to 10 runs, then that will be the very big score when chasing for United Suratkal, Rashid. Yes, absolutely. And Friends Kutar have got some of the best power play bowling. They have someone like Mahesh starting the proceedings for them. And it's not going to be such an easy job for team United Suratkal to chase down anything above 45 to 48. It's not going to be such an easy job. So yes, they also got Adi in the lineup as well. Adi, Sanil, and they're also having Jagdish as well. Pradeep as well, the captain of the side, is also a fantastic bowler. So Friends Kutar, they are very much well sorted with the bowling. And even in the 30 over format, they are very much known for their bowling more than the batting. Oh, struck that one pretty hard in the air, and oh my goodness. This has been horrendous fielding from Team United Suratkal. And one shot which has been called. And Nishan making a huge mistake. Because at the non-striker's end, he was shot. This is a huge mistake coming in from Nishan. Even though he connected that reverse very well. Normally doesn't play that stroke. Struck that one pretty neatly. But this time it will be carried to the fielders and safely taken. Almost like a half-hearted shot. So 43 for the loss of 3 wickets. 5.3 overs proceedings are complete. Sufyan definitely providing a good over, because it's not his mistake that catch was dropped in the previous delivery. So now Mahesh into the middle, and Mahesh also appreciating the innings played by Nishan, because he scored 10 runs in just 6 deliveries, and courtesy of that they're having 43 on the board for the loss of 3 wickets. And this man Mahesh, what a career he has been having last 2 seasons. Last 3 more to go. 43 on the board. Last 3 more balls are remaining. So yes, one shot is there. So definitely 43 on the board. Just 2 runs came in this over. 41 before starting this over. One in the form of byes, one in the form of single. So ball which is going racing away from the leg stump. Wide is the signal. And this wide is going to get extra of 2 runs added into the total, because batters crossed for a single as well. Mahesh and Afil definitely needs to show one good shot here, because he's batting on 5 runs after facing 9 deliveries, and this time he played in the air, top edge, and should be taken. Curtain ball for Sufyan to dismiss Afil. Afil is back into the pavilion, and it's not such an easy job. Afil in the local pool matches in Belteria, Ullal region, is striking the ball very well in the late overs. But here, coming to the Lords of Underarm Cricket, UCG Urwa, it's not at all going to be such an easy job. But he was given a good opportunity from Friends Kutar, but couldn't capitalize it. But once you are having the opportunities to play in big teams like Friends Kutar, you need to showcase your A game. You need to bring your best to the table, because the opportunities are not at all so much. It's very limited, because if you can perform with the bat very well, you're going to get more and more opportunities. 45 on the board for the loss of 4 wickets. Pradeep into the middle, the captain of Friends Kutar, one of the most successful captains of Friends Kutar this season. United Suratkal, on the other hand, they would be looking to get the last 2 deliveries very much economical, because already they have given away 45 runs. Oh, that's a fantastic delivery. I think the wicketkeeper missed. Wicketkeeper is the one to blame here, because bowler did a great delivery. So just 1 run added in the form of byes. Last delivery remaining in this first innings for Friends Kutar. Sufyan balls. Mahesh played it down the leg side. They're going for the first run very quickly. Pradeep is coming for the second as well.
They are going to get a 2 runs for that, and they finish the innings with that couple of runs. Scoreboard is having a total of 48. It's a massive total, especially in the first match of this Friends Trophy 2026 at this day number 2. And one man, I think, if the credit goes to, is Tyagraj. And in the later on innings, it's Nishan who's just यस धन्यवाद यहाँ पर रशीद के लिए और सभी दर्शकों को, सभी खिलाड़ियों के लिए इस मेगा श्रृंखला पर स्वागत यहाँ पर कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स उर्वा प्रस्तुत यहाँ पर करते हुए फ्रेंड्स ट्रॉफी 2026 इस वक्त इस मेगा श्रृंखला की दूसरा दिन के पहला मैच यहाँ पर खेलते हुए यूनाइटेड सूरतकल और फ्रेंड्स गुत्तार के बीच आफ्टर विनिंग द टॉस दे डिसाइडेड टू बॉल फास्ट। शुरुआती पर गेंदबाजी करने के बाद 48 इस वक्त पहला इनिंग्स करने वाले खिलाड़ी यानी कि फ्रेंड्स कुत्तार इस वक्त स्कोर कार्ड पर स्कोर यहाँ पर बनाते हुए और 49 इज चेसिंग टोटल फॉर यूनाइटेड सूरतकल। और इस मेगा श्रृंखला के दूसरा दिन इस वक्त शुरुआत होते हुए शुरुआती का पहला इनिंग्स यहाँ पर शुरुआत होने के बाद दूसरी इनिंग्स इस वक्त शुरुआत होते हुए और ऑफिशियल वहाँ पर देखे जाए तो इस मैच के मैन अंपायर विवेक बोलोर, वन ऑफ द टॉप एक्सपीरियंस अंडरआर्म क्रिकेटर और वर्तमान क्रिकेट पर अब अंपायरिंग का कार्यभारी बात है और स्कोर लग अंपायर अजमल नंदावरा और तृतीय अंपायर प्रदीप कोटारी और हमारे साथ इस वक्त माइक्रोफोन पर जुड़ते हुए रशीद और स्कोरर रितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। पहला गेंद लेफ्ट आर्म गेंदबाज इस बार गेंद को वहाँ पर ढकेल दिया थे लॉन्ग ऑन वाइडिश लॉन्ग ऑन के निशान पर गेंद जाकर टकराए तो फील्डर वहाँ पर तैनात था। गेंद को फील्ड करने के वक्त पर बल्लेबाज इस वक्त अपने छोर इस वक्त बदलता है यानी कि पहला रन इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुका है अंक पट्टी पर। दूसरी गेंद लेकर तैयार आदि वन ऑफ द एक्सपीरियंस नया खिलाड़ी और मैंगलोर परिसर पर घोरी यंग बॉयज पांडेश्वर पर खेलने वाले खिलाड़ी अब इस वक्त एक सशक्त गेंदबाजी के लाइनअप यहाँ पर कहना पड़ेगा फ्रेंड्स कुत्तार के और इन लाइनअप के सामने किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते इस स्कोर को यहाँ पर पीछा करना है तो पावर प्ले पर कम से कम 20 या 25 रन और यहाँ पर भरनी चाहिए। एक बढ़िया स्कोर इस वक्त पीछा करते हैं। तीसरी गेंद एक अच्छी गेंद फिर से दूसरी गेंद आई थिंक तीसरी गेंद इस वक्त बिंदी गेंद के साथ गेंदबाजी पर आधी यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अली मुद्दिना पंद्याकोट ब्रदर्स मक्यार अದೇ ರೀತಿ
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಜೋಕಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ और इस बार गेंद को चल दिया सीधे गेंद लगन सीमा रेखे से बाहर राइट्स को आनंद है यस इट्स अ बिग जिस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए पावर प्ले इस वक्त इस्तेमाल करनी ही चाहिए क्योंकि वो जाने जाता है कि एक बढ़िया स्कोर है यहाँ पर इस स्कोर का पीछा करना है तो एक उछाल कर बल्लेबाजी करने चाहिए पावर प्ले इस वक्त यूज करनी ही चाहिए और चौथी गेंद पर छक्के इस वक्त लगाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर निकलते हुए और ऐसा करना पड़ेगा थोड़ी सी प्रेशर इस वक्त गेंदबाज के ऊपर आ चुका है क्योंकि इन्होंने पिछली गेंद पर छक्के देने के बाद वहाँ पर पिछली गेंद पर छक्के यहाँ पर देने के बाद कुछ अंत तक थोड़ी सी बदलावन करने के लिए कोशिश की लेकिन गेंद बाहर की ओर कट होने के बाद इस बार अच्छी गेंद और इसी के साथों साथ भिंदी गेंद पिछली गेंद वहाँ पर संतुलन किया जाए तो पिछली गेंद पर ऑप्शन से काफ़ी दूर निकल चुकी थी गेंद को वहाँ पर फेंके लेकिन अब इस वक्त थोड़ी सी बदलावन करने के बाद परिवर्तन के तौर पर स्लोअर वन थे लेकिन अंदर की ओर ऑफ कटर गेंद थे और बल्लेबाज चुके डॉट डिलीवरी के साथ अगला गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद वहाँ पर और इसी के साथों साथ भवर की समाप्त हो चुका है फर्स्ट ओवर हैज बीन कंप्लीटेड हियर फैंटास्टिक मिक्स अप स्टार्ट फॉर यूनाइटेड सूरतगढ़ एज वेल एज द फ्रेंड्स कुतार के लिए और शुरुआती पर 3 गेंद पर सिर्फ 2 रन बने और चौथी गेंद पर वाइड और सिक्सर के साथ एक बढ़िया स्ट्रक वहाँ पर छक्के के साथ रनों की संख्या इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 9 रन पहला ओवर इस वक्त समाप्त हो चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा पावर प्ले ओवर इस इनिंग्स के एक महत्वपूर्ण ओवर है क्योंकि वो जाना चाहता है कि एक बढ़िया स्कोर है और इन स्कोर का पीछा करना है तो पावर प्ले इस वक्त इस्तेमाल करने ही चाहिए और कम से कम पावर प्ले ओवर पर 20 या 25 रन यहाँ पर बने तो आते हुए 4 ओवर पर रन से आसानी के साथ बना सकती है और कुछ अंत तक बातचीत करने के बाद फील्डिंग में फिर से यहाँ पर परिवर्तन करते हुए जमावट वहाँ पर करने के बाद फ्रेंड्स कुत्थर अंडरआर्म क्रिकेट पर कसकर यूसीसी ग्राउंड पर ज़्यादा तक मैच खेलते हुए और अंडरआर्म क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आई थिंक 3 to 4 times दे लॉस्ट सेमीफाइनल इन द अंडरआर्म क्रिकेट वर्ल्ड कप RR पाई मेमोरियल ट्रॉफी पर 3 या 4 बार सेमीफाइनल पर हारते हुए बाहर की ओर निकल चुके थे लेकिन अब इस वक्त शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम 6 ओवर का खेल है इस बार पहला गेंद ऑप्शन से काफ़ी दूर निकलने के बाद 6 ओवर का खेल है और कुछ अंत तक बदलावन क्रिकेट यानी कि ज़्यादा तक 30 ओवर की क्रिकेट पर डिफेंसिव खेलने वाले खिलाड़ी अब इस छोटी फॉर्मेट पर ज़्यादा तक उछाल कर बल्लेबाजी करते एक एग्रेसिव वहाँ पर क्रिकेट खेलते इस बार टॉप एज और इट्स टेकन दूसरी गेंद पर गेंद को स्लॉग स्विप खेलना चाह गेंद बल्ले की बेहतरीन किनारा लगने के बाद आखिरी मौके पर टॉपेज लग चुकी थी और स्ट्रोक पर दम नहीं था कि बाउंड्री लाइन को बाहर कर सके और सीधा खाली जगह वहां पर ढूंढे डीप मिड विकेट को लेकिन गेंद जाकर टकराए वाइडिश लगान की निशा पर आदि और गेंद की निशा आते हुए कैच वहां पर लपट चुका है और इन कैच के बदौलत विकेट नंबर 1 इज बैक इनटू द पवेलियन आई थिंक द बैट्समैन who got a sixer not that much बैट्समैन इमरान इन्होंने छक्के लगा चुके थे लेकिन अब इस वक्त सलाम आरंभिक बल्लेबाजी उतार चुके थे लेकिन अवकाश कुछ खास बल्लेबाजी पर नहीं कर पाया और इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर सिर्फ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर रनों की संख्या वहाँ पर देखे जाए तो थोड़ी सी अच्छी स्कोर है और इस वक्त 5 गेंद को सामना करते हुए कम से कम 7 या 8 रन वहाँ पर बने तो रनों की संख्या पर कुछ अच्छी स्कोर यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं इस बार रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेलना चाहा लेकिन गेंद बल्लेबाजी को वंचित करने के बाद विकेट कीपर की दस्तानों पर गए और जैसे गेंद को कलेक्ट करने के बाद तुरंत स्टंप आउट वहां पर करते हुए जोरदार अपील करें और देखना पड़ेगा कि अंपायर इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए मदद मांगते हुए और देखना पड़ेगा क्या अंपायर इस वक्त तृतीय अंपायर अपने डिसीजन इस वक्त निर्णय देते हैं देखना पड़ेगा
और काबिल तारीफ यहाँ पर करनी चाहिए साइंस स्पोर्ट्स इस मेगा श्रृंखला के लाइव टेलीकास्टिंग यहाँ पर बनाते हुए और ब्रॉडकास्ट और कैमरा भी यूज़ वहाँ पर करते हुए इस मेगा श्रृंखला पर और देखे जाए तो तृतीय अंपायर के लिए कुछ मुश्किल वहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उतना हाई क्वालिटी कैमरा इस वक्त लगाते हुए साइंस स्पोर्ट्स और अभिवादन करना चाहता हूँ इस मेगा श्रृंखला पर अपने लाइव टेलीकास्टिंग पर साथ यहाँ पर देते हुए और तृतीय अंपायर कुछ अंत तक परिशीलन वहां पर करने के बाद और इसी के साथ आउट यहाँ पर घोषणा देते हुए निर्णय इस वक्त दे चुका है absolutely fantastic wicket keeping electrifying the stumps behind the wickets there is no doubt at all जिस तरीके से गेंद को कलेक्ट कर रहे हैं तुरंत वहां पर स्टंपआउट कर चुके थे वहां पर बल्लेबाजी को कोई मौका नहीं अपने पैरों के पैर इस वक्त रखने से पहले वो स्टंप्स को वहां पर गिल्लियां उड़ चुके थे और इसी के साथ साथ उठा चुके थे और बल्लेबाज नंबर 3 आने वाले बल्लेबाज इस वक्त विकेट गिरते हुए और इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर रुकावट होते हुए 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 गेंद समाप्त करने के बाद वेरी गुड कमबैक यहाँ पर कहना पड़ेगा गेंदबाज सनील वन मोर एक्सपीरियंस कैंपनर फ्रॉम द साइड ऑफ फ्रेंच कुत्तार पहला गेंद वाइड वहाँ पर फेंकने के बाद 2 गेंद पर इस वक्त विकेट यहाँ पर उखाड़ते हुए यानी कि हैट्रिक इज ऑन हैट्रिक क्योंकि पिछली विकेट कैच आउट के बाद स्टंप आउट वहाँ पर हो चुका है इज ऑन हैट्रिक सनील इज ऑन हैट्रिक नाउ और बल्लेबाज नंबर 4 पर बशीर उतारते हुए इस बार गेंद को चलना चाहा झुके डॉटेड डिलीवरी और इन भिंदी गेंद के साथ तीसरी गेंद यहाँ पर समाप्त हो चुका है चौथी गेंद हमसे दूर वाल जोर से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए इस बार सीधे गेंद को खेले गेंद इस वक्त लगन सीमा रेखा से करीब गेंद निकालते हुए पहले अटेम्प्ट पर फील्डर वहाँ पर थे और फील्ड करने के बाद तुरंत आगे की ओर निकाल चुकी थी क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाए बैलेंस नहीं कर पाए अपने रनअप को और आखिरी मौके पर गेंद को फिर से वहां पर कलेक्ट करने के वक्त पर बल्लेबाज 2 रन संपूर्ण कर चुका है दौड़कर इन 2 रन के साथ रनों की संख्या पर 2 विकेट के नुकसान पर अगला गेंद इस बार फिर से गेंद को चल दिया टॉपेज लेकिन फील्डर थोड़ी सी दूर 1 बाउंस कलेक्टेड बाय द फील्डर एक टिप्पा करने के बाद क्षेत्र रक्षक वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए और रनों की संख्या पर एक और रन यहां पर बनने के बाद रनों की संख्या पर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज वो जाना चाहता है कि अब अंतिम गेंद है पावर प्ले के और भटिया स्ट्रोक इस वक्त खेलने की कोशिश पर कुछ हद तक हवा का इस वक्त जरूर परिशीलन करते हुए और अंतिम गेंद लेकर तैयार सनील गेंदबाजी पर इस बार गेंद को वहां पर चिपकिया सीधे गेंद मिड विकेट के साथ फील्ड होते हुए 1 रन वहां पर मिलेगा और दूसरे रन की कोई कोशिश नहीं और यहाँ पर इन 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर इस वक्त समाप्त हो चुका है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओवर नंबर 2 द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 14 ऑन द बोर्ड लॉस ऑफ 2 विकेट और अगला मैच यहाँ पर खेला जाएगा ब्रदर्स मक्यार और गैलेक्सी जोकटा के बीच इन दोनों टीम के सदस्यों के साथ यहाँ पर दरख्वास्त करना चाहता हूँ अपने हस्ताक्षर पट्टी पर हस्ताक्षर संपूर्ण करें और टॉसिंग के लिए माइक्रोफोन की कोठड़ी पर आ जाए दोनों टीम के कप्तान इस वक्त थोड़ी सी ध्यान दे ब्रदर्स मक्यार और गैलेक्सी जोकटा के बीच अगला मैच यहाँ पर खेला जाएगा यस अब जो रिस्ट्रिक्ट पावर प्ले थे वो पावर प्ले इस वक्त समाप्त करने के बाद और कुछ अंत तक फील्डिंग में जमावट करते हुए तीसरी ओवर की शुरुआत का गेंद रिवर्स एंड इट्स
gone not over the fence, one bounce over the fence for 4 run. जिस तरीके से स्ट्रोक वो लगाए थे वहाँ पर रिवर्सिप करते हुए स्विच इट इस वक्त इस्तेमाल करते हुए सीधे गेंद को खेले, गेंद डीप थर्ड मैन नसीमा रेखा से बाहर जा चुका है 4 रन के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे आखिरी मौके पर प्रदीप गेंदबाजी करने के लिए, तो आखिरी मौके पर गेंद को वहाँ पर ठीक तरीके से गेंद के लाइन पर वहाँ पर नज़र लगाते हुए और अंतिम क्षण पर रिवर्सिप के साथ रन इस वक्त बना चुका है 4 रन के लिए। और अगला गेंद इस बार सीधे फिर से गेंद को स्टीयर किया, 1 रन वहाँ पर मिलेगा दूसरी रन की कोशिश पर, लेकिन सिर्फ एकमात्र रन वहाँ पर मिलेगा। और अच्छी बल्लेबाज इमरान द्वारा दूसरी गेंद पर इस वक्त सिंगल्स लेने के बाद इस वक्त रनों की संख्या पर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब जो रिस्ट्रिक्ट पावर प्ले समाप्त करने के बाद कुछ अंत तक शतरक्षकों इस वक्त 30 दायरे की बाहर। द फील्डर्स आर स्प्रेडेड नाउ, लगा ऑफ डीप विकेट और डीप थर्ड मैन के निशान पर, वाइड थर्ड मैन के निशान पर, फाइनल के निशान पर फील्डर को वहां पर सजावट करते हुए इट्स गॉन ऑन द वे, यस इट्स अ बिग लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इस वक्त बशीर लेग कटर गेंद इस्तेमाल करना चाहा, आखिरी मौके पर लेग स्टंप पर आते हुए काफी बाहर थे गेंद और इस वक्त गेंद को कनेक्ट करते हुए सीधे गेंद को उछाल दिया डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ नाउ दे आर स्ट्रांगली बाउंस बैक, ऐसा कहना पड़ेगा, कम बैक यहाँ पर हो चुका है। इन छक्के के साथ रनों की संख्या पर 25 रन, दे हैव कंप्लीटेड द क्वार्टर सेंचुरी एंड लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बॉल नंबर 3 इन द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अप इंडिया, इट्स गॉन ऑन द वे, यस इट हैज टेकन बाय द फील्डर। जो स्ट्रोक वहां पर खेलना चाहा टॉप एज पर लगाते हुए गेंद को उछालना चाहते थे लॉग ऑफ की निशान पर, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आ पाए और टॉप एज पर लगने के बाद कैच यहां पर ले चुका है और इसी के साथ साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। और इस विकेट के साथ यहां पर तीसरी विकेट इस वक्त गिर चुका है। शायद ऐसा कहना पड़ेगा एक बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक्चुअली रिक्वायर्ड वहां पर नहीं थी क्योंकि रन्स वहां पर बन रहे थे, बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट अपना नहीं चाहिए थे। और इस वक्त विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज एज अ नंबर 5 बैट्समैन इनटू द मिडल इस वक्त नौशीर आते हुए पहला गेंद पर सिंगल्स ले चुका है। इन सिंगल के साथ रनों की संख्या पर 26 रन 26 ऑन द बोर्ड। नाउ दे हैव टू गेट 23 रन रिमाइनिंग 19 डिलीवरी एंड अप इंडिया। शायद देखना पड़ेगा कि क्या अंपायर इस वक्त इशारा यहाँ पर क्या इशारा देते हैं और क्या गेंद बल्लेबाज की भल्ले पर लगाए या शरीर पर लगाए, वहाँ पर कुछ अंत तक बातचीत करते हुए अंपायर असमल लंदावर और इस वक्त विवेक बोलार जी यहाँ पर इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए। और शायद गेंदबाज करने के बाद शायद अंपायर के सामने वहाँ पर आए थे, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहर की ओर निकल चुकी थी। लेकिन अंपायर इस वक्त कुछ अंत तक तृतीय अंपायर का मदद मांगते हुए क्या अंपायर इस वक्त निर्णय देते देखना पड़ेगा।
एंड इट्स गॉन, विकेट यहां पर गिर चुका है। और इस वक्त पहला गेंद बल्ले पर लगने के बाद इनके सर पर लग चुके थे और टपच लगने के बाद गेंदबाज खुद आकर कैच को लिए और कैच को लपट चुके थे और इसी के साथ साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर 3 और इस वक्त समाप्त हो चुका है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओवर नंबर 3 द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 26 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब तीसरी ओवर समाप्त करने के बाद फिर से वहाँ पर गेंदबाजी पर बदलाव बनाते हुए चौथी ओवर जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो गेंदबाजी पर फिर से बदलाव करने के बाद वट मोर एक्सपीरियंस कैप्टन द बैकबोन ऑफ द टीम महेश कुत्तार इस वक्त गेंदबाजी पर आते हुए इस बार पहला गेंद एंड कैच टेकन, द फैंटास्टिकली टेकन बाय द कैच टेकन बाय द फील्डर। शॉट थर्डमैन की दिशा पर गेंद को स्टीयर करना चाहा, आखिरी मौके पर गेंद टॉपेज लगते हुए शॉट गली की दिशा पर फील्डर थे, आगे की ओर 2 या 3 कदम आगे बढ़ाते हुए सीधे गेंद को कैच लिए और रनिंग कैच यहां पर कहना पड़ेगा, थोड़ी सी शॉर्ट रन अप वहां पर ले चुकी थी जरूर और इसी के साथ साथ विकेट इस वक्त गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा रन्स वहां पर बन रहे थे, बशीर जो है गलत करने के लिए शुरुआत की है, इन्होंने बढ़िया स्ट्रोक की कोशिश पर विकेट वहां पर खोले तो इनके बाद एक और बल्लेबाज आते हुए नंबर 5 बैट्समैन इस वक्त विकेट गिरने के बाद एक और खिलाड़ी इस वक्त यानी कि पिछली 4 गेंद पर 3 विकेट इस वक्त गिर चुका है और इन 3 विकेट के साथ रनों की संख्या पर कुल मिलाकर 5 विकेट 26 रन के साथ 5 विकेट और 1 गेंद इस वक्त संपूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है चौथी ओवर की इस वक्त प्रगति पर दूसरी गेंद सुफियान एज अ नंबर 7 बैट्समैन इनटू द मिडल, अगला गेंद लेकर तैयार इस बार अच्छी गेंद बोल्ड एंड क्लिंच अप, 1 मोर विकेट इज बैक इनटू द पेविलियन। जिस तरीके से रन्स वहां पर बने थे, बशीर की विकेट गिरने के बाद नौशीर की विकेट गिरे और अब सुफियान की विकेट इस वक्त गिर चुका है और इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर स्थगित इस वक्त होते हुए 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर और इन विकेट की बदौलत रनों की संख्या अब यहां पर स्थगित हो रही है। वहां पर इनिंग्स देखे जाए तो पहला ओवर पर 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, दूसरी ओवर पर कुछ खास नहीं कर पाए, सनील के ओवर पर सिर्फ 5 रन वहां पर बने, तो तीसरी ओवर पर प्रदीप के ओवर पर रन्स बन रहे थे लेकिन विकेट वहां पर खोले और इन विकेट खोलने के बाद इस वक्त विकेट को वहां पर रोक नहीं पाए, विकेट रुका कर बल्लेबाजी करने वहां पर बल्लेबाजी करनी चाहते और बल्लेबाजी इस वक्त नहीं लगाते। इस बार अच्छी गेंद और इसी के साथों साथ लेग बाइस का इशारा, शायद गेंद टिपा करने के बाद लेग स्टंप्स की बाहर की ओर निकलने वाले गेंद थे और इस वक्त अंपायर ठीक तरीके से परिशीलन करने के बाद वहां पर इशारा करते हुए लेग बाइस का इशारा, अंपायर अजमल नंदावरा वर्तमान क्रिकेट पर एक खिलाड़ी और अंपायरिंग का कार्यभार निभाते हुए और सिर्फ मैंगलोर परिसर में पे नहीं सऊदी अरेबिया पर भी अपने अंपायरिंग का कार्यभार निभाने वाले इस वक्त अंपायर अजमल नंदावरा इस मेगा श्रृंखला पर हमारे साथ जुड़ते हुए अंपायरिंग का कार्यभार यहाँ पर निभाते हुए अगला गेंद
इस बार रिवर्सिप के साथ गेंद को चल दिया सीधे गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस एंड इट्स गॉन फॉर अ बाउंड्री 1 बाउंस 2 बाउंस एंड 3 बाउंस एंड गोइंग फॉर अ बाउंड्री। इस वक्त 3 टिप्पा करने के बाद गेंद को रुका नहीं वहाँ पर रुका नहीं पाया जर्सी नंबर 02 खिलाड़ी अफील गेंद के वहाँ पर पीछा करते हुए गेंद को रुकाने के लिए कोशिश करे, लेकिन गेंद इस वक्त इनको वंचित करते हुए और बीट करने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुका है 4 रन के लिए। इस चौके शायद टीम यूनाइटेड सूरत के लिए एक बूस्टर यहाँ पर दिखाई देता है, वहाँ पर देते हैं। इस बार सीधे गेंद रनआउट की खतरा हो सकता है, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित रिवर्सिप के जरिए फिर से गेंद को खेलना चाहा। आखिरी मौके पर गेंद बल्ले पर नहीं आ पाया और डॉटेड डिलीवरी यहाँ पर होते हुए इन डॉटेड के साथ रनों की संख्या पर 31 रन 13 गेंद अब बाकी 18 रन चाहिए। मैच इस वक्त दिलचस्प मूड पर आते हुए और देखना पड़ेगा कि अंतिम गेंद यहाँ पर बाकी अंतिम गेंद पर क्या बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर लगाते हैं या सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हैं। विकेट इस वक्त बचाकर बल्लेबाजी करनी चाहिए क्योंकि विकेट इस वक्त 6 यहाँ पर खुल चुका है। इस बार गेंद को चलना चाहा, फिर से वहाँ पर चुके डॉटेड डिलीवरी। ऐसे गलत वहाँ पर रुकानी चाहिए क्योंकि पिछली चौथी गेंद पर चौके वहाँ पर लग चुके थे। अब कम से कम आखिरी 2 गेंद पर 2 रन वहाँ पर बने तो एक अच्छी स्कोर वहाँ पर मेंटेन कर सकते, लेकिन कर सकते थे। अब इन 2 गेंद के डॉटेड डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्त हो चुका है, यानी कि इस ओवर पर सिर्फ 4 रन और समाप्त वहाँ पर 5 रन। विकेट इस वक्त 2 यहाँ पर गिर चुका है। इन 2 विकेट के साथ कुल मिलाकर 6 विकेट 31 रन। अब 12 गेंद बाकी 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और ऑफिशियल पर हमारे साथ इस वक्त रितेश द मैनुअल स्कोरर इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए और धनु भाई हमारे साथ इस वक्त स्कोर बोर्ड पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए और आधी नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक फ्रॉम द पेविलियन एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरुआत करने के लिए तैयार। 5वीं ओवर मैच डिसाइडिंग ओवर इस वक्त पेनल्टी ओवर यहाँ पर कहना पड़ेगा। पहला गेंद को ड्राइव करे, 1 रन वहाँ पर मिल चुका है। इन 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 32 रन 32 ऑन द बोर्ड। नाउ दे हैव टू गेट 17 रन रिमेनिंग 11 डिलीवरी। 11 गेंद 17 रन चाहिए। 17 किन टीम के लिए यहाँ पर खतरा होता है देखना पड़ेगा। और इन 11 गेंद पर 17 रन के वक्त पर दोनों खिलाड़ी सलामी बल्लेबाज इस वक्त जबीर और तौसीफ इस वक्त बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हुए। जबीर स्ट्राइक रन के निशान पर इस वक्त बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हुए। अगला गेंद इस बार सीधे गेंद को चलना चाहा, चूंकि टॉप एज एंड इट्स टेकन। One more wicket is back into the pavilion. जिस तरीके से बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधी एक छलाकबन खिलाड़ी गेंदबाजी पर इस वक्त शायद थोड़ी सी लेग कटर गेंद थी और परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी और उछालना चाहा। टॉप एज पर लगने के बाद विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर फिर से स्थगित यहाँ पर होते हुए 32 रन 7 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी टीम यूनाइटेड सूरत का और देखे जाए तो तीसरी ओवर समाप्त करने के वक्त पर वो कमबैक किए थे, वहाँ पर सही ट्रैक पर थे और विकेट वहाँ पर गिरने के बाद अपने स्कोर को वहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाए और इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर 32 रन 7 विकेट के नुकसान पर। Now 10 balls remaining, 17 have to get the badly required one big shot. एक बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त ज़रूर चाहिए और कहना पड़ेगा कि
क्या नंबर 8 या 9 बल्लेबाज इस वक्त वो छक्के या चौके यहाँ पर संपूर्ण करते हैं या सिंगल्स या डबल्स वहाँ पर खेलने चाहिए थे। अब इस वक्त भिंदी गेंद के साथ काबिल तारीफ करनी चाहिए आदि को। इन्होंने 3 गेंद पर सिर्फ एकमात्र रन दिए और 1 विकेट इस वक्त लेते हुए और इन सफलता के साथ चौथी गेंद इस बार रिवर्सिप के साथ गेंद को वहाँ पर छेड़े और गेंद इस वक्त सिर्फ एकमात्र रन वहाँ पर मिलेगा इस गेंद पर। चौथी गेंद समाप्त करने के बाद रनों की संख्या पर 33 रन, 18 बॉल्स रिमेनिंग, 16 हैव टू गेट 8 बॉल्स रिमेनिंग, 16 हैव टू गेट। 8 गेंद यहाँ पर बाकी, 16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और अब इस वक्त तौसीफ बल्लेबाजी पर आगे बढ़ाते हुए इस बार फिर से गेंद को उछलना चाहा, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद इस वक्त एड्स लगाने के बाद गेंद को ऑनसाइड के निशान पर घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद इस वक्त सीधे डीप फाइन लेग स्क्वायर लेग के निशान पर इस वक्त गेंद जाते हुए इस एक रन के साथ रन से यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अंतिम गेंद आदि इस बार ऑप्शन से काफी दूर निकलते हुए गेंद और इस वक्त एक्स्ट्रा की तरफ से 2 रन यहाँ पर मिल चुका है। जिस तरीके से बल्लेबाज प्रेशर में थे, दबाव में थे, वो दबाव इस वक्त थोड़ी सी यहाँ पर हटते हुए यानी कि एक्स्ट्रा के साथ 2 रन यहाँ पर मिलते हुए और अंतिम गेंद यहाँ पर बाकी। अंतिम गेंद पर कम से कम 1 या 2 रन वहाँ पर बने तो अच्छी स्कोर हो सकती है और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, विकेटें वहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए थे क्योंकि अंतिम गेंद पर सिंगल्स या डबल वहाँ पर लेते हैं तो आखिरी ओवर पर रन्स बना सकते थे, लेकिन अब इस वक्त विकेटें गिरने के बाद एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है यानी कि शायद तौसीफ की विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर फिर से स्थगित होते हुए 36 रन, 36 ऑन द बॉल। नाउ दे हैव टू गेट 13 रन्स रिमेनिंग 6 ಡೆಲಿವರಿ। ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ। ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಜೋಕಟ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಚೌಕಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ। और इन 6 गेंद यहाँ पर बाकी, 13 रन चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपेनर फ्रॉम द साइड ऑफ फ्रेंच कुत्तार इस वक्त महेश गेंदबाजी पर आते हुए और अंतिम ओवर की पहला गेंद लेकर तैयार। इस बार थोड़ी सी स्लोवर वन जानबूझकर शायद स्लोवर वन रख चुकी थी गेंदबाज। इस वक्त बल्लेबाज वो गेंद ठीक तरीके से देख नहीं पाए और बल्ले पर कनेक्ट नहीं कर पाए और बिंदी गेंद के साथ शुरुआत होते हुए दूसरी गेंद लेकर तैयार। गेंदबाजी पर इस वक्त महेश तैयार। इस बार रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेले, गेंद इस वक्त डीप गली की इशारा पर गली की दिशा पर गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए और इन एक रन के साथ 4 गेंद यहाँ पर बाकी। कम से कम 3 चौके या 2 छक्के इस वक्त लगाने चाहिए और देखना पड़ेगा कि क्या नंबर 10 बल्लेबाज इस बार सीधे गेंद को उछालना चाह चुके। डॉटेड डिलीवरी और इन 3 गेंद यहाँ पर बाकी, 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। फ्रेंच कुत्तार इस वक्त गेंदबाजी पर इस बार बॉलिंग क्लीन स्वीप, वन मोर विकेट इज बैक इनटू द पेविलियन। ऑफ कटर गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए बल्लेबाज, बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाहा लेकिन वो गेंद टिप्पा करने के बाद अंदर की ओर निकले और बॉल आउट के जरिए विकेट इस वक्त गिर चुका है।
अब अंतिम गेंद यहाँ पर बाकी, द लास्ट बॉल इज रिमेनिंग। अब गेंदबाजी पर महेश तैयार इस बार, फिर से डॉटेड डिलीवरी, ओवर की समाप्त, इनिंग्स की समाप्त और मैच के यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इन डॉटेड डिलीवरी के साथ फ्रेंड्स कुत्थार वन द मैच विद 11 रन्स, 11 रन्स पर इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार जीते हुए अपने अगले अंत को यहाँ पर प्रवेश कर चुका है। कंग्रेचुलेशन टीम फ्रेंड्स कुत्तार और ऑल द बेस्ट टीम यूनाइटेड सूरत कल फॉर योर फ्यूचर मैचेस। और अगला मैच, द वन मोर इंटरेस्टिंग मैच नाउ कमिंग अप हियर, ब्रदर्स मक्या टेकिंग अगेंस्ट टीम गैलेक्सी जगटे and waiting for the tossing ceremony of this prestigious Friends Urwa, proudly presenting the Friends Trophy to 2K26. And welcome Mr. Naddi as well as Afreed for the wonderful tournament having in the medal Friends Champions Trophy 2K26. And now the time to change in the comment box. I like to call Mr. Rashid for box for upcoming the fantastic match, high voltage match between team Brothers Makkar as well as versus team Galaxy Jokate.
Appi. So for the match number 2 of day number 2 of Friends Trophy 2026, which is proudly presented by Friends Urwa at this Lords of Underarm Cricket UCG, and already the first match which has been completed, Friends Kuttar won the match against the team United Suratkal, and Ashik to start off the proceedings. Ashik from the side of Brothers Makyar is going to start the proceedings. So yes, Brothers Makyar captain Naushad won the toss and elected to field first against the team Galaxy Jogate. Galaxy Jogate are having Taju on the strikers end and Faisal on the non-strikers end. Struck that one pretty decently. He's going to get a single for that stroke. In the morning time, you always need to start very calm and composive, because losing the wickets inside the power play means you're going to have a lot of trouble. A ball which is racing down the leg side, going to be called as a wide. Azmal Nandawara, the main umpire, along with Pradeep Kottari, two fantastic on-field umpires, as well as the third umpire, Vivek Challenge Bolur. Three fantastic cricketers. Azmal still is active, still representing young friends Urwa. So wide. So again one more extra from Ashik. Nawaz, the wicket keeper, who has been the teammate along with Ashik. They have represented many teams together.
DFC Derlakate as well as Royal Natikal as well. These two have been playing for a long time. Oh, in the air, Abu Makiar, what a blinder. Fantastic catch taken. In a previous tournament, I think we had seen Mahesh Kuttar taking the similar kind of catch in that similar area against, while he was representing Zaman Boys Kaladka. And this is Abu Makiar for you, the owner of Brothers Makiar, coming into the action and showcasing a brilliant catch. And courtesy of that, first wicket has been fallen for Galaxy Jokate. They're losing first wicket. Faisal is walking back to pavilion without even opening his account for a golden duck. So 3 on the board. Just 3 runs on the board. Ashik conceded 2 consecutive extras, then made a great comeback with that perfect delivery which is bowled along the carpet. So new batsman into the middle. So Abdullah, the new batsman at number 3 position. This man is walking on a destructive form this season. He has absolutely decimated all the bowling lineups he has faced. But only one thing which is very much vital for in his game, that if he stays in the middle, is most dangerous batsman. But if he goes very early. Abdullah at the striker's end. And the team, Brothers Makiar, they are very well known of Abdullah. And the man who is standing at that mid-on boundary line inside the 30-yard circle, Munna, Jasi Munna, is the captain in Ullal Cricket Association where Abdullah represents Safar Manchila. So they very well know each other. And even Brothers Makiar, they know that Abdullah is a very destructive batsman. And Abdullah has to change his bat because you cannot play with that bat in UCG Urwa cricket ground. In this lots of underarm cricket, we are having some good number of rules which is definitely required to be implemented in underarm cricket in all over South Canara district, because using such modified bats are not at all allowed. It's going to be a distraction for the bowlers and the batters and the fielders. So the batters need to be very careful while using such illegally modified bats which are having black straps or white straps or red straps which are going to distract the fielders and the bowlers. So as far as the rules of Urwa cricket ground is concerned, it's not at all allowed to play with that kind of bats. So once again the game begins. Ashik continues. Brilliant delivery along the carpet ball which is racing down the leg side. Galaxy Jokate, they have some good number of batters who are very well decorated. They have a lot of understanding of the conditions. Ashik bowls again. Oh, that's a fantastic delivery along the carpet. Just keeping it simple, away from the batsman. That's what required. You just need to follow the basics of the underarm bowling. Oh, brilliant delivery. Gone. Finger risen from main umpire Azmal Nandavara. And Abdullah is saying that ball has hit the bat. But main umpire has raised his finger and Abdullah is walking back to pavilion. He's one of the most decent cricketers. But I think the main umpire got it quite right. Ball hit straight in front of that leg stump. No doubt in the mind of the main umpire. Abdullah straight away raised his bat. But almost it's a good decision which is coming from the experienced umpire Azmal. And I request extra player from Galaxy Jokate or any supporter, please immediately report to the mic point who can give the names of the batters. So Nizam is a new batsman into the middle. Oh, just push the ball into that
Short cover region. Jasim Munna collected it finally, but batsman had ample time to get in a single between the wicket. With that single, now scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 2 wickets in the first over itself. What a comeback now. This is from Ashik. He bowled after bowling that first delivery, bowled 2 consecutive white balls. Then he has conceded just 1 run in the remaining 5 deliveries and got 2 wickets to his name. This has been a fantastic bowling from Ashik. This is the reason why he's been included in the side of brothers Makyar. So 4 on the board for the loss of 2 wickets. 1 over which is completed. So Jasim Munna introduced for the over number 2. Oh, that's a fantastic delivery. Jasim Munna, the man who has represented one of the big names in Ullal Cricket Association. Safar Manchila captained it for so many years. One of the most successful captains as well. And more than the captain, his bowling has been phenomenal in all the matches he has played for any teams. Even he has represented Adi Maheshwari as well as Mangal Devi. Mostly he is representing Mangal Devi, and he has also captained the Mangal Devi cricketers as well. So a lot of experience. Oh, ball brilliantly, and Yakub with a good collection, and Nawaz behind the wickets made a slight bit of a mistake, because if he had attempted to get the bills disturbed, I think there was some chance for the run out, and that's what even Abu Makyar is saying, that you should have tried, you should have attempted for the run out. Oh, swings, and completely has no idea. Run out opportunity, and it's gone. 1 more wicket is departed for Galaxy Jokate. Nizam departs, and Taju is still searching for the right partner, because he is not at all getting any support from his fellow batters. He has just faced 2 deliveries and he's been on the non-striker's end for the most of the part of this innings. So Afreet, one more destructive batsman from the side of Galaxy Jokate. Afreet, the man who can open the innings for the team. Most of the time he's an opening batsman, because he is such a classy, destructive striker. Very clean and neat striker. But he's coming at number 5. It's very surprising to see that from Galaxy Jokate. He has represented Sporting Kudroli as well, and there he has performed in so many matches, as well as reputed Bandar 11 as well. Oh, that top edge and ball which is carried into the hands of Safwan. He just made an overthrow, as there is no backup at all in the non-striker's end. And this mistake is going to cause that single to be turned out as 2 runs. Scoreboard is having 8 on the board. So Munna balls. Oh, he just swings and misses. There was a big appeal from the wicket keeper. I think bowler wasn't interested in appealing, and Pradeep Kottari rightly so saying that it's a leg by, and scoreboard is having a total of 9 on the board. 9 runs in total on the board. So 5 runs conceded and 4 leg buys. It means Munna only conceded just 1 run. So that is a fantastic over. And this is the reason why you keep experienced bowler in the side.
So Ashik once again brought into the attack for the over number 3. And captain of Brothers Makyar Naushad is continued the over for Ashik with his second over spell. 2 bowlers can bowl 2 overs. 4 bowlers to be used per side for an innings. Afraid at the facing end. Taju on the run strike. Taju has been waiting for his turn. So far he has just played 2 deliveries in a 2 overs play. That means no support at all from the other batters. Oh, that is a fantastic delivery. You can bowl such a delivery. You need to have a lot of precision and right execution. Very consistent bowler, Ashik. Doesn't make any room at all. Oh, in the air, top edge. Could be a cotton ball. Afreed walks back to the pavilion. And still no support for Taju. He doesn't get the strikers and still. And batsman straight away walking back to pavilion. Afreed, struggling innings. He played 4 dot deliveries and is walking back to pavilion. Not at all opening his account. Afreed. Galaxy Joker Day. It seems like they are a little bit uncomfortable. They're playing in a rush. They're not at all taking their time, because in the first innings, if you can manage to get ball to ball runs, you can easily, slowly and steadily, you can cover every deficit. Like we have seen that in the first match from Friends Kuttar. They absolutely till the last over kept their composure right. And in the last 2 overs, they managed to get a huge run on the board. And that's the kind of batting required here from Team Galaxy Jokate. But Brothers Makyar, and for the next match, match number 3, I request all the players of Shine Kana and Reliance Katipala, please immediately report to the mic point for signing at the official chart. I request both the teams, please complete the signing procedure. Oh, what a delivery! What a delivery! Absolutely unplayable. Fantastic delivery right through the block hole. Batsman is totally surprised that it turned a lot, because that ball was pitched right slightly away from that off stump line, outside the off stump, and then it straight away, like a snake, almost like a snake, along the carpet, quickly went into that leg stump. And Ashik, this is the beauty of his bowling. Always keeping it along the carpet, always following the basics of the bowling. And then he strikes absolutely fantastic. So Nadeem into the middle, new batsman for Team Galaxy Jokate. So yes, Nadeem is a fantastic batsman who has experience of playing the leather ball as well. So season ball cricketer, but in underarm cricket, playing in underarm cricket as well. He knows it seems like he's technically well sounded. He's an all-rounder for the side of Galaxy Jokate. He has represented the prestigious Bandar 11 as well. Royal Kudroli is represented many big names in underarm cricket, so knows his game, has a lot of experience, and also represented, has also played in season ball matches as well. Is a big fan of Steve Smith as well. Oh, that's a fantastic delivery, and he struck that one nicely. There's no protection. But Naushad, very quick with the feet, collected that ball finally. Or else it could have been a boundary. But good collection there from Naushad. He managed to stop that one very quickly. So last one remaining in this over from Ashik.
So 4 wickets, 2 wickets in this over. In total 4 wickets for just 6 runs so far for Ashik. So he's going to end his spell with that in his 2 over spell. He managed to get 4 wickets for 7 runs conceding from his bowling. This has been a fantastic over and a good choice here from Brothers Makyar. So changes here in the commentary box and for the remaining second half of the first innings, over to Kabir. ಧನ್ಯವಾದ ರಶೀದ್ರವರಿಗೆ. ನೆರೆದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 12 ಓಟಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಈ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನದೀಮ್ ಹಾಗೂ ತಾಜೂರ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪನರ್, ಅನುಭವದ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸ್ಲಾಕ್ ಸ್ವೀಪಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂಥ ನದೀಮ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಟಗಾರ ಈ ನದೀಮ್. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನದೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಓಟ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ. 20 ಓಟಗಳು 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ, 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಳಿದ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಟಗಾರ ನದೀಮ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 35-36ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಡ್ರೈವ್ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವೈಡ್ ಥ್ರೋ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, 2 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭವಿತ, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 16 ಓಟಗಳಂತೂ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 20 ಓಟಗಳಂತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 17 ಓಟಗಳು 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಉರುಳಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಟೀಮ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಚೌಕಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನದೀಮ್, ಇಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆಗೂಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಅಥವಾ 18 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಲೇಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೌಶಾದ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೀಪ್
ವೈಡಿಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸಮುಖ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 03 ಮುಆಜ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ನದೀಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನದೀಮ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿತ್ತು. ಡಾಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಆಜ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ನತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶೀಕ್ 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 18 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು 20 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿನ ಕೊನೆಯ ಹಂಚಿಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು 20 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ 19 ಓಟಗಳು 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಜ್ಮಲ್ ನಂದ ಅವರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 20 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 9 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ನದೀಮ್ ಹಾಗೂ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕಿಲಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಟಗಾರ. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ +4 5 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1+1 ರನ್ 22 ಓಟಗಳು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹದ್ದು ಜೊತೆಯಾಟ ಒಂದು ವೇಳೆ 2ನೇ ಅಥವಾ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ 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 ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಂತಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ನದೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಓಟಗಳು 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ ಸರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶುರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ 23 ಓಟಗಳು 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ ನಜತ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 24 ಓಟಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮುಆಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಆಟ, ಜಾಣ್ಮೆ ಆಟ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ
ತಾಜುದ್ದೀನ್ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ತಾಜುದ್ದೀನ್ 6ನೇ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಫೈಸಲ್ ಡಕೌಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಡಕೌಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಜಾಮ್ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಫ್ರೀದಿ ಡಕೌಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಜಿಲ್, ಅಂದರೆ 4 ಆಟಗಾರರು ಡಕೌಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 24 ಓಟಗಳು, 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ತದನಂತರದ 3ನೇ, 4ನೇ, 5ನೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರನ್. 2 ಓಟಗಳಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 26 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಆಯ್ದಂತಹ ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಡೆತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನದೀಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ದಂಡಿನ ಕೊನೆಯ ಹಂಚಿಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 27 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಮತ್ತು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗಿಸುತ್ತಾ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರನ್. 2 ಓಟಗಳು ಇತರ ಖಾತೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶೈನ್ ಖಾನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನಂಬರ್ 9 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ನಬೀಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಂತೂ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ನಬೀಲ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೈನ್ ಖಾನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ದ 3 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7 ವಿಕೆಟ್. 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟಗಳಂತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 2 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 2ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುವಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ 20 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7 ವಿಕೆಟ್. 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಾಬಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು, 33 ಓಟಗಳ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 33 ಓಟಗಳ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ರಶೀದ್. I request batsmen of Brothers Makyar please enter into the middle immediately. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. ಶೈನ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಾಳ. Galaxy Jokate, they are definitely have put a fighting total on the board. They can still defend it, but the first 2 overs are going to be very much crucial for them. And Nizam has taken the responsibility of bowling the first over. And from the side of Brothers Makyar, Nawaz Urmane at the striker's end and Shiab on the non-striker's end. And for Galaxy Jokate, Garudas Jubail are giving their best wishes for this prestigious cricket tournament. So the ball which is going into that covers region, long off field taken that pretty comfortably. First single, scoreboard has started taking here.
And brothers Makyar are having a lot of supporters, and the father of Abu Makyar's father is definitely watching this live, is giving his best wishes as well for brothers Makyar. So the ball which is racing towards the boundary line, and it's gone all the way, 1 bounce, 2 bounce, and into the fence. This is a wonderful start here for brothers Makyar. They're chasing 33, and this is a good start given from the bat of Nawaz. He's a destructive batsman. In fact, it's Shiab who's struck that one pretty hard, who got a boundary. Nawaz took a single off that first ball, and given his partner Shiab the opportunity to strike the ball. And Shiab is always very aggressive starter. No matter which team he's playing against, he's always looking to score runs inside the power play. He's a one batsman whose wicket needs to be taken early if you want to win the game. Oh, that's a fantastic delivery. Absolutely perfect example of underarm cricket bowling. Along the carpet, very quick. Nizam, you need to showcase such kind of bowling here, Nizam. Because if you want to win this game, you definitely need to showcase some economical and top class bowling. Only the great bowling can get this victory for team Galaxy Jokate. They would require exceptional bowling, and this Galaxy Jokate team, back in the days, they have been one of the top teams of 30-yard cricket. So they are having a lot of experience, especially defending low totals. Oh, discipline bowling. This is from Nizam. He knows that keeping it away from the batsman is required. Perfect bowling here from Nizam. After being conceded off that boundary of the second delivery, he's managed to get 2 deliveries dotted against the same batsman who hit a boundary. Oh, again, well-disciplined bowling this is. Fantastic bowling this is. This is why they were one of the top teams back in the days in the 30-yard circle. 30-yard tournaments, they were dominating every team they played. So Nawaz, Shiab at the facing end, Nawaz at the long strike and struck that one pretty hard. 1 bounce, 2 bounce, ball is just slowly racing towards that boundary line, and boundary signal from the main umpire. Now scoreboard is having a total of 9 on the board. 9 runs after the completion of first over. And if you look at that in the replay as well, for a moment it had a lot of time for the fielders to cover, but Abdullah, the fielder who was chasing the ball, couldn't manage to collect that one. And everyone enjoying the game of cricket here. Even the disabled person having some moment of relief watching underarm cricket. It's always going to be stress-free for the spectators watching the cricket and leaving all the worries and tensions behind. Cricket is only one game which can take you all the tensions away, especially watching cricket at this lots of underarm cricket UCG Urwa. Yes, there is no age gap for underarm cricket. Even from young kids to senior citizens, those who are past 90 plus as well, everyone watching the game of cricket, they absolutely love this sport. Especially South Canara district, the underarm cricket has been an emotion. It's not just a sport. It's very much close to everyone's heart. And Faisal has been introduced into the bowling mark for the over number 2. Faisal is his brother Naufal Jokate, one of the finest Kannada commentators as well. His younger brother Faisal from the bowling mark. Naufal Jokate definitely watching this match live from abroad, giving his best wishes for Galaxy Jokate, even though the team definitely need to showcase up to the mark performance because they conceded 9 runs in the first over and a single off the first delivery of the over number 2. Inside the power play, already double digit has been completed. Still 5 more deliveries are remaining. And
this is a good job from Nawaz because he has played just 2 deliveries and 2 singles he has taken and given the strike to Shiab to strike the ball, because inside the power play Shiab is a very clean and technically well-sounded striker. Swings, ball which is going to be a big wide on the leg side. Shahil behind the wicket keeper at short fine leg collects the ball. Shahil, the man who has captained Najatullah successfully in the Sauhard Trophy, Derlakate, becoming the runners-up of the prestigious Sauhard Trophy at that Derlakate ground. Once again Faisal, balls, swings and misses. There is an appeal, but umpire not interested. And yes, definitely that's a good decision, because he is straight away standing right in front of the umpire, and umpire has got no vision at all to see that decision. And this is what bowlers need to avoid. They need to be technically well-sounded. If you want to play at this stage of cricket, you need to be very much well aware that your run-up needs to be very much clean. You shouldn't come towards the umpire's vision, and blocking the umpire's vision is going to always put you in a lot of trouble, especially in a crucial games like this. Whenever you are searching for the wickets, there could have been an opportunity when that ball hit the legs of the batsman, but unfortunately was standing right in front of the umpire. So umpire said you are blocking the vision, and maybe a potential wicket opportunity lost. So played nicely into the deep extra cover region. Fielder coming from a long chase. Abdullah finally managed to stop it right in front of the boundary line. So scoreboard is having 2 more runs added, and total moves on to 15. Last 2 more remaining in this over from Faisal. Faisal takes his time. Oh, that's a good delivery. That's a good delivery, but I think wicket keeper, without having the ball in his hand, attempted to stump. And Nawaz from the non-strike is in, asking the square leg umpire Azmal Nandawara that maybe the hand which is coming very early, even before the ball passing, so is there any chance for a no ball? But square leg umpire Azmal Nandawara straight away rejected that. So 15 on the board without any wicket loss so far for Brothers Makyar. It almost looks like Brothers Makyar are in a commanding situation at this game. Only losing 2 to 3 wickets is going to get the match into the hands of Galaxy Jokate, unless and until the batters of Brothers Makyar doesn't make any mistake. Even playing a sensible cricket can get them towards the victory mark quite easily. Faisal balls is searching for that wicket. They want a breakthrough. Nizam, good collection at that short square leg region. They're going for that single quickly. 16 on the board after the completion of 2 overs play. 16 without any wicket loss so far for Brothers Makyar. 33 run is the target. So it means another 17 required for the victory. Still 24 balls are remaining. Just 17 required for the victory. And once again, I would like to remind the players of Lance Katipal and Shine Khana for the sign-up procedure. Please immediately come to the mic point and complete the signing procedure. Those who are remaining to complete the signing procedure, Reliance Katipal and Shine Khana. Once the signing procedure is complete, we are going to give the call for both the team captains to come for the tossing ceremony. Nizam balls.
Oh, played in the air. Is he going to get a distance? No, in fact, taken comfortably. So that means wicket which is falling here for team Brothers Makyar. First wicket. Shiab, once the power play ended, playing that stroke, definitely not a wise option. Is a powerful striker, always a very clean striker, but couldn't manage to get the distance. So now, at number 3 position for Brothers Makyar, I think the captain himself has taken the responsibility to take this chase on his shoulders. Already they are having a comfortable position. Nawaz along with Naushad. They would need to put one more good partnership. They really need to play a sensible cricket here, Brothers Makyar, because there have been matches which have turned from an unexpected positions. So Naushad into the middle. Naushad, the man who has represented many big names in Underarm cricket, recently joined KFC Kodikal as well in this season. Represented KFC Kodikal and got a man of the match for his brilliant performance as well. Oh, played nicely. This is what intelligent cricket is all about. Naushad is very well known for his batting prowess, always turning the game on his batting. He has also represented SDC Jaipur for a long time. He was one of the permanent members back in the day for SDC Jaipur at their peak. Naushad, the elder brother of Irshad, the wicketkeeper of young friend Urwa, was also representing Brothers Makyar in Ullal Cricket Association matches. So scoreboard is having a total of 18 runs. Scoreboard is visible all the time. The spectators need not worry about the scores. What is the score? They need not ask anyone. They can directly look at the scoreboard at the pavilion. And over which is completed. Scoreboard is having a total of 19. And we are seeing him in the screen. Nandan Kulashekar doing the job of physical scoreboarding. Yes, sir. Thank you, sir, for your wonderful job. And he is one of the key man. If you ask anything about the Underarm cricket, every history, every single minute details, has been one of the man now is very closely following Underarm cricket. A great passionate personality. And changes here in the commentary box. 18 deliveries are remaining. 14 required for the victory. And Kabir Kudroli is going to join the commentary box. The junior Gopi in national language Hindi. यस धन्यवाद इस वक्त रशीद के लिए और सभी दर्शकों को सभी खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर फिर से स्वागत यहाँ पर कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स उर्वा प्रस्तुति यहाँ पर करते हुए फ्रेंड्स ट्रॉफी 2026 इस मेगा श्रृंखला के दूसरा दिन की दूसरी मैच यहाँ पर चलते हुए अब दूसरे इनिंग्स के 33 रन के लक्ष्य थे, उनमें से 3 और समाप्त करने के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर 18 गेंद यहाँ पर बाकी 14 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब माइन स्क्रीन पर देखे जाए तो प्रदीप कोठारी एज ए अंपायर, इन्होंने सिर्फ अंपायरिंग का कार्यभार नहीं एज ए क्रिकेटर यंग फ्रेंड्स उर्वा के एक दिग्गज बल्लेबाजी पर माना जाता है। और वेलकम मिस्टर जुनाइद, रिलायंस का टिपल्ला के सक्सेसफुल कैप्टन इस वक्त जुनाइद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए इस मेगा श्रृंखला पर। और 3 और बाकी 14 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 18 balls remaining and 14 have to get now they have to get some dotted deliveries, but top edge wicket is required, directed badly required। काफ़ी दूर थे बल्लेबाज, सीधे गेंद को वहाँ पर निशाना बने तो विकेट वहाँ पर
गिर सकते थे। खासकर नौशाद 10 सिंपल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी, और इनके साथ देते हुए नवाज उर्मा ने भी बॉयज के एक दिग्गज खिलाड़ी इस वक्त ब्रदर्स मक्यार के साथ देते हुए। अगला गेंद इस बार सीधे गेंद को वहां पर खेलना चाहा और डॉट डिलीवरी, और खासकर गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद थे। अंतिम क्षण पर शायद बल्लेबाज रिवर्स स्विप के जरिए गेंद को खेलना चाह, सीधे वहां पर खेले जाए तो वाइड हो सकते थे, क्योंकि आखिरी मौके पर बल्लेबाज रिवर्स स्विप खेले तो गेंद इस वक्त सीधे घोषित यहाँ पर होते हुए घोषित होते हुए, और इसी के साथ साथ भिंदी गेंद के साथ दूसरी गेंद यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तीसरी गेंद लेकर तैयार फैसल, जब फैसल की नाम यहाँ पर सुनते हुए इस बार गेंद को उछाल दिया, सीधे गेंद, 1 बाउंस कलेक्टेड बाय द फील्डर। आखिरी मौके पर फील्डर काफ़ी दूर थे और मेरा ख्याल से 6 या 7 कदम आगे बढ़ाते हुए दौड़ते हुए गेंद के नीचे आते हुए, और जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इन 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंद समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थर्ड डिलीवरी द 4th ओवर इन प्रोग्रेस। और गेंद इस वक्त फैसल, भिंदी गेंद इस वक्त सख्त ज़रूरत है। इस बार गेंद को वहाँ पर बैकफुट पर लेते हुए सीधे गेंद को खेले एक्स्ट्रा कवर की निशान पर, गेंद जब तक वहाँ पर क्षेत्र रक्षक काफ़ी दूर थे, और इस वक्त फील्ड होने के वक्त पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ एम्पल टाइम टू गो फॉर सिंगल रन फॉर द बैट्समैन। नाउ द सेकंड बैट्समैन मिस्टर नवाज विल बी हैविंग द स्ट्राइक and 14 balls remaining, 11 have to get 14 गेंद आप भी बाकी, और 11 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी पर फैसल कुछ खास इस वक्त ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अब भिंद गेंद की सख्त ज़रूरत है। इस बार भिंद गेंद हो सकती थी, लेकिन विकेट कीपर की गलती और इसकी वजह 22 का इशारा पर डॉट डिलीवरी थी, क्योंकि बल्लेबाज वहां पर चुके हैं। वंचित करने के बाद सीधे विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, और इसी के साथ भिंदी गेंद के साथ समाप्त वहाँ पर रन के साथ एक और रन यहाँ पर बटोरते हुए 23 रन, 23 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। और साइन स्पोर्ट्स इस मेगा श्रृंखला के लाइव टेलीकास्टिंग यहाँ पर करते हुए कल का दिन ब्रॉडकास्ट कैमरा इन्होंने यूज़ किए थे, और जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर यूज़ करते हैं ऐसे वहाँ पर ब्रॉडकास्ट कैमरा इस मेगा श्रृंखला पर कल का दिन उद्घाटन का दिन यहाँ पर यूज़ किए थे। और सभी इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद काफ़ी दूर, वाइड का इशारा, जैसे भिंदी गेंद की सख्त ज़रूरत है। इस वक्त पर बल्लेबाज तो रन्स के लिए वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, और गेंदबाज खुद गिफ्टेड के साथ इस वक्त फ्री में रन्स यहाँ पर देते हैं। इस बार फिर से गेंद को वहाँ पर खेलना चाहा, चुके डॉटेड डिलीवरी एंड ओवर हैज बीन कंप्लीटेड हियर। द डॉटेड डिलीवरी के साथ बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्त हो चुका है। नाउ 12 बॉल्स रिमेनिंग, 9 हैव टू गेट। पिछली ओवर पर 5 रन वहाँ पर दिए थे, इनमें से मेरे ख्याल से 2 एक्स्ट्रा की तरफ से, क्योंकि विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और वाइड का इशारा पर रन दिए थे। और अब इस वक्त इन 5 रन के साथ 12 गेंद यहाँ पर बाकी 9 रन चाहिए जीतने के लिए। एंड एग्जैक्ट 4.50 रिक्वायर्ड रन रेट फॉर ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದ ಟೀಮ್ ಶೈನ್ ಖಾನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಯಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होने के बाद कुछ अंत तक इस वक्त वापसाती करने की कोशिश पर कमबैक इस वक्त ज़रूर करते हुए, और देखना पड़ेगा कि क्या गेंदबाजी पर कुछ खास इस वक्त ज़रूर करने चाहिए। द पेनल्टीमेट ओवर ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि इस ओवर पर कम से कम 3 या 4 रन वहाँ पर देकर रुके गेंद बल्लेबाजी को इस वक्त बंद कर रखे तो मैच पर वापसाती ज़रूर कर सकती है। भारा गेंद कुछ अंत तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद परिवर्तन के तौर पर लगान इस वक्त बाहर, लगान लगा ऑफ डीप मिड विकेट और डीप शायद
एक्स्ट्रा कवर के निशान पर इस वक्त फील्डर को सजावट करने के बाद 33 दायरे के अंदर इस वक्त शॉट फाइंड लेग इस वक्त बाहर जाते हुए डीप फाइंड लेग की तरफ से वहां पर फील्डिंग सजावट करने के बाद गेंदबाजी पर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। भरा गेंद यहां पर बाकी 9 रन चाहिए जीतने के लिए और गेंदबाजी पर 5वीं ओवर की शुरुआत का गेंद फ्रेंड्स ट्रॉफी एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। पहला गेंद इस बार थोड़ी सी स्लोवर वन और फायदा उठा सकती थी क्योंकि काफ़ी लेजीपन गेंद है और इस वक्त ज़्यादा तक 1 या 2 3 टिप्पा काटने के बाद बल्ले को उछालना चाहा लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए, गेंद बल्ले तक वहां पर पहुंच नहीं पाए और इसी के साथ वाइड के साथ शुरुआत यहां पर हो चुका है। इस वाइड यहां पर बल्लेबाजी टीम के लिए एक्स्ट्रा की तरफ से यहां पर रन आगे बढ़ाते हैं। इस बार सीधे गेंद को खेले, गेंद इस वक्त फील्डर को यहां पर वंचित कर चुका है 4 रन की ओर से। सीधे गेंद ऑफ कटर गेंद थे, काफ़ी तेज़ नहीं मेरे ख्याल से, शायद ऑफ कटर नहीं लेग कटर गेंद थे और टिप्पा करने के बाद बैकफुट पर जाने के बाद सीधे गेंद को वहाँ पर खेले एक्स्ट्रा कवर के निशान पर शायद खिलाड़ी वहाँ पर क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑन की तरफ से क्षेत्ररक्षण कर रहे थे और जैसे गेंद को पीछे वहाँ पर आए तो गेंद इनको वंचित करने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुका है। इस बार फिर से गेंद 22 का इशारा पर बल्लेबाज तो वंचित करने के बाद बैकअप खिलाड़ी गेंद को फील करे जब तक बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए बचे हुए 10 गेंद पर 10 balls remaining, 3 have to get and 1 more dotted, the first dotted delivery in this over। ऐसे गेंद यहाँ पर करनी चाहिए तो शुरुआती पर रन इस वक्त थे और इस वक्त फिर से वापसाती करने की कोशिश पर इस बार फिर से रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेलना चाहा, मिस फील्डिंग और इस वक्त ओवर थ्रो की वजह यहाँ पर रन नहीं मिलेगा। मिस फील्डिंग के साथ रन इस वक्त मिलते हुए एकमात्र रन यहाँ पर मिल चुका है। इस 1 रन के साथ अगला गेंद 8 गेंद यहाँ पर बाकी 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 8 balls remaining, 2 have to get once again going for a big hit, going for a big hit. Yes it is, it's a biggie, it's gone on the way. Yes it is, it's a biggie, going for a log on for a million mile। सीधे गेंद को यहाँ पर उछालते हुए और इन छक्के के साथ मैच यहाँ पर ब्रदर्स मक्यार इस मैच को 7 गेंद को यहाँ पर बाकी रखते हुए इस इनिंग्स को यहाँ पर समाप्त कर चुका है। चेजिंग यहाँ पर कर चुका है एंड कंग्रेचुलेशन ब्रदर्स मक्यार throwing to the next round and Galaxy Joker, thank you, all the best team Galaxy Joker for your upcoming match। और अगला मैच यहाँ पर खेला जाएगा शाइन खाना वर्सेस रिलायंस काटीपल्ला and the next match will be having the very crucial match Shain Khana versus team Reliance Kattipalla and change in the boys. In the change the boys, I'd like to call Mr. Rashid for upcoming match. I request captains of Shain Khana and team Reliance Kattipalla. So Reliance Kattipalla captain is here. So thank you both the captains. For the tossing ceremony we are having Azmal Nandavara, the umpire, conducting the tossing ceremony for the upcoming match.
So once again, we are back. Shine Kana taking against Reliance Katipala. So Shine Kana versus Reliance Katipala. After winning the toss, the captain of Shine Kana elected to field first against Reliance Katipala. So yes, Aris is going to start off the proceedings. The man has been in a terrific form this season. So Aris starting off the proceedings. The Malar Express. One of the very quick bowlers along the carpet. Oh, fantastic deliveries to start the proceedings. And good fielding there from the young man. Collected the ball finally, and it's a close call. I think the decision has been referred to the third umpire to check. The square leg umpire Vivek challenge bowler, and the main umpire Pradeep Kottari. And in the third umpiring we have Azmal Nandawara. And Shine Sports, the technical team is covering this wonderful match. So not out is a decision from the third umpire, and leg by, which is a signal from the main umpire Pradeep Kottari. So one into the account of extra. Oh, just played straight down the ground. They're going for the quick run again. One more opportunity created for run out. But they managed to reach the danger end right in time. Riza and Yogesh are in the middle for Reliance Katipala. Oh, what a delivery! Fantastic bowling. This is absolutely quicker one. And leg by is a signal again from Pradeep Kottari. So once again a single added. So total moves on to 3 on the board. Oh, again hits the shoes, and umpire again is going to signal that leg by. And this is one big disadvantage when you're bowling around the wicket. It's pretty difficult for the umpires to give that, as the ball is going to be pitching outside and coming way off from that wicket line. So you need to try and bowl over the wicket so that you can get the leg before wickets most of the times. And also batters are going to be very much relieved whenever they are seeing that bowler is bowling around the wicket. They're going to block the wickets and play. Oh, stuck that one neatly. There's a fielder, collects it perfectly, and long way for the fielder to complete that throw, and batsman had time to get in just a single between the wicket. So 6 runs on the board. And the first warning which has been issued for the batsman for running in between the wicket, Yogesh and Riza. Yogesh, the experienced man, opening the innings for Reliance Katipala. So 6 on the board without any wicket lost from the first over. And Shine Kana, who are they going to give that second over responsibilities?
So Arafat has been given the responsibility of bowling the over number 2. So Arafat comes into the bowling mark for the over number 2. Second over of the power play. So wide, which is a signal. A good decision from Yogesh, because he was standing right in that line of the delivery and straight away dodged it by moving his foot away and one into the account of extra. Arafat, fantastic bowling, even though he bowled extra. He's got a quick pace. Oh, what a turn. Excellent delivery. He's going to struggle the batters with his fantastic bowling. Good throw there from the back of fielder as well. So scoreboard is having one more run added to the total. So total moves on to 8 on the board. Once again, Arafat takes his time. He needs to definitely bowl dot balls more than anything here. Riza. Oh, this is I think not going to be a good bowling from young Arafat. Bowling extras, definitely not a wise option from Arafat. Oh, struck that one pretty hard. There's a fielder who is coming close to that delivery, but couldn't manage to collect the catch, as if it was fairly away from that fielder who is standing in that wideish long off region. Arafat balls, brilliant delivery this time into the vacant area. Fielder is chasing it after. Asif MP collects it perfectly without any mistakes, and the scoreboard is moving with that couple of runs to 12. Arafat, this is turning out to be a little expensive, because so far just 3 deliveries which have been completed from Arafat. He has already conceded 6 runs. That means this is turning out to be a very expensive over. Oh, this is a good comeback. This is a good comeback, I think. And third umpire will surely be asked for that, because they want to see if that came after hitting the legs of the wicketkeeper or not. Or maybe that came right into the wickets. We're just waiting. Wicketkeeper Safwan, very experienced wicketkeeper. Third umpire Azmal Nandawara is checking the decision. So yes, it's out. Automatic stump out. And the batsman is out. And in the number 3 position, who is going to come into the middle for Reliance Katipala. They got plenty of good options in the side. So Azhar into the middle. Azhar, one of the technically well sounded and very clean and hard hitting batsman from the side of team Reliance Katipala. This season he's been in a tremendous form. He's seen a little bit of ups and downs as well. But nonetheless, whenever the team Reliance Katipala wanted a good innings from the bat of Azhar, he has batted very well. So many matches in this UCG Urwa ground, he has contributed very well with the bat. And now
Azhar into the middle. Azhar, the left-handed batsman. It's a good decision from Reliance Katipalla captain to send in Azhar into the middle at its number 3 position. Arafat once again takes his time, bowls. Oh, what a delivery. Fantastic bowling. This is end of... in fact, one more delivery remaining in this over. Fantastic dot ball. Last ball remaining. Young Arafat definitely so far has done a great job. Great comeback, because in the first 3 deliveries he bowled, he has already conceded 6 runs, and so far he has just kept it to restrict the opposition for that just 6 runs in this over. So fantastic bowling. He got a wicket as well. Great comeback from the young man. So 12 in the scoreboard for Reliance Katipalla for the loss of 1 wicket in just 2 overs. Courtesy of that 5 extras Shine Khana bowlers gave away. They're having a total of 12 on the board. The batters really need to step up to the occasion for Reliance Katipalla. They need to build partnerships, because only the partnerships can put a good total on the board for Reliance Katipalla. And for the next match, I request team Boss Warriors and team Nanban. I request all the players, please come and complete the signing procedure immediately. So Harris to continue the spell. So Harris once again brought in for the over number 3. Harris has bowled his first over. Absolutely brilliant over from him in the first over. Just 3 runs conceded in the power play. Oh, fantastically struck that one. Right from the middle of the bat. Good connection. And they're going to get a couple of runs easily for that stroke. Ample time for the batters to complete that 2. So scoreboard is having 14 for the loss of 1 wicket. Aris balls again. Brilliant delivery. Ball at the leg stumps. It's so quick that batters have no time at all to judge the strokes. Oh, Ari's brilliant delivery once again keeps the batters in a tight spot with that brilliant bowling. It's got a variations. That's the main reason. Not just quickness. It's got good variations. That's the main reason why batters are struggling against him. A good delivery. This time Azhar played it into that long on region, and there could be a run out opportunity. Missed it completely. He should have thrown the ball towards the wicket-keeper's hand. Hakim, the captain of Shine Khana, saying it to his bowler Aris. So for the next match, once again, I would like to remind all the players of Team Nanban, please immediately report to the mic point for the signing at the official chart. Once again, the organizers are reminding you. And also the Boss Warriors, all the players, please immediately report to the mic point for signing procedure. Meanwhile, good bowling again from Aris. One more dot delivery. Second dot delivery in this over. Even though he has conceded 5 runs in the 5 deliveries. But this is a good over. Because keeping the batters quiet in this UCG Urwa ground, especially during the afternoon time, not an easy job at all. Aris balls. Brilliant delivery this time in the air. Is there an opportunity? No, fielder is far away from reaching towards that catch.
very high elevated stroke. It was up in the air for a long time, but landed quite safely. So 3 overs are complete with that couple of runs in the last delivery of the over number 3. 19 in the scoreboard for the loss of 1 wicket for Lions Kattipalla. I think they managed to cover the deficit in the scoreboard with this 7 runs over from Aris. More than anything here for Lions, they require one good over, 1 over where they can get more than 10 runs. That is going to put them in a comfortable position. Still Riza and Azhar in the middle for Reliance. For the second wicket, they need to build a good partnership. So fast ball itself, Mustafa Senior conceded that single off his fast ball itself. Azhar gets the strike again. And Riza is just playing the role of anchoring the innings, is giving his partner Azhar the more opportunity to strike the ball. Azhar is a technically very well sounded and is a power hitting batsman. Always the left-handed batters are players who can play big shots. Oh, no ball which has been called. They're coming back. In fact, no. At the last moment, the second run has been turned down. And for the restriction of fielders in that square leg region, because the left-handed batsman is playing in the square leg, you cannot put more than 3 fielders behind that square leg line. You cannot put 3 fielders, and there's a line indicating that as well on the main stage of Friends Trophy 2026. You can see that red line. You cannot place fielders behind that, 3 fielders behind that. So Riza, oh, he missed a golden opportunity, the free hit delivery, and they just completed quickly the runs. So once again, Mustafa Senior. Oh, struck that one pretty hard. But no, he doesn't get a distance. Asif MP takes the catch perfectly. At this situation, losing the wicket of Azhar is definitely going to put some trouble for the incoming batsman. Azhar is a main man for team Reliance Kattipalla. Always they are dependent on his batting. 23 on the board for the loss of 2 wickets. Reliance Kattipalla, their strong point is always the bowling lineup. Their bowlers are the magical players for them. The 2 mysterious cutter bowlers they got, Shreyas and Anish, they're always doing the job perfectly, as well as Rahul in the opening overs, doing a fantastic job for the team.
Those three bowlers definitely giving Reliance Katipal a lot of success this season. So Taufik into the middle. One more young sensation from the side of Reliance Katipala. This season he's been phenomenal with the bat and definitely got a lot of potential in underarm cricket. He could be the future star because his batting is technically well sounded. No weakness at all. Always striking the ball very well. He can adapt to the situations as well. Taufik. So once again Mustafa Senior balls. Ball which takes a top edge of the bat and single taken. Scoreboard is having one more run added. So the total moves on to 24 for the loss of 2 wickets. Last 2 more deliveries are remaining. Mustafa Senior, even after bowling the no ball, has done a great job. Good comeback. Only 4 runs conceded from Mustafa. Oh, struck that one pretty hard. There's a vacant area, but fielder is coming from a long way. Safwan did a great stop there. Certainly saved some 2 runs for the team. Shaheen Khan, a good fielding from Safwan. Whenever is inside the field, if he's doing the job of wicket keeper or if he's batting, he's always giving a lot of contribution to the team. The man Safwan. And 2 umpires, they are taking the review. They have gone to the 3rd umpire to check whether it's a boundary, whether the batsman has touched the boundary line while collecting that delivery. And there's a good review from the umpires. It's a boundary. It's a boundary. 4 runs are added. It's a square leg umpire, Pradeep Kottari. The experience it shows. He was not satisfied, and that's the reason he just went for the 3rd umpire's help, and it's been confirmed that boundary which has been added into the scoreboard. Fielder Safwan just touched the line while pushing the ball inside the playing area. The ball which is going down the leg side wide, which has been already signaled from Vivek Challenge Bowler, the main umpire. So scoreboard is having 29 runs for the loss of 2 wickets. Oh, good bowling, and he gets a success for that. So now over number 4 completed with the wicket of the last delivery. Mustafa Senior gets a breakthrough. Riza is walking back, came in as an opener and played a good innings. So the captain of Reliance Katipala, one of the most successful captain this season for Reliance Katipala, Junaid into the middle. Junaid has played for many big teams in his cricketing career. Junaid into the middle for team Reliance Katipala. This is a good combination. Junaid and Arafat. Junaid and Taufik, little bit corrections. Junaid and Taufik, they are very quick in running in between the wickets, and they always find the gap as well. So this is a good call. Captain coming right in time into the middle. So Mustafa Junior has been introduced for the over number 5, the penultimate over. Mustafa Junior,
the brother of one of the well-known face in underarm cricket in the bowling department, Ijaz Malar. So Mustafa, once again, for the first time in fact, balls a brilliant delivery. It just played across the line of the delivery. They trying to convert that single into two. And the third umpire's help has been taken. And by the looks of Junaid, it seems like he's not confident. Junaid could be in trouble. Out. And yes, that's the body language which was shown from Junaid the moment he came towards the non-strikers. And now this is a big breakthrough for Shine Khana, because they managed to get the opposition team's captain in the form of run out. So Junaid walking back for a diamond duck without even facing a delivery. So Mustafa Junior strikes. So played nicely. Oh, mix up, and Rahil is walking back to pavilion. Tawfiq is not at all having a good time in the middle with his partners. Second wicket which is falling, consecutive second run out in the form of run out. They are losing one more wicket. Anish into the middle for Reliance Katipalla. Rahil is back into the pavilion. So Anish into the middle for team Reliance Katipalla. This man Anish has been phenomenal with the bowling. And even whenever the situation required him to bat, he can bat very well as well. So Anish at the facing end. And Mustafa Junior once again takes his time. Mustafa balls. Brilliant delivery. Fantastic bowling this is. There was a big appeal, but Pradeep Kothari says it's going to be a leg bye. Quick delivery. Sharp incoming delivery, and straight away, and umpire says that it's definitely going to miss that wicket, and also impact was outside the wicket line. Oh, what a delivery! The wickets are all tumbled up. It looks like a lotus. What a delivery this is. Fantastic bowling. This is the reason why he is one of the upcoming stars in underarm cricket. This man is absolutely unstoppable with his bowling. What a delivery. Getting such a technically sound batsman out for that kind of delivery. Not an easy job at all. Tawfiq back into the pavilion. So new batsman Arafat into the middle. One of the most hard-hitting batsmen in the side of Reliance Katipalla. One of the most dangerous batsmen for team. Little bit corrections is Afnan into the middle. So Afnan into the middle as a new batsman for team Reliance Katipalla. Oh, that is going to be a brilliant delivery from Mustafa.
and umpire is taken, I think the batsman is taken the review. Umpire has taken the review. Little bit corrections. Pradeep Kothari, the main umpire, has taken the review for the white ball. I think it should be a very close call because umpire Pradeep Kothari, one of the most experienced umpires, is not satisfied. So fair delivery. So fair delivery is a decision from third umpire, and you can see the split screen in action. You can watch the split screen from Shine Sports. I think it's for the first time we are watching this innovative technology, the split screen, in South Kendra district, especially in Underarm cricket live telecasting. Shine Sports bringing a lot of new technologies. Oh, struck that one in the air, opportunity put down from Mustafa Senior. And also 2 runs which are being conceded. More than the catch put down, I think the runs which is conceded, 2 runs are definitely going to be valuable runs. So penultimate over completed with a missed opportunity at the last delivery. So 33 on the board. Good total. As far as Reliance Kattipalla is concerned, they're having a good total on the board. Even if they manage to get from the remaining 6 deliveries of the final over, 6 runs, they can manage to get anything near to 40 runs. That's going to be a very difficult chase for Shine Khana against one of the most strongest lineup of bowlers in local full division. The Reliance Kattipalla, they are absolutely got some magical and mystical spinners in their side. And the man who is standing at the striker's end, Anish, is a master in bowling in that middle overs for team Reliance Kattipalla. So Mustafa Senior once again has been introduced into the attack. So in the penultimate over, Mustafa conceded 3 runs and 4 runs came to the scoreboard. That was a very economical over from Mustafa Junior. And now Mustafa Senior is come out to bowl that death over, and third umpire to check the white ball, and a soft signal from the main umpire Vivek challenge bowler is, I think, white. So fair delivery. So that's a fair delivery. Mustafa Senior manages to get a good delivery. And you can watch the dugout of Reliance Kattipalla. They know that even if they put more than 45 to 50 runs, it's only their bowling lineup which is the main thing, the main department which gets them the victory. So they are very much relaxed. So 35 on the board. Still 4 more deliveries are left in this first innings play. And if Reliance Kattipalla are able to cross 40, that's going to be an ample total for their bowling lineup, because they have time and time again proven defending low total is their stronghold. Oh, what is this? This is absolutely funny to watch. Anish totally misjudging the line of the delivery. Wanted to sweep the ball into the fine leg region, but total misjudgment, mistiming. And you can watch that in the Shine Sports replay
in the split screen. You can watch it from both the angles at the same time. And wicket keeper Safwan luckily saved himself, because wicket keeping is one of the most dangerous jobs out there in cricket. If you have the knowledge of one of the most successful, the bat which is hitting the wickets of Anish, in the process of getting that sweep shot in place, he got a hit wicket. Anish back to the pavilion, and now a new batsman Rahul. I request all the players of Boss Warriors for the sign up. Please immediately complete the signing procedure. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಟೀಮ್ ನನ್ಬನ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So Mustafa balls, brilliant delivery into the gap as well. They are chasing it after, and ball crosses the fence comfortably for 4 runs. So with that boundary, this is what exactly I think Anish also tried to play, but couldn't manage to judge the ball, because ball which was coming right into the leg stump, almost very close to the middle stump as well. So that's the reason he was in the back foot, and straight away got a hit wicket as well. And I was mentioning that one of the most successful wicket keeper in, if you look at all-time wicket keepers, the Mark Boucher of South Africa, he got an injury while wicket keeping. Is one of the most successful wicket keepers. Still no one is close to his stats in wicket keeping. He got a bail stuck in his eyes while wicket keeping, and that was the end of his career to the wicket keeping job. So the wicket keepers always need to be very, very careful. They need to protect their eyes from the bails flying. So 41 on the board for the loss of 7 wickets. Last 2 more deliveries are remaining in this first innings. Mustafa Senior once again takes his time and balls. Oh, this is brilliant delivery. Good line and length, but played it off the toes. Afnan gets a couple of runs quite easily with that stroke, and scoreboard now moves on to 43. That's a good total on the board. 43 runs on the board for Reliance Katipala. Shine Kana on the other hand, they know they have a lot of difficult job in their hand. Oh, this is not a good bowling. Direct it. But is there any trouble for the batsman? I think he's quite safe in his mark. No signal came from the square leg umpire. That means batsman is safe. He's made it in time. Rahul and Afnan, they're playing a very good innings, and that boundary from the bat of Rahul has definitely kept a good total on the board for team Reliance Katipala. They're having 45 on the board, and bowler Mustafa Senior making a mistake of bowling far away from the leg stump, and that is costing 1+1, 2 runs into the scoreboard. These extras, this is the second time he's bowled that 1+1. So 4 runs in the form of extra in this over. Mistake, this is a huge mistake. In his, so far is remaining last 1 delivery to finish off his 2-over spell. And that's it. With the stump out, team Shine Kana, they managed to stop opposition team Reliance Katipala for 45 on the board. 46 as a target for team Shine Kana when they come out to chase the total set from the batters of Reliance Katipala. And for the next match, I once again request all the players of Boss Warriors, please immediately come for the sign up. This is the 3rd time we are giving the call for the players of team Boss Warriors. Please immediately come and complete the signing procedure at the mic point. All the players of Boss Warriors, those who are remaining, please immediately complete the signing procedure. And after a short break, we are going to witness the chase, which is going to start from team Shine Kana.
So yes, the chase has started. Oh, just wanted to sweep the ball. Opportunity was definitely there, and Rahul did not take the throw because he knows if he takes a throw, there could be an opportunity created for the overthrow as the backup was not in right time. Rahul once again giving a good start. Oh, it struck that one pretty hard. Asif MP, one of the most hard-hitting batters from the side of Shaheen Khana, is a clean striker. Always good in scoring big runs. Asif, if he stays in the middle for 2 to 3 overs, he can score big runs. Azim at the facing end. Rahul to Azim. Oh, that's a good delivery. That's a good delivery. Keeping it away from the batsman. Rahul has been phenomenal this season. Rahul once again takes his time. Oh, that's a slow off-cutter delivery for the right-handed Azim, but couldn't get it right. But nonetheless, just one conceded. So 3 runs in the first 5 deliveries. Last ball of the first over remaining. Oh, struck that one in the air and landed perfectly. Shreyas is coming underneath it to collect after one bounce. And batsmen are easily crossing over for the couple of runs between the wicket. And they're going to get 5 runs off the first over. Now 30 deliveries are remaining. 41 is required for the victory. Second over of the power play. They would definitely need to get more runs, because this end, which is not at all much favorable for the bowlers. And they have decided to bring Shreyas early on. A good thinking from the captain of Reliance Katipala, as they have opportunity of giving 2 overs to 2 bowlers. Only 4 bowlers are required, and they have decided to go with Shreyas in the very second over of the second innings. Normally we see Shreyas coming after the power play overs, but he's been called out of the bowling mark very early. He's been a star this season. What a season he has had. I think one of the most memorable season is always going to remember this season, because everything he has touched has become a gold. Fantastic delivery. Absolutely perfect leg cutter to begin the over here for Shreyas. First delivery of the over number 2. Beaten with a huge turn. And batsmen, they managed to get a by single. Oh, played nicely. What a stroke that is. Safe. This is the reason why he is one of the clean striker. He's got a fantastic timing. He just need to utilize that timing and dispatched it into the vacant area. No room at all for the fielders to save that one from crossing the boundary line. So scoreboard is having a total of double digit 10 on the board. Asif MP once again at the facing end. Shreyas balls. Oh, brilliant delivery again. This one is a mistake from the fielders. Bice boundary. And now this boundary is going to take the scoreboard to 14 runs. And this is why most of the times we don't see cutter bowlers bowling inside the power play, because they are having no protection outside the boundary line. And even that previous boundary which came from the bat, that could have been restricted if they had 5 fielders outside the 30-yard circle. And changes here in the commentary box. I'm once again heartily welcoming Kabir Kudroli in national language Hindi. Over to Kabir Kudroli. 14 on the board, Kabir.
They're chasing 46. Shine Kana has got some potential battles. Will they be able to chase it down? यस धन्यवाद रशीद जी और 46 एजेस इन टोटल फॉर शाइन खान इस बार उछालना चाह रिवर्सिप के जरिए और लेग कटर इस वक्त इस्तेमाल करते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा श्रेयस एक ऐसा गेंदबाजी है कभी कभी लेग कटर कभी कभी ऑफ कटर कभी कभी तेजी कभी कभी स्लो रनना और चारों तरफ से गेंदबाजी करने वाले चार तरह की गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी है खासकर अश्विन राज होगी बाजार थर्ड प्लस करने के खेलने वाले खिलाड़ी के साथ इन्होंने स्पिन बॉलिंग वहाँ पर सुने थे वहाँ पर पढ़े थे किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे और इस वक्त विकेट गिरने के बाद सैयद बोल्ड आउट के जरिए विकेट वहाँ पर गिर चुके थे एलबी समाप्त वहाँ पर एलबी की तरफ से वहाँ पर विकेट गिर चुके थे खासकर पिछली दो बाउंड्री के साथ एक रिवर्सिप के जरिए गेंद को वहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुके थे और इसके बाद भाइस का इशारा पर क्योंकि विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया खासकर बैकअप खिलाड़ी गेंद को वहाँ पर मिसफील्ड करने की वजह 4 रन वहाँ पर मिले थे और इसके बाद भिंदी गेंद 5वीं गेंद पर विकेट इस वक्त प्राप्त करने के बाद जो लय इस वक्त प्राप्त कर चुका है खासकर ऐसा कहना पड़ेगा श्रेयस एक दिग्गज खिलाड़ी द मैजिशियन ऑफ रिलायंस का टिपला इनके एक बैकबोन ऑफ द टीम कहना पड़ेगा और इन सशक्त बॉलिंग लाइनअप के साथ किस तरह की बल्लेबाजी करते देखना पड़ेगा बचे हुए अब गेंद बाकी 25 गेंद यहाँ पर बाकी है और 51 हैव टू गेट रिमाइनिंग 25 डले 32 हैव टू गेट 46 इज अ चेजिंग टोटल फॉर टीम शाइन खाना और कहना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर विकेट को बचाकर बल्लेबाजी करते हैं खासकर इन पावर प्ले ओवर पर पहला ओवर मेरे ख्याल से 5 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर इस वक्त 9 रन तो बन चुका है अब अंतिम गेंद यहाँ पर बाकी देखना पड़ेगा कि क्या अंतिम गेंद पर एक बढ़िया स्ट्रोक लगाते हैं या सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हैं विकेट यहाँ पर बचाकर बल्लेबाजी करते देखना पड़ेगा नंबर 3 बैट्समैन इनटू द मिडल वन मोर एक्सपीरियंस कैंपेनर वन ऑफ द बेस्ट all-rounder from the side of team Sain Khana as a number 3 batsman always is an opener but in this tournament he is coming as a number 3 batsman going for a slog sweep up in the air and it's taken सीधे गेंद को वहां पर स्लॉग स्वीप खेलना चाहा टॉप एज पर लग चुकी थी गेंद और इस वक्त विकेट यहां पर गिर चुका है कैच हैज बीन टेकन ओवर हैज बीन कंप्लीटेड हियर द सेकंड ओवर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 14 ऑन द बोर्ड हैव अ लुक एट दैट इन द टीवी रिप्लाई जिस तरीके से सैयद ऑफ कटर गेंद थे और जो बल्लेबाजी जो है इन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी किए थे बल्ले वहाँ पर उठाने पर और टॉपेज पर लगने के बाद बल्ले के अंतरों किनारा इस वक्त गिरने के बाद एड्ज लगाने के बाद विकेट यहाँ पर गिर चुका है इन विकेट के साथ दिस इज अ लास्ट कॉल फॉर बॉस वॉरियर्स कुदरोली आई लाइक टू कॉल ऑल द प्लेयर्स प्लीज रजिस्टर योर साइन इन द ऑफिशियल चार्ट और इस वक्त दरख्वास्त करना चाहता हूँ बॉस वॉरियर्स के सदस्य इस वक्त हस्ताक्षर पट्टी पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ और इन 2 और समाप्त करने के बाद 14 रन बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओवर नंबर 2 नाउ 24 balls remaining 32 have to get exact 8.00 required run rate 8.00 इस वक्त रन रेट इस वक्त चाहिए इस मैच को जीतना है तो और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी अपनाते हैं इन यूसीजी उर्वा क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट काशी और मक्का द लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट इस वक्त मैच चलते हुए और इस मैच का मुजाहरा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि नाउ the 24 balls remaining 32 have to get and the bowling change the bowling mark Anis bought into the attack going for appeal I think the ball is missing the leg stump and the very turning delivery see the again the
शायद अंतिम क्षण पर बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर गेंद वहाँ पर टिप्पा करने वाले थे और अंपायर इस वक्त ठीक तरीके से अपने निर्धार यहाँ पर देते हुए और इनके साथ फैला गेंद लेग बाइस का इशारा पर इस बार रिवर्शिप के जरिए गेंद को खेलना चाह स्विच इट करना चाह चुके द डॉटेड डिलीवरी नाउ द फील्डर्स आर स्प्रेडेड नाउ बिकॉज रिस्ट्रिक्ट पावर प्ले हैज़ बीन कंप्लीटेड इस नियमावली के अनुसार 2 ओवर पावर प्ले ओवर माना जाता है। इन 2 ओवर पावर प्ले ओवर समाप्त करने के बाद जो खिलाड़ी है 5 खिलाड़ी दिस है कि बाहर यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। इस बार गेंद को यहाँ पर खेले स्वीप करना चाहा स्वीप कर चुकी थी सर। ओ माय गॉडनेस मिसअंडरस्टैंडिंग आई थिंक दिस इज द बिग ब्लो फॉर टीम शाइन काना। जिस तरीके से जो खिलाड़ी बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी दूसरी रन के लिए आए लेकिन नॉट एक रन के खिलाड़ी थे उन्होंने सिंगल लेने के बाद दूसरे रन दौड़ नहीं पाए और इन विकेट के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है और इस विकेट के साथ काबिल तारीफ जिस तरीके से डीप थर्ड मैन के निशान पर गेंद को फील्ड करने के बाद तुरंत जैसे ही गेंद को फील्ड करे तुरंत थ्रो कर चुके थे और इन थ्रो करने के बाद स्ट्राइक रन के निशान पर थ्रो करने के बाद विकेट कीपर जैसे ही गेंद को कलेक्ट करे और थ्रो किए थे नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर विकेट वहां पर गिर चुका है। इन विकेट गिरने के बाद विकेट नंबर 3 इज बैक इनटू द पेविलियन और 21 गेंद यहाँ पर बाकी 30 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 21 बॉल्स रिमेनिंग 30 हैव टू गेट और इस टीवी मॉनिटर पर श्रेयस को यहाँ पर दिखाई देते हुए वर्तमान क्रिकेट पर एक अच्छे कटर गेंदबाज इस वक्त सीधे गेंद को खेलना चाह मिस फील्डिंग और दूसरे अटेम्प्ट पर गेंद को फंबल बाय द फील्डर इन द बैकअप के निशाने पर गेंद को वहाँ पर दूसरे अटेम्प्ट पर गेंद को फील्ड करने के वक्त पर बल्लेबाज अपने चोर इस वक्त बदल चुके थे। इन सिंगल के साथ रनों की संख्या पर 17 और 3 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग सजावट वहाँ पर देखे जाए तो लगॉन इस वक्त बाहर लगॉन लग ऑफ डीप मिड विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त डीप गली की इशारा पर इस वक्त फील्डर को सजावट करते हुए अनीस रिलायंस कटिपल्ला के एक और दिग्गज गेंदबाज इस बार सीधे गेंद को ड्राइव किया लगॉन की दिशा पर गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए और एक और रन इस वक्त बल्लेबाज की खाता पर जुटते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा अनीस भी एक दिग्गज खिलाड़ी है खासकर रिलायंस का टिपल्ला के एक मांत्रिक खिलाड़ी। इस बार देखिए थोड़ी सी स्लोवर वन लेकिन गेंद काफ़ी बाहर की ओर निकलते हुए और अंतिम क्षण पर गेंदबाज इस वक्त अपने सोच बदलते हुए तेज गति के साथ नहीं बिल्कुल स्लोवर के साथ इस वक्त गेंदबाजी अपनाते हुए और अगला गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर से गेंद को ड्राइव करना चाहा वहां पर स्क्वायर के निशान पर गेंद खेले तो फील्ड इस वक्त हो चुका है। इन एक रन के साथ एक और रन यहाँ पर बटोरते हुए गेंद अब 3 ओवर समाप्त हो चुका है। आखिरी गेंद इस वक्त समाप्त करने के बाद ओवर नंबर 3 has been completed here. Now the scorecard is reaching on 20 on the board. Loss of 3 wicket. Now they have to get 26 run. I think 1 over is remaining of Shreyas. I think yes 3 और अभी भी बाकी और 26 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। रिमाइनिंग 8 विकेट इन हैंड ऑफ शाइन काना 7 विकेट इन हैंड। अब किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी अपनाते देखना पड़ेगा। और देखिए फिर से वहाँ पर जैसे मैंने फरमाया माइक्रोफोन पर श्रेयस की एक और बाकी है। अब इस वक्त श्रेयस को इस टीम के कप्तान शायद जुनैद इस वक्त फिर से बुलाते हुए खासकर इन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे पिछली ओवर पर। इनमें से एक 22 वहाँ पर दिए थे क्योंकि मिस फील्डिंग की वजह विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया है और 2 विकेट इन्होंने प्राप्त कर चुके थे पिछली ओवर पर। इस सफलता के साथ फिर से इज ऑन हैट्रिक नाउ श्रेयस क्योंकि पिछली 2 गेंद पर 2 विकेट इन्होंने प्राप्त किए थे और श्रेयस इज ऑन हैट्रिक। गेंद इस बार उछाल दिया और गेंद इस वक्त कैच आउट हो चुका है। Hat-trick completed for Shreyas. What a delivery. Going for a slog shot. गेंद को इस वक्त पुल करना चाहा और जिस तरीके से वो जगह ढूंढे बिल्कुल इस वक्त असफल रहे बल्लेबाज क्योंकि ज़्यादा तक बढ़िया स्ट्रोक लगनी चाहिए थे। वो स्ट्रोक पर दम भी नहीं थे और उन्होंने वहाँ पर चुने एक बढ़िया स्थान जगह इस वक्त ढूंढने में सफल हो चुका है और इन विकेट के साथ हैट्रिक यहाँ पर गवा चुका है गेंदबाज श्रेयस ने।
इन हैट्रिक विकेट के साथ रनों की संख्या पर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बॉल नंबर 1 is completed. Now the 20 on the board, loss of 4 wicket and the fourth over in progress. Very good afternoon for all the cricket lovers for watching the wonderful tournament having in the middle. The friends Urwa proudly presenting the Friends Trophy 2K26 has been going on here. The day number 2, the match number 3 is going on now. Sain Khan taking against the Reliance Katipalla as the number 6 batsman into the middle. Hakim into the middle as the ninth strikers end region, not the non-striker end region. What a delivery, what a beautiful delivery from the bowler Mr. Shreyas, and incoming delivery missed that completely by the batsman Mr. Hakim. Once again once into the attack, going for a reverse sweep and connected that one and collected as well as a fielder, and batsman is having the time to complete the second run. Completed the second run. Now the scorecard is reaching on 22 on the board. खासकर रिलायंस का टिपल्ला के बारे में हम कहा जाए तो जिन्होंने शायद एक टूर्नामेंट थे, मेरा नाम इस वक्त भूल चुका हूँ, लेकिन इन्होंने यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच खेलते हुए फाइनल पर विजयशाली हुए थे, और इस ग्राउंड पर यूसीजी ग्राउंड पर, और इसके आगे वाले टूर्नामेंट पर शायद थर्ड प्रोस काना के बीच फाइनल पर हारते हुए रनर्स अप बने थे, और वेरी सक्सेसफुल सीजन फॉर रिलायंस काटीपल्ला इस वक्त कहना पड़ेगा। इस बार काफ़ी दूर गेंद लेग स्टंप से काफ़ी दूर निकालते हुए वाइड +1 रन एंड सॉरी 22 इस वक्त यहाँ पर sorry, Bhai's call by the umpire. Just little bit of confusion over here because in front of cameraman, we are having in front cameraman इस वक्त शायद फिंगर यहाँ पर उड़ चुका है अंपायर प्रदीप कोठारी जी की। सीधे गेंद शायद बल्लेबाज रिवर्सिप के लिए खेलना चाहते थे, और इस वक्त पैरों पर लगने के बाद जोरदार अपील करें तो इस वक्त विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 24 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट, और अब 2 ओवर यहाँ पर बाकी, 12 balls remaining, and now they have to get yes, now the tossing ceremony is going on here. The team Boss Warriors, Captain Mr. Munna as well as team Nanban and Panemangaluru have on the toss. I think the tossing ceremony is going on here. Match official Mr. Azmal Nandavara making the tossing ceremony, and news for the center team Nandan. Nanban Panemangaluru on the toss and waiting for the decision. And the fresher over is coming up here. 5वीं ओवर की शुरुआत का गेंद इस वक्त अच्छी गेंद सफर कंप्लीटली यहाँ पर बीट होते हुए, और इन बिंदी गेंद के साथ शुरुआत यहाँ पर हो चुका है। 11 गेंद यहाँ पर बाकी और 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 11 balls remaining, 22 have to get once again bowling mark. New bowler and chance for the run out. I think he's gone. Finger raised from the square leg umpire Pradeep Kothari, raising the finger and is gone. The new batsman is back into the pavilion. Mustafa Senior is back into the pavilion in the strikers end region. Run out as taken by the wicket keeper. Now the scorecard is stacked on 24 on the board, loss of 6 wicket, 10 balls remaining, 22 have to get. The player from the challenge bowler, the Vivek bowler having the big screen, the well player as a official, the main umpire doing the job, and the smiling face
इस मेगा श्रृंखला के माइन अंपायर इस मैच पर विवेक बोलूर इस वक्त माइन स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देते हुए साइन स्पोर्ट्स इस मेगा श्रृंखला की लाइव टेलीकास्टिंग यहाँ पर करते हुए और आगे की ओर तीसरी गेंद लेकर तैयार। अब कमबैक करने का मौका इस वक्त जरूर है सही न कहना के और ऐसा कहना पड़ेगा एक छक्के या चौके इस वक्त जरूर चाहिए। द बैडली रिक्वायर्ड बाउंड्री फॉर टीम साइन काना टू बैक इन द मैच। इस बार उछालना चाहा फिर से चूके और इसी के साथों साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है। अंतिम क्षण पर शायद ऐसा कहना पड़ेगा नाउ द अंपायर इज गोइंग फॉर थर्ड अंपायर बिकॉज बैट्समैन इज क्रॉस or not. Wait for the third umpire decision. इस वक्त तीसरी अंपायर की मदद इस वक्त मांगते हुए क्या बल्लेबाज इस वक्त क्रॉस हो चुका है या नहीं देखना पड़ेगा। The left-handed batsman is gone and now the striker is changed. इस वक्त स्ट्राइकर के निशान पर बल्लेबाज बदलाव होते हुए देखना पड़ेगा कि क्या सफान बजाल वन मोर टैलेंटेड ऑलराउंडर फ्रॉम द साइड ऑफ साइन खाना एंड कैन ही गो फॉर अ बिग हिट। बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त जरूर चाहिए। 9 गेंद यहाँ पर बाकी 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। नाउ द नंबर 9 बैट्समैन इन टू द मिडल एज अ नॉन स्ट्राइकर एंड इन द नॉन स्ट्राइकर एंड रीजन हरीश मलार in the non-striker and region and the striker and batsman Mr. Safwan he played for plenty of match in UCG। इस वक्त सीधे गेंद को यहाँ पर स्वीप किया और गेंद इस वक्त शॉर्ट फाइल लेकिन निशा पर फील्ड होते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 25 रन 7 विकेट के नुकसान पर अगला मैच वेरी इंटरेस्टिंग मैच बॉस वॉरियर्स टेकिंग अगेंस्ट टीम ननबन पाने मंगलोर। इस बार गेंद को उछाल लिया सीधे गेंद कोई फील्डर वहां पर नहीं कम से कम वहां पर 2 रन दौड़ने के लिए कोशिश और इसी के साथों साथ यहां पर 2 रन संपूर्ण कर चुका है। फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इस वक्त दोनों खिलाड़ी अपने तालमेल के साथ इस वक्त अच्छी दौड़ यहाँ पर दौड़ते हुए इन 2 रन के साथ रनों की संख्या पर 2 रन यहाँ पर संपूर्ण करते हुए इन 2 रन के साथ रनों की संख्या पर 27 रन इस वक्त बन चुका है। 7 गेंद यहाँ पर बाकी। द 1-6 कैन चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द मैच। एक छक्के इस वक्त मैच की नक्शा यहाँ पर बदला सकते हैं। क्या ए बल्लेबाज हरीश मलार इस वक्त स्ट्राइकर के निशान पर बल्लेबाजी करते हुए और इन बल्लेबाज एक बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त लगाते या नहीं देखना पड़ेगा। 7 गेंद यहाँ पर बाकी। लॉक ऑन इस वक्त बाहर लॉक ऑफ इस वक्त बाहर डीप एक्स्ट्रा कवर डीप मिड विकेट इस वक्त बाहर यहाँ पर रखते हुए और गेंदबाज तैयार। इस वक्त अंतिम गेंद उछालना चाहा अच्छी गेंद ब्लॉक आउट के निशान पर गेंद रखते हुए यॉर्कर लेंथ डिलीवरी और कंप्लीट इस वक्त बल्लेबाज उछाल कर बल्लेबाजी करने के लिए बढ़िया स्ट्रोक खेलने के लिए कोशिश करें तो गेंद इस वक्त शायद भल्ले पर लग चुकी थी और इस वक्त बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्त हो चुका है। नाउ द 6 balls रिमेनिंग 19 हैव टू गेट। 6 गेंद यहाँ पर बाकी 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और देखना पड़ेगा कि क्या बल्लेबाज इस वक्त सफान बजाल बल्लेबाजी पर है। 3 छक्के इस वक्त लगाते या नहीं या चौके इस वक्त 5 लगानी चाहिए। 3 छक्के और सिंगल्स के साथ मैच जिता सकते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या सफान यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ
जिस तरीके से ज़्यादा तक प्रेक्षक उम्मीद करते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड कप 2016 पर कार्लोस ब्राथवेट के बल्लेबाज इस वक्त करनी चाहिए। सफोन बजाल इस वक्त बल्लेबाजी पर पहला गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि डॉटेड डिलीवरी और सैयद गेंदबाज करने के बाद पहला वार्निंग वहां पर दे चुका है, क्योंकि इन्होंने गेंदबाज करने के बाद सीधे अंपायर के सामने आए तो डेंजर एंड है और उस क्षेत्र पर और इस वक्त वहां पर वार्निंग देने के बाद इस बार गेंद को उछाल दिया, सीधे गेंद और इसी के साथों साथ विकेट वहां पर गिर चुका है। राहुल के इस वक्त ब्रदर गेंदबाजी पर आते हुए जर्सी नंबर 5 फॉर रिलायंस काटीपल्ला दूसरी गेंद पर सफलता इस वक्त पा चुका है। 4 गेंद अब बाकी है, 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 4 balls remaining, 19 have to get the three big hit badly required for शाइन खाना और इस वक्त रिलायंस काटीपल्ला के लिए 2 बिंदी गेंद बचा सकती है और देखना पड़ेगा कि क्या रिलायंस काटीपल्ला और शाइन खाना के बीच इस वक्त एक संघर्षपूर्ण मैच यहाँ पर, संघर्ष भरित मैच यहाँ पर चलते हुए इस यूसीजी ग्राउंड पर धूप कड़ी संघर्ष इस वक्त जारी होते हुए। 4 गेंद यहाँ पर बाकी, 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। उछालना चाहा, चूके और इसी के साथों साथ 9 रन की निशा पर अंपायर, तृतीय अंपायर के लिए मदद इस वक्त मांगते हुए। क्या बल्लेबाज अपने भल्ले को इस वक्त क्रीज पर सुरक्षित रख चुका है या नहीं देखना पड़ेगा और अंपायर का इशारा वहां पर देखना पड़ेगा तृतीय अंपायर की। आउट कॉल बाय द अंपायर, इट्स गॉन और इसी के साथों साथ एक और विकेट है, 8वीं विकेट इस वक्त गिर चुका है और टीवी मॉनिटर पर देखे जाए तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है तौसीफ कुदरोली, रोशन कुदरोली और सद्दाम इस वक्त इस मैच का मुजाहिरा देखते हुए। निहाल थोड़ी सी वार्म अप वहाँ पर कर रहा है और सफाफ और इनके साथों साथ क्योंकि अगला मैच बॉस वॉरियर्स कुदरोली की मैच है और इस वक्त प्रेक्षक इस वक्त बढ़ती जा रही है क्योंकि अगला मैच कुदरोली परिसर की टीम है बॉस वॉरियर्स कुदरोली और देखना पड़ेगा कि अगला मैच किस तरीके से मैच यहाँ पर चलेगा और इस बार फॉर फ्रॉम द लेग साइड वाइड कॉल बाय द अंपायर और इन वाइड के साथ एक्स्ट्रा की तरफ से यहाँ पर रन से मिलेगा जरूर। इन एक्स्ट्रा के साथ रनों की संख्या पर 28 रन, 28 ऑन द बोर्ड। इस बार उछालना चाहा रिवर्सिव के जरिए और छूके और इस बिंदी गेंद के साथ। नाउ द मैच ऑलरेडी sided for Reliance Katipalla, but wait and watch, only 2 balls remaining. I think only formality is remaining. Dotted delivery, completely beaten by the pace. 1 ball is remaining. Last 1 ball is remaining. Only 1 ball, 18 required. Can he go for a big hit? Not connected properly, and that's it. End of the over number 6, end of the innings number 2. Team Reliance Katipalla won the match and throwing to the next round. Congratulations Team Reliance Katipalla and all the best Shain Khana for your future matches. The next match playing between the very interesting match Boss Warriors Kudrolli taking against the team Nanpan Pane Mangluru and news for the center new team Nanpan Panemangluru on the toss and elect to field first. Now the change in the wise. I like to call Rashid for upcoming the next match. A very interesting match.
और मैच यहाँ पर शुरुआत होते हुए आज का दिन के चौथी मैच यहाँ पर शुरुआत होते हुए टीम बॉस वॉरियर्स इस वक्त टेकिंग अगेंस्ट टीम ननबन पाने मंगलुरु और पहला गेंद इस वक्त निहाल लेकर तैयार निहाल उल्लाल इस वक्त गेंदबाजी पर आते हुए स्ट्राइक के निशान पर मुन्ना द हार्ड हिटर बैट्समैन गोइंग फॉर स्वीप शॉट and missed that completely. Beaten by the face. The first ball dotted delivery. The Munna hard hitter batsman. He played in there like at the ground. So hard the trophy. The well knock. He played 20 to 30 runs. In the individual, he has scored very distractive opener for the side of Boss Warriors Kudroli. And far from the leg side. But just coming inside the line. And dotted delivery continues here. Two dotted delivery. बिंदी गेंद के साथ इस वक्त दूसरी बिंदी गेंद इस वक्त होते हुए इन दो गेंद के साथ तीसरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी पर निहाल उल्लाल मुन्ना इस बार उछालना चाह चुके और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है. The big blow for the team Boss Warriors Kudrale going for a big hit, completely beaten by the face. Wicket keeper collected that one and electrifying the stumps behind the wicket. There is no doubt at all. और विकेट कीपर डूइंग द वेल जॉब फॉर द टीम ननबन. जिस तरीके से वहाँ पर टीवी रिप्ले पर देखे जाए तो गेंदबाज निहाल इस वक्त अलॉन्ग द कारपेट है जैसे अंग्रेज में कहते हैं बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुकी थी. विकेट कीपर ने जैसे ही गेंद को कलेक्ट करे तुरंत सपोर्ट कर चुके हैं और आगे की ओर निकलते हुए फ्रंट फुट थोड़ी सी वहां पर आगे की ओर लेते हुए गेंद को उछालना चाहा. इम्बैलेंस इस वक्त बल्लेबाज बैलेंस नहीं कर पाए, अपने क्रीज पर रिटर्न पहुंच नहीं पाए उस वक्त पर स्टंप्स को इस वक्त अप्रूव करते हुए और इसे क्या साथ विकेट यहां पर गिर चुका है. तीसरी गेंद विकेट के साथ एक अच्छी शुरुआत यहां पर कहना पड़ेगा ननबन पाने मंगलुरु. और इस वक्त चौथी गेंद लेकर तैयार बिना रन्स के साथ इस वक्त गेंदबाजी पर निहाल गेंदबाजी अपनाते हुए चौथी गेंद लेकर तैयार. इस बार सीधे गेंद को वहां पर खेलना चाहा मिक्स अप एंड इस वक्त रनआउट की खतरा हो सकती थी. खासकर पहले अटेम्प्ट पर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, सीधे वहां पर गेंद को कलेक्ट किया जाए तो रनआउट हो सकती थी. और इस वक्त गेंद थोड़ी सी लेट कलेक्ट करने की वजह यहां पर रन्स मिल चुका है. एक और रन निजाम अलेकला इस वक्त बल्लेबाजी पर आते हुए. खासकर जाने जाता है कि भी बॉयज की एक दिग्गज खिलाड़ी है. अब इस वक्त बॉस वॉरियर्स कुदरौली के साथ देते हुए अगला गेंद इस बार फिर से उछालना चाहा सीधे गेंद डायरेक्ट इट रिक्वायर्ड बट नॉट अप टू द मार्क. इस वक्त सीधे निशान वहां पर लग नहीं पाए और इसी के साथ एक और रन यहां पर बन चुका है. 2 रन एक विकेट के नुकसान पर. अब हमारे साथ द बॉस वॉरियर्स कुदरौली के मैनेजर इरफान कुदरौली हमारे साथ यहां पर है इस माइक्रोफोन पर कोटड़ी पर. और 5 गेंद समाप्त करने के बाद 2 रन एक विकेट के नुकसान पर. अंतिम गेंद यहां पर बाकी. लास्ट बॉल इज रिमेनिंग ओवर नंबर 1 एंड पावर प्ले ओवर. इस बार शेयर करें और आखिरी मौके पर गेंद इस वक्त एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टाइमिंग बाय द बैट्समैन. जिस तरीके से आवेज ने अंतिम क्षण पर हो देखिए वहां पर पहले अटेम्प्ट जो है राइट हैंडेड बल्लेबाजी जैसे आखिरी मौके पर लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलने वाले गेंद थे और सीधे इनको वहां पर दिशा बनाते हुए और इस वक्त गेंद डीप फाइन लेग के सीमा रेखा से बाहर जा चुका है 4 रन के लिए. वेरी इंटेलिजेंट बैट्समैन. मैंने फरमाया था जिस तरीके से मुन्ना डिस्ट्रैक्टिव ओपनर है लेकिन इन्होंने ज़्यादा तक अपने सोच बोध के साथ वेरी माइंडेड बैट्समैन वेल माइंडेड बैट्समैन इस वक्त कहना पड़ेगा. टाइमिंग्स वाज एक्सक्यूजिटिव. इस वक्त बल्लेबाज हवीज द्वारा और पहला ओवर समाप्त करने के बाद रनों की संख्या पर 6 रन एक विकेट के नुकसान पर. इनके भाई छोटे भाई यहाँ पर विकेट वहाँ पर देने के बाद
इस वक्त इनकी जगह बनने के लिए आ भी जाए थे। 2 गेंद सामना करने के बाद 5 रन बने और इनमें से पावर प्ले ओवर के नंबर 1 इस वक्त पहला पावर प्ले इस वक्त समाप्त हो चुका है। दूसरी पावर प्ले ओवर शुरुआत माइन स्टेज पेविलियन इनक्योर्स इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जर्सी नंबर 77 इस वक्त नए गेंदबाज जर्सी नंबर 77 ಅಲ್ಲಿ ननबन पाने मंगलूर ತಂಡದ 100 रन आटगार दयमाಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ और दूसरी ओवर की शुरुआत का गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को चल दिया सीधा गेंद बड़ी से लगन सीमा रेखा की बाहर इस वक्त डिप्पा करने की बात जा चुका है 4 रन के लिए। वेरी हार्ड हिटर बैट्समैन निजाम अलेकला ज़्यादा तक भी बॉयज़ के वहाँ पर देखे जाए तो नंबर 4 पर उतारने वाले खिलाड़ी है। लेकिन अब इस वक्त बॉस वॉरियर्स कुदरौली के लिए आरंभिक तरफ से यहाँ पर उतारते हुए और पहला गेंद पर चौके इस वक्त लग चुका है। इस बार ऑप्शन से काफ़ी दूर यहाँ पर निकल चुका है। वाइड इस वक्त सैयद निर्णय देते हुए वाइड +1 रन। नाउ द एक्स्ट्रा 2 has been adding to the total। जिस तरीके से पहली गेंद पर जो नए गेंदबाजी आते हैं पहले गेंद पर गेंद को बढ़िया स्ट्रोक लगाते हैं तो थोड़ी सी गेंदबाज को नाराज ज़रूर हो सकती है क्योंकि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है थोड़ी सी कम होता है। अपने पहले गेंद पर छक्के या चौके वहाँ पर लगे। अब इस वक्त फिर से लौटना होगी बैक यहाँ पर कम बैक करनी होगी। टीम ननबन की खिलाड़ी फारिश इस वक्त गेंदबाजी पर आते हैं। फर्स्ट बॉल 6 रन इस वक्त समाप्त करने के बाद 12 रन पहला गेंद समाप्त करते हुए इस बार दूसरी गेंद को चलना चाहा चुके द बैडली रिक्वायर डायरेक्ट हिट। इस वक्त सीधे डायरेक्ट हिट हो जाए तो किए जाए तो विकेट वहां पर गिर सकते थे लेकिन वाइड थ्रो की वजह एक और रन यहाँ पर दौड़कर संपूर्ण कर चुका है। इस 1 रन के 7 रनों की संख्या पर 13 रन 2 गेंद समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड डिलीवरी एवरी गो द थर्ड बॉल ऑफ द सेकंड ओवर Faris wants into the attack from the right arm over the wicket taking guard from the umpire fumble by the fielder। Oh my goodness, wicket keeper fumble I think yes byes called by the umpire। बैट्समैन बीटन हियर जो बल्लेबाज वंचित हो चुके थे विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। बैकअप खिलाड़ी ने थोड़ी सी मिसफील्डिंग करे तो फायदा उठाते हुए 1 रन दौड़कर संपूर्ण कर चुका है बॉस वॉरियर्स के लिए। अब इस वक्त फायदा जरूर होते हुए इन मिसफील्डिंग को और 1 और रन यहाँ पर बटोर चुका है। अगला गेंद इस बार थोड़ी सी स्लोवर वन चेंज इन द फेस। इस वक्त थोड़ी सी स्लोवर वन यहाँ पर रखने के बाद बिंदी गेंद काफ़ी गेंदों के बाद इस वक्त बिंदी गेंद आते हुए कम से कम मेरे ख्याल से 10 गेंद के बाद इस वक्त 9 गेंद के बाद इस वक्त बिंदी गेंद यहाँ पर आते हुए। अगला गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी पर फारिश इस बार उछालना चाहा बोल्ड क्लीन स्वीप। यो मैसेट आई हेटेड यहाँ पर कहते हैं विकेट गिर चुका है और इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर फिर से स्थगित यहाँ पर होते हुए बल्लेबाज पहला जो सोचते होगी कि अब लेग साइड की निशान पर ऑन साइड की निशान पर गेंद को खेले लेकिन आखिरी मौके पर अपने सोच को इस वक्त बदलता है। वैसे सीधे गेंद को ऑफ साइड की निशान पर गेंद को जगह बनने के लिए कोशिश की है और कोई मौका इस वक्त गेंदबाजी नहीं कर चुके थे वहाँ पर नहीं देते हुए और इन विकेट के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इस विकेट के साथ रनों की संख्या पर सिर्फ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब पिछली 2 गेंद पर कमबैक इस वक्त जरूर कर चुका है टीम ननबन की गेंदबाज फारिस ने। और इस वक्त मैंने ख्याल नहीं करे तो 901 रन की निशान पर जो खिलाड़ी है इनके नंबर वहाँ पर देखे जाए तो 8055। जिस तरीके से डिजिटल पर
अक्षर पर देखे जाए तो बॉस की वहाँ पर इशारा देते हुए और 8055 BOSS से यहाँ पर गेंद को उछाल दिया, कैच ले चुका है लगॉन के निशाना पर। लगॉन इस वक्त कैच लेते हुए और इसी के साथ साथ विकेट गिर चुका है। जस्ट चिप दैट वन, सीधे सिर्फ गेंद को चिप किए थे और गेंद इस वक्त सीधे सुरक्षित क्षेत्र रक्षक के हाथों पर जाते हुए और इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर फिर से स्थगित हो रही है। 14 रन पर बिना रन से इस वक्त पिछली 3 गेंद, इनमें से एक भिंदी गेंद, एक विकेट वाले गेंद और इसी के साथ साथ 2 विकेट वाले गेंद, पिछली 3 गेंद पर बिना रन से यहाँ पर बनाते हुए 2 विकेट यहाँ पर गवा चुका है। और आगे का हालचाल यहाँ पर सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए रशीद जी। So thank you, Kabir. So Boss Warriors taking against Team Nanban. So far, after losing 3 wickets, Team Boss Warriors Kudroli, they got 14 on the board. Nizam at the batting end. Nizam Alekala is a powerful striker. Has played plenty of good cricket. Bices the signal from the main umpire. And Nizam is asking that whether the ball is going away from the reach of him, but ball is just inside the trim line. So good decision from the main umpire Azmal, along with square leg umpire Vivek challenge bowler, and also we have the third umpire Pradeep Kottari here in the commentary box. Boss Warriors Kudroli, they need one good standing innings because just 2.1 overs proceedings are complete. They are having 15 runs already in the scoreboard. It's just that they are losing wickets. They need to stop the flow of the wickets. And the bowler Nihal, who has represented KFC Kodikal, has been a permanent member of KFC Kodikal, representing KFC Kodikal many times. But he is representing Team Nanban. Nizam and Nihal, they know each other very well, hailing from the same place, Alekala. So they know each other very well. Balls, brilliant delivery along the carpet. Quick one from Nihal. This is a good bowling from the youngster. Variations which is required, and Nihal is showcasing it perfectly. This is the reason why he's given the opportunity to continue his second over quota. Bowled brilliantly, cut that one into that vacant third man area. Fielders are chasing it after. They are going with the mistake, and scoreboard is additioned with the 2 more runs. So total moves on to 18. Runs are coming, but the only problem they have so far faced is losing wickets. Nizam at the facing end. Oh, swung that one. Couldn't manage to get a perfect connection. Timing is totally off from Nizam. You just need to watch the ball carefully because he's not making any perfect connection. He's just played some late cuts. He's not at all striking the ball from the front foot. But so far he's played a good innings. A ball-to-ball innings played from Nizam. So scoreboard is having 1 more run added. So end of the over number 3. 3 overs are complete. 19 for the loss of 3 wickets. Now this is a good innings, which is slowly and steadily being built from Team Boss Warriors.
19 for the loss of 3 wickets. Even if they can manage to get 40 plus on the board, that's going to be a good total on the board. On the other hand, the team Nanban Pane Mangalore, they would definitely be hoping to get a couple of more wickets, because especially these two batters in the middle, there's always a headache for the team Nanban Pane Mangalore. So they are carefully setting the fielding department. They are very careful in making fielding department changes. The wicket keeper doing his job perfectly. Nizam Alekala at the facing end, one of the key mans for B-Boys Alekala. And 2 years back in the BMR Trophy at the Paradise Ground, Krishnapura, what an innings he played with the bat for team B-Boys Alekala. In a crucial situation, a maximum came from his bat, which changed the whole complexion of that game for B-Boys Alekala. When they were chasing, Nizam definitely finished that chase for the team B-Boys. So 20 on the board for the loss of 3 wickets. And his partner Nishu has done a great job as well. He's been very quick in running in between the wicket. But he need to be very good with the bat as well, because timing is required. He need to be very careful. Losing one more wicket is going to put more trouble on the well-settled Nizam as well. Oh, that's a good thinking from Nishu. And Nihal couldn't manage to collect the ball perfectly in time. And the main umpire says wide +1, 2 runs are added. And we are just waiting whether the third umpire's help has been taken. So far, no. So yes, and now the umpire is saying the bat fielding team has taken their review to check whether the bat is involved with that delivery. So the third umpire, Pradeep Kottari, is going to examine that whether there is a bat involved. If there is a bat involved, that could be a legal delivery. If there is bat not at all involved, it could be a wide ball. Friends Trophy 2026, which is proudly presented from Friends Urwa, with the best wishes coming in from young Friends Urwa and Fernandez Aluminium. A lot of hard work in conducting this kind of well-organized tournament, and the organizers have done a great job in conducting such a wonderful tournament. So yes, no bat involved, it's a wide delivery. The umpire checked it very briefly, and a review lost here for team Nanban Pane Mangalore.
Oh, played nicely into the deep mid-wicket area. Fielder is coming close to the 30-yard circle, just outside the 30-yard circle. The ball has been collected perfectly. The fielders are doing a great job. And for the next match, it's a Ullal Derby. Brothers Makyar taking against Friends Kuttar. Two teams who are absolutely give their best whenever they are facing each other. Friends Kuttar taking against Brothers Makyar. That's the next match coming up. I request all the players of Brothers Makyar and Friends Kuttar to complete the signing procedure for the next match. Oh, that's a good delivery. That's a fantastic delivery from the bowler. So now, that's a good delivery from Anif. And the scoreboard is having 25 runs. 25 for the loss of 3 wickets. And this has been a good partnership between Nishu and Nizam. So Anif once again takes his time. Oh, that's a good delivery. That's a good delivery. But surely they're going to get a single. Bat which is touched the ball, as no signal came from the main umpire. So run which is added into the account of Nizam. So scoreboard is having 26 now for the loss of 3 wicket. Oh, just chipped it. That's a good batting from Nishu. But no opportunity for the second run. Fielders are very quick outside the 30-yard circle. They are doing a great job. Team Nanban Panemangalore, their fielding department has been showcasing good performance. Even though their bowlers have struggled bowling 1+1. Plenty of extras in this over from the first 5 deliveries. Last ball remaining. Oh, it's given, and wicket which is falling. There was a strong appeal from the wicket keeper and the best of fielder as well as the bowler. So they were very confident, and straight away main umpire Vivek raising his finger, and Nizam has to walk back towards the pavilion. A very good innings of Nizam comes to an end. He played nonetheless an innings which contributed 11 runs from his bat to the team. In the 13 deliveries he faced. And we are seeing Kebir Kudroli in the screen, walking towards the spectators' end with the smiley. And this has been a bright sunny day. Oh, that's a good delivery, and bowler is blocking the vision of the umpire, and first warning has been issued. Or else it could have been some opportunity. And it's being one of the busiest day of the week, Saturday. We are seeing some decent number of crowd watching this wonderful game of cricket. Friends Trophy 2026. Tomorrow I think we are going to witness a lot of crowd.
the top seeded teams of Underarm cricket. The Mangalore pool is going to take place tomorrow. Top 8 teams. Muzammil at the facing end. Oh, that was a loose delivery, but couldn't manage to take a full advantage of it. White, which is the signal coming from the main umpire. So Vihal is a bowler. So far is struggled with the line and length. And if you look at the current run rate, 7.20, and the projected score which almost touches 40. If Boss Warriors gets more than 45, they can easily get more than 45 if they keep on getting runs in the form of turning their singles into 2. And on the screen we are watching Vivek, the square leg umpire, challenge bowler, one of the players of challenge bowler back in the days. Absolutely classy batsman. In the meantime, third umpire's help has been taken. And the third umpire, Pradeep Kothari, is going to see that decision. Not out is the decision from Pradeep Kothari. The bat landed before the bails were disturbed. So good return from the batsman Nishu, or else he would have been in trouble. Once again Vihal. He's got a very good run up and good action as well. In the air, taken comfortably. That's a success for Team Nanban. And it's a first wicket for Vihal. So scoreboard is having a total of 30 for the loss of 5 wickets. And the way Vihal has made a good comeback after bowling extras. He has made a great comeback, because just those 2 extras are only the runs conceded in this over from Vihal. White +1. Those are the only runs Vihal conceded, and 1 in the form of leg by. So 3 runs have been added to this total from this over. The penultimate over which is in progress. Muzammil and the joining batsman, new batsman Kamar. Kamar is a new batsman at the striker's end. So bice is a signal from the main umpire, and with the bice, scoreboard is having 1 more run added. So total moves on to 31. This over has been absolutely very economical from Vihal. It's just conceded 2 runs and 2 in the form of bice. Oh, what a shot! What a shot! As he managed to get a distance, I think yes. Yes, it does. It goes all the way for a huge maximum. Great effort from the fielder. You have to give all the credit to the fielder for his level best effort. But nonetheless, it was a magnificent stroke from the bat of Muzammil. Cleared all the way. Vihal was bowling a very good over. But that last delivery, batsman Muzammil managed to get it over the ropes for a maximum. And scoreboard now, all the deficit have been covered. 37 for the loss of 5 wickets. 37 runs are there on the board for Boss Warriors Kudroli. It looks ample total. Still last 6 balls are remaining in the first innings. And if they can manage to get 6 runs in the remaining 6 deliveries, that could get them towards 43 to 44 runs.
And if they can manage to get towards the 48, it's going to be absolutely a big challenging total on the board for team Nanban Panemangalore to chase down. And for the next match, I request Brothers Makyar and Friends Kuttar for the sign up. Please immediately complete the signing procedure. Played nicely into that deep point region. So the fielders are very good at outside the 30-yard circle. Team Nanban Panemangalore, one department which they have really done a great job is fielding department so far. Bowling not at all up to the mark because bowlers have bowled plenty of extras. This is a good bowling. A dotted delivery from bowler Far East. This has been a very good over from Far East. 2 dot deliveries. So far he has just conceded 1 run. That too in the form of single in the second delivery. 3 balls and just 1 conceded. He has got 2 wickets in his previous over as well. There's an appeal for the leg before wicket. Or could be a run out. Musambil I think wanted the strikers then. And in the form of trying for the second. He lost his wicket in the form of run out. So leg by, single and a wicket in the form of run out. There's plenty of things happening in this single delivery. So scoreboard is having a total of 39. So far Far East has just conceded one run, one in the form of leg by. So 2 runs have been added to the scoreboard from this over. And the last just 2 deliveries are remaining. Rahil is a new batsman in the middle. If he can manage to get 1 boundary or 1 maximum, those are going to be some winning runs for team Boss Warriors Kudroli. Oh, they're going for the quick run. Will they be able to manage it? No. The wicket again falling. 1 more wicket. Boss Warriors, they know they want to cross that 40-run mark at any cost. Scoreboard is stuck at 39. This is a phenomenal bowling from Far East. Inside the death over, bowling such a wonderful over. Not at all easy job for Far East. But he's done a great, tremendous work so far. So Sahal into the middle. Sahal Kudroli, a very familiar name to the Underarm cricket fans in South Kannada district. Oh, the bat is gone, definitely. That was definitely a powerful swing from Sahal. Even the bat is broken, they managed to get 2 runs between the wicket. The single piece bat has turned into a double piece. Look at that in the replay. He's still holding on to it. Very strong grip from Sahal. But hit that one pretty hard to the ground. So scoreboard is having 41. 42 is the target.
in 36 deliveries, 42 runs target for team Nanban Pane Mangalore. When they come out to chase this total, they would require 42 runs for the victory. Not going to be such an easy chase, especially team Boss Warriors Kudroli. They are having a lot of good potential bowlers who are very well known. And before the start of the second innings, I once again heartily welcome Kabir Kudroli in national language Hindi. Over to Kabir Kudroli. Yes, welcome back all the spectators, all the cricket lovers for watching the wonderful tournament. Having in the medal, friends Urwa proudly presenting the Friends Trophy 2K26. और इस वक्त दूसरे इनिंग्स शुरुआत होते हुए 22 रन के लक्ष्य इस वक्त रख चुका है. 42 रन के समाप्त. 42 is a chasing total for team Nanban Pane Mangalore. Africa, the startup with Riaz, the legendary player of NM Mangalore, and going for a big shot, and I think it's cleared the boundary. Yes, it has. It's a 4-run. And the starting with the boundary is a wonderful cricketing stroke has been coming up here from the long gone region, and the fielder missed that completely. Nishu is a fielder. जिस तरीके से शुरुआत का गेंद रियाज लेजेंडर प्लेयर ऑफ एनएम मैंगलोर के एक दिग्गज खिलाड़ी द कुदरोली एक्सप्रेस माना जाता है. और इस वक्त शुरुआत का गेंद लेकर 4 रन के साथ शुरुआत हो चुका है टीम ननबन पाने मंगलुरु के लिए. दूसरा गेंद शॉट मिड ऑन इस वक्त अंदर. दूसरी गेंद इस बार थोड़ी सी बाहर की ओर निकालते हुए वाइड का इशारा, और इस वक्त एक्स्ट्रा के साथ रन यहाँ पर मिल चुका है. 2 रन
समाप्त पर 1 रन, इनमें से 5 रन पहला गेंद समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी द सेकंड बॉल इन प्रोग्रेस. Going for big hit, toss it that one and catch taken clearly. And a very good catch taken by the fielder in the long off region, widest long off region, and taken comfortably. अब इस वक्त गेंद को टॉस करना चाहा, सीधे गेंद को चिप करना चाहा. आखिरी मौके पर गेंद टॉपिस पर लगने के बाद लॉक ऑफ की निशान पर गेंद जाते हुए और इस वक्त कोई गलत वहाँ पर नहीं किए. साहल ने गेंद को कैच लेने के बाद विकेट यहाँ पर गिर चुका है. और देखे जाए तो बैटिंग बॉलिंग लाइनअप ऑफ बॉस वॉरियर्स कुदरोली एक भला बॉलिंग लाइनअप है, जैसे कि रियाज, साहल, निशु और चरण जैसे गेंदबाजी है इस टीम पर. और देखे जाए तो एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप इस वक्त नजर आते हुए टीम बॉस वॉरियर्स कुदरोली के. और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी अपने चतुराई वाले बल्लेबाज यहाँ पर दिखाते हैं. कुछ अंत तक फील्डिंग में इस वक्त फिर से जमावट करने के बाद लगॉन इस वक्त बाहर, लग ऑफ इस वक्त शायद बाहर, शॉट मिड ऑफ, शॉट गली पॉइंट, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग और शॉट मिड विकेट के साथ फील्डर को सजावट करने के बाद तीसरी गेंद लेकर तैयार रियाज. बैक इनटू द अटैक. इस बार अच्छी गेंद along the carpet and taken comfortably catch. What a catch that one! What a catch, Feroz, you beauty! जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर वेस्ट इंडीज की खिलाड़ियों ज़्यादा तक वो माना जाता है कि एक दिग्गज खिलाड़ी है, खासकर ज़्यादा तक बाहर की ओर, तीसरे दायरे की बाहर की ओर बाउंड्री लाइन के करीब करीब फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी है. डाइव लगाते हुए, छलांग लगाते हुए, व्हाट अ कैच दैट वन! fantastically taken by the catch from the fielder Mr. Feroz. Taken brilliant catch. और इस वक्त गली की इशारा पर गेंद को वहाँ पर सीधे स्टीयर करना चाहा. आखिरी मौके पर गेंद एड्ज लगाने के बाद जैसे गेंद आया सलंग लगाते हुए वहाँ पर ड्राइव लगाते हुए गेंद को कैच लिए और इसी के साथों साथ विकेट वहाँ पर गिर चुका है. बैक टू बैक 2 विकेट in the board. And the 5 runs on the board, 2 wicket has been lost and the 4th ball in progress. And the very good comeback from the bowler Mr. Riaz. The Kudroli Express into the attack. जिस तरीके से 2 गेंद यहाँ पर लेने के बाद is on attack. Riaz on attack. Here we go. Here we go. Riaz on attack. Far from the leg side, I think little bit far from the leg side. And a single has been completed. The 1 run has been completed here. Now the scorecard is already stacked in the last 2 delivery. पिछली 2 गेंद पर स्टक हुए थे. अब देखिए वहाँ पर शायद ओ माय गुडनेस टीवी रिप्ले पर वहाँ पर देखे जाए तो एक अच्छी कैच रिवर्स शिप के जरिए गेंद को मैंने सोचा कि गेंद को स्टीयर करना चाहिए, लेकिन रिवर्स शिप के जरिए गेंद को खेलना चाहते थे. टॉप एज पर लगने के बाद मेरे ख्याल से ये गेंद 2 कदम आगे थे गेंद अब फील्डर के और छलांग लगाते हुए एक डाइविंग फैंटास्टिक डाइविंग फ्रॉम द फील्डर मिस्टर फिरोज इस वक्त फील्डिंग वहाँ पर करते हुए कैच वहाँ पर लेते हुए और इन कैच के बदौलत विकेट वहाँ पर गिरने के बाद एक और सिंगल के बाद रनों की संख्या पर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब नासिर इनटू द सेकंड रीजन. इस बार सीधे गेंद को खेला. गेंद इस वक्त फॉलन थ्रो की निशान पर गेंद आने वाले थे और आखिरी मौके पर आगे की ओर निकालते हुए सीधे गेंद को कलेक्ट करे और इसी के साथों साथ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर. और बात यहाँ पर कहना चाहिए कि रियाज के इतिहास वहाँ पर देखे जाए तो कई सारे इनाम इन्होंने पाए थे. एनम के पक्ष पर उन्होंने खेल रहे थे काफ़ी सालों तक और अब इस वक्त अपने होम टीम इस वक्त के साथ यहाँ पर खेलते हैं टॉप एज और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा की बाहर जा चुका है 4 रन के लिए. शायद फील्डर काफ़ी दूर इस वक्त थे, शायद लगॉन के निशान पर फील्डर थे. वाइडिश लगॉन के निशाने पर गेंद जाते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे गेंद क्षेत्र रक्षकों को वंचित करने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी थी 4 रन के लिए. इन 4 रन के साथ रनों की संख्या पर 10 रन. नाउ द मिक्सअप स्टार्ट फॉर द टीम ननबन पाने मंगलुरु. Why? Because they lost 2 wicket, 2 valuable wicket in the back-to-back 2 wicket. In fact, third delivery
द सेकंड डिलीवरी एंड द थर्ड डिलीवरी, दूसरी गेंद और तीसरी गेंद पर विकेट वहाँ पर गिरने के बाद, बैक टू बैक विकेट वहाँ पर गिरने के बाद इन्होंने चौथी गेंद पर सिंगल्स और पांचवी गेंद पर भिंदी गेंद के साथ आखिरी गेंद एक चौके के साथ जो शुरुआत हो चाहते थे, अब इस वक्त एक धुआंधार शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 2 विकेट इस वक्त खुलने के बाद भी अपने कमबैक इस वक्त वो दिखाई देते हुए टीम ननपन पाने मंगलुरु। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मिक्स अप शॉट फॉर बोथ टीम बॉस वॉरियर्स एज वेल एज द टीम ननपन पाने मंगलुरु। और अब 5 ओवर अभी भी बाकी, 32 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 32 रिमाइनिंग एंड 30 डिलीवरी एग्जैक्ट इस वक्त 6.40 6.40 इस वक्त रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। थोड़ी सी हवा इस वक्त चलते हुए मैदान पर और देखना पड़ेगा कि धूप खड़ी संघर्ष आई थिंक मोर देन 30 डिग्री ऑफ द 30 to 35 डिग्री सेल्सियस एट प्रेजेंट इस वक्त धूप खड़ी संघर्ष इस वक्त जारी होते हुए। और फील्डिंग में कुछ अंत तक जमावट करने के बाद पहला ओवर समाप्त करते हुए दूसरी ओवर के पहला गेंद सहल बैक इनटू द अटैक, द प्रेजेंट प्लेइंग फॉर एनएम मैंगलोर। सहल इस वक्त पहला गेंद, अच्छी गेंद, ओ माय गुडनेस, वन मोर गुड फील्डर, in fact the ABD Wheelers of Kudroli area, that is Mr. Rahil collecting the ball very fantastically, and batsman having the ample time to complete for a single run। इस वक्त एक और रन लेते हुए, जैसे कि राहिल भी एक अच्छी खिलाड़ी है, खासकर टीवी मॉनिटर पर देखे जाए तो एक और दिग्गज खिलाड़ी, क्षेत्ररक्षक, एक बिग क्षेत्ररक्षक यहाँ पर क्षेत्ररक्षण करने के बाद गेंद इस बार थोड़ी सी अच्छी गेंद परिवर्तन के दौर पर धीमी गति के साथ एक्स्ट्रा कर काफ़ी तेज़ी के साथ अलोंग द कारपेट, जैसा अंग्रेज में कहते हैं, बिल्कुल ज़मीन के सहारे, और विकेट कीपर कलेक्टेड द बॉल वेरी कंफर्टेबली एंड dotted delivery has been coming up here, complete of the second ball, the completion of the second ball, the scorecard is struck down 11 on the ball, loss of 2 wicket, 11 रन पर 2 विकेट इस वक्त गिरते हुए अब 2 गेंद समाप्त हो चुका है। तीसरी गेंद लेकर तैयार सहल फ्रेंड्स उर्वा के फ्रेंड्स ट्रॉफी के एंड की ओर से इस वक्त गेंद इस बार सीधे गेंद को चिप किया, गेंद इस वक्त भैडिश लगान के इशारे पर गेंद जाते हुए गेंद को इस वक्त फील्ड कर चुकी थी मुजामिल ने, और जब तक गेंद को फील्ड वहाँ पर करने के वक्त पर अपने चोर इस वक्त बदलते हुए बदलने के बाद रन इस वक्त बन चुके हैं 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब चौथी गेंद लेकर तैयार सहल, 3 गेंद फेंकने के बाद सिर्फ 2 रन प्राप्त कर चुका है। अब चौथी गेंद लेकर तैयार सहल बैक इनटू द अटैक, इस बार गेंद को वहाँ पर ऑन साइड के निशान पर जगह बना दिया, कोई क्षेत्ररक्षक वहाँ पर नहीं थे 30 दायरे के अंदर, इस जगह को ढूंढते हुए सीधे गेंद को ऑन साइड के निशान पर खेलने के बाद एक और सिंगल से यहाँ पर ले चुका है। वो जानना चाहता है कि अब विकेटों को बचाकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी दूर नहीं है, थोड़ी सी नज़दीक यहाँ पर नज़र आते हुए, सिर्फ 2 या 3 गेंद की डिफरेंस वहाँ पर दिखाई देते हुए, और इसको कवर अप करने के लिए विकेटों को बचाकर इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए कोशिश पर संपूर्ण आत्मविश्वास भरित स्ट्रोक इस वक्त लगाने की कोशिश पर इस बार रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेल दिया, गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए, और फिरोज फिर से फील्डिंग यहाँ पर करते हुए। वहाँ पर देखे जाए तो बॉस वॉरियर्स की खिलाड़ियों को वहाँ पर ठीक तरीके से देखे जाए तो विकेट कीपिंग सेक्शन पर द टैलेंटेड विकेट कीपर कमरुद्दीन, शॉट थर्ड मैन के निशान पर मुन्ना, और शॉट कवर के निशान पर फिरोज और राहिल, वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन द ऑफ साइड रीजन। अब इस वक्त अगला गेंद इस बार बाउंड क्रीज एंड यू मिस इट, हिटेड यहाँ पर कहते हुए बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुके थे along the carpet, fantastic done by the bowler, fantastic done by the bowler, what a delivery, unplayable delivery, have a look at that in the TV reply। जिस तरीके से परिवर्तन के दौर पर धीमी गति के साथ गेंद को वहां पर रख चुके थे, बल्लेबाज अपने बल्ले को वहां पर उठा है तो वहां पर टाइमिंग्स नहीं मिल चुके हैं, और इसी के साथों साथ बोल्ड आउट के जरिए विकेट यहां पर गिर चुका है। 14 रन पर 3 विकेट यहां पर गिरने के बाद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस मिस्टर सहल, 4 रन वहां पर दिए, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त कर चुका है, और कमबैक इस वक्त बॉस वॉरियर्स के लिए जरूर होते हुए
और बॉस वॉरियर्स के क्षेत्र रक्षकों के बारे में हम कह रहे थे बाउंड्री लाइन की फील्डर वहाँ पर देखे जाए तो मुजामिल एक और अच्छी फील्डर और अवीज़ एक सशक्त क्षेत्र रक्षकों को एक सजावट करने के बाद एक अच्छी टीम यहाँ पर कहना पड़ेगा। ज़्यादा तक सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी मेरे ख्याल से निज़ाम सिर्फ मात्र खिलाड़ी बाहर की ओर से और सभी खिलाड़ियों को इस वक्त कुदरौली से चुनाते हुए इस मेगा श्रृंखला पर खेलते हुए बॉस वॉरियर्स कुदरौली। नाउ दे आर इन द राइट एंड टॉप बिकॉज दे गिवन ओनली 14 रन्स इन द 2 ओवर, in fact 3 wicket lost for the team Nanban Pane Mangaluru. Now 24 balls remaining. Now they have to get 28 run at exact the 7.00 required run rate for the team Nanban Pane Mangaluru. Now the bowling change mark. Mr. Charan back into the attack. New face for new bowler into the attack from the pavilion end. इस वक्त पवेलियन एंड की ओर से शुरुआत करते हुए चरण इस बार रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेलना चाहा एक्स्ट्रा कर और बल्लेबाज को वहां पर टाइमिंग्स नहीं मिल रहा है जिस तरीके से रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेलना चाहा, चूंकि डॉटेड डिलीवरी के साथ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भरते जा रहे हैं क्योंकि पहले ही गेंद पर रन्स नहीं मिल रहे थे। अब टॉप एज एंड टेकन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड। जिस तरीके से आपने फरमाया बिल्कुल सही, जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रोक लगा चुका है वो स्ट्रोक सही तरीके से लग चुकी थी, लेकिन वो प्लेसमेंट जो है बिल्कुल गलत हो सकती है क्योंकि ज़्यादा तक वो सेम स्ट्रोक स्क्वायर लेग के निशान पर लगे जाए तो छक्के हो सकती थी क्योंकि उतना तेज बड़ी थी स्ट्रोक थे, लेकिन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड माना जाता है। अब इस वक्त गेंद सीधे सुरक्षित क्षेत्र रक्षक के हाथों पर जाने के बाद निशान इस वक्त कैच को लेते हुए कोई गलत वहां पर नहीं कर चुका है और इन कैच आउट के बदौलत रनों की संख्या सिर्फ 14 रन बिना रन्स के साथ विकेट इस वक्त प्राप्त कर चुका है। फैंटास्टिक डन इस वक्त, गुड गोइंग ऑन फॉर टीम बॉस वॉरियर्स कुदरौली। द बॉस इन टीम की मालक जलील बॉस इस वक्त अपने ढगौट पर बैठते हुए और अगला गेंद लेकर तैयार। इस बार उछालना चाहा, गेंद फिर से डॉटेड डिलीवरी, ऑफ कटेड डिलीवरी, सॉरी लेग कटेड डिलीवरी, कंप्लीटली बीटन बाय द फेस। अंतिम क्षण पर गेंद बाहर की ओर निकलते हुए और बल्लेबाज को वहां पर वंचित करने के बाद सीधे विकेट कीपर की दस्तानों पर गेंद जाकर टकराए तो डॉटेड डिलीवरी बिंदी गेंद के साथ 14 रन 4 विकेट की नुकसान। 3 गेंद समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थर्ड डिलीवरी विदाउट गिविंग एनी रन इस वक्त चरण अपने गेंदबाजी पर सही लय प्राप्त इस वक्त करते हुए अगला गेंद फिर से डॉटेड डिलीवरी, फिर से डॉटेड डिलीवरी, बिंदी गेंद यहां पर रख चुका है। इन बिंदी गेंद के साथ 20 गेंद यहां पर बाकी, 28 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 20 balls remaining, 28 have to get। वंस अगेन चरण इस बार शायद ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर की ओर निकालते हुए वाइड का इशारा। 4 गेंद के बाद ऐसा सोचते हुए कि गेंदबाज अंतिम ओवर पर ऑफ कटर गेंद बल्लेबाज के काफ़ी दूर रखने के लिए चाहते थे, लेकिन वो गेंद इस वक्त ज़्यादा तक बाहर की ओर निकालते हुए और गेंद लेग कटर इस्तेमाल कर रहे थे और ज़्यादा तक दूर जाने के बाद वाइड का इशारा वहां पर दे चुका है। इन वाइड के साथ रनों की संख्या पर एक और रन यहां पर बढ़ते हुए आफ्टर लॉट ऑफ बॉल, दैट मींस 4 बॉल दे गॉट 1 रन इन दैट। 4 गेंद समाप्त करने के बाद एक और रन यहां पर आते हुए टीम ननबन पाने मंगलुरु और इस वक्त चरण 5वीं गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद का उछालना चाहा, जोरदार अपील, शायद अंपायर का इशारा, लेग बाइस का इशारा क्योंकि गेंद ऑप्शन से काफ़ी थोड़ी सी दूर निकलने वाली थी और स्टंप्स के ऊपर नहीं लगने वाले गेंद को इस वक्त अंपायर सही तरीके से निर्णय देते हुए और इनके साथ लेग बाइस का इशारा पर एक और रन यहां पर संपूर्ण करते हुए इन 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 16 रन, 16 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बॉल नंबर 5। द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर नंबर 3। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद यहां पर गेंदबाजी करते हुए चरण गेंदबाजी
गेंदबाजी पर बल्लेबाज मुस्तफ़ा के लिए अगला गेंद, अच्छी गेंद और इसी के साथों साथ ओवर की समाप्त हो चुका है. The one more good over comes to an end. Over number 3 is completed. The scorecard is struck around 16 on the board. Loss of 4 wicket. Now the umpire calling for the third umpire, where it is whether it is a wide or not. Just checking for the third umpire. Checking from the third umpire. Yes, it's a legal delivery. As over number 3 has been completed here. Now the scorecard is reaching on 16 on the board. And the manager of Boss Warriors, Kudroli, Irfan Kudroli, will be back in the pavilion. The 16 on the board, loss of 4 wicket. Exactly, they got a run rate of 5.33. Now they have to get 8.67 required run rate. And the 18 balls remaining. Now they have to get another. The 50% of the innings has been completed here. Yes, after completion of the over number 3, now we can see in the big screen the Pradeep Kottari and organizer of Friends Urwa, the Sudesh, and the manager of Boss Warriors Kudroli, Irfan Kudroli. We are in the big screen. And now the 3 over has been completed here. 16 on the ball, loss of 4 wicket. Every go. The next. The first 4th over, going for a big hit, expansive stroke. Oh my goodness, it's a floppy. It's a completely floppy. Riaz is going for a big hit and connected that properly. The misjudgment by the fielder and missed that completely. Now the 4 runs has been completed here. The one. Yes, now the completion of the 4 run. The scorecard is reaching on 20 on the board. Top edge! And not taking the catch. It's a floppy. It's a completely floppy. And this is a fair run called by the umpire. The 2 run has been completed here. And the top edge, the fielder is not taking the catch. If it is a catch taken, that means end of the innings of Mr. Idjo. The 22 on the board, loss of 4 wicket after completion of the second delivery. 2 गेंद समाप्त करने के बाद रनों की संख्या पर 22 हो चुका है. 16 गेंद अभी बाकी है. 20 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए. 16 balls remaining. 20 have to get. Now they have to tighten up the screws. इस वक्त थोड़ी से भिंदी गेंद के साथ फिर से यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तीसरी गेंद. इस वक्त भिंदी गेंद के साथ पहला गेंद पर छक्के है. दूसरी गेंद पर दुगने रन, डबल रन वहाँ पर लेने के बाद तीसरी गेंद पर भिंदी गेंद के साथ इस वक्त कमबैक करने के मौके पर टीम बॉस वॉरियर्स कुदरोली अगला गेंद लेकर तैयार. इस बार फिर से गेंद को ड्राइव किया. एक्सपांसिव ड्राइव गोइंग फॉर सिंगल रन एंड completed the single. Now the 2 ball is remaining. 14 balls remaining. 19 have to get after changing the fielding setup. We can see that long off, deep extra cover, deep square leg region, and
Once again, bowling mark Mr. Riaz Kudroli wants into the attack and going for steers that one collected by the fielder. Batsman having the time to complete the single run. इस वक्त सिंगल रन के साथ रनों की संख्या पर एक और रन यहाँ पर बटोरते हुए 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर 13 गेंद अभी बाकी है. 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. 13 balls remaining. 18 have to get. Once again going for reverse sweep. Wicket keeper collecting the ball, uprooting the stumps behind the wicket, electrifying the stumps, but batsman having the foot in the screen. शायद अपने क्रीज पर अपने कदम सुरक्षित स्थान इस वक्त अपने पैरों को वहाँ पर रख चुके थे या नहीं देखना पड़ेगा. तृतीय अंपायर के लिए मदद इस वक्त मांग चुका है और रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेलना चाहा और ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ 2 ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು 2 ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. And it's a not out call from the third umpire and dotted delivery after completion of the over number 4. The scorecard is reaching on 24 on the board. Loss of 4 wicket. 12 balls remaining. 18 have to get exact 9.00 required run rate. Yes, 12 balls remaining. 24 have to get, 18 have to get. Scorecard is reaching on 24 on the board. Loss of 4 wicket. And the fifth over इस बार सीधे गेंद को यहाँ पर रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेले और आखिरी मौके पर गेंद को इस वक्त दो टिप्पा करने के बाद सीधे गेंद को कलेक्ट कर चुका है. इन कलेक्ट करने के बाद कलेक्ट करने से पहले वहाँ पर रन 1 रन यहाँ पर संपूर्ण करते हुए इन 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 25 रन. The quarter century has been completed here. Ijo, the one boundary he got. इस वक्त इजाज फिर से बल्लेबाजी पर आते हुए इस बार शायद जोरदार अपील करते हुए और इट्स अ डेलिब्रेट और इस वक्त इशारा करते हुए और इसी के साथों साथ रन्स नहीं मिलेगा और भिंदी गेंद यहाँ पर रहते हुए अच्छी गेंद टीवी रिप्ले पर देखे जाए तो सीधी गेंद अलोंग द कारपेट के साथ सीधे रफ्तार भरी गेंद थे और बल्लेबाज को कोई मौका वहाँ पर नहीं देते हुए तीसरे गेंद लेकर तैयार. कुछ अजीब गरीब यहाँ पर नजर आते हुए जर्सी नंबर 17 ऑलवेज डेंजर फॉर अपोजिशन. अब इस वक्त दूसरी गेंद समाप्त करने के बाद तीसरी गेंद लेकर तैयार. इस बार उछालना चाहा अच्छी गेंद और इसी के साथों साथ फिर से डॉटेड डिलीवरी. सीधे गेंद को यहाँ पर बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद
कोई वहां पर मौका नहीं देते हुए सीधे अंतिम क्षण पर टिप्पा खा चुकी थी। बल्लेबाज वहां पर बल्ले को उठाए तो सीधे गेंद जाकर टकरा विकेट कीपर की दस्तों पर। अगला गेंद, अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद और इसी के साथों साथ इलेक्ट्रीफाइंग द स्टंप्स बिल से विकेट कीपर डूइंग द फैंटास्टिक जॉब कमरुद्दीन। अब इस वक्त गेंद कीपिंग करने वहाँ पर फील्ड करने के बाद तुरंत स्टंप्स को अपलोड करते हुए वहाँ पर बल्लेबाज अपने पैर को ज़्यादा तक आगे की ओर निकल चुके थे, यानी कि एक स्टेप इस वक्त आगे की ओर निकल चुके थे और फिर से लौट नहीं पाए। और इसी के साथों साथ विकेट यहाँ पर गिरने के बाद रनों की संख्या पर 25 रन और 4 विकेट के नुकसान पर ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾನಿ ಚುಮಿಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಿಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ನಾನಿ ಚುಮಿಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಎಸ್, अब 4 गेंद समाप्त करने के बाद रनों की संख्या पर स्थगित होते हुए 25 रन 25 ऑन द बॉल लॉस ऑफ 5 विकेट। और 5वीं गेंद इस बार अच्छी गेंद, ओ माय गुडनेस, अंतिम क्षण पर फॉलो ऑन थ्रो की निशा पर गेंद को कलेक्ट करना चाहा लेकिन बल्लेबाज इनको सामने आए तो गेंद निकल चुकी थी उस वक्त पर और गेंद सीधे शायद इनके पैरों के करीब वहां पर निकलते हुए गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। सीधे फॉलो ऑन थ्रो की निशा पर गेंद को एक्सपेंसिव ड्राइव करना चाहते थे और करने के बाद सिंगल्स के रूप पर एक और रन यहां पर बटोरते हुए बल्लेबाज की टीम पर। अब अंतिम गेंद यहाँ पर बाकी, लास्ट बॉल इज रिमाइनिंग। इस बार भी फिर से अच्छी गेंद, सीधे गेंद को चिप किया, गेंद इस वक्त सीधे वाइडी स्क्वायर लेग के निशान पर गेंद जाते हुए और इसी के साथ विकेट और एक और विकेट गिर चुका है। वन मोर विकेट इज बैक इनटू द बैलेंस एज अ फॉर्म ऑफ रन आउट। सीधे एक रन वहाँ पर संपूर्ण करे तो दूसरी अंतिम क्षण पर गेंद को चिप करते हुए गेंद डीप स्क्वायर लेग के निशान पर जा रहे थे और गेंद को इस वक्त तुरंत फील्ड करने के बाद थ्रो करे। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करने के बाद स्ट्राइकर की दिशा पर स्ट्राइकर एंड की दिशा पर वहाँ पर रन आउट करते हुए और इसी के साथों साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 6 गेंद यहाँ पर बाकी, 15 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाज इस वक्त किन गेंदबाजी के यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते देखना पड़ेगा। ज़्यादा तक मुजामिल वन ऑफ द कटर बॉलर और फिरोज भी एक कटर गेंदबाज भी है, लेकिन अब इस वक्त कुछ विभिन्न सोच इस वक्त करते हुए गेंदबाजी करने के लिए निज़ाम को इस वक्त बुलाए जाते हुए बुला चुका है और देखना पड़ेगा कि निज़ाम 6 गेंद सामना करने के बाद 6 गेंद इस वक्त गेंदबाजी पर करने के लिए तैयार टीम बॉस वॉरियर्स के लिए। अंतिम ओवर द 6 balls रिमैनिंग 15 हैव टू गेट। ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ the 6 balls remaining 15 have to get every go the last over the death over and match deciding over for the both side और 6 गेंद यहाँ पर बाकी, 15 रन चाहिए। पहला गेंद निज़ाम इस वक्त गेंदबाजी पर आते हुए सीधे गेंद के लिए और गेंद इस वक्त सुरक्षित क्षेत्ररक्षक के हाथों पर निकलते हुए और जाते हुए 1 रन यहाँ पर मिल चुका है। अब 5 गेंद 14 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 5 balls remaining 14 have to get every go the second ball। दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट इस वक्त गार्ड लेने के बाद इस बार ऑफ स्टंप से काफी दूर निकलते हुए गेंद और अंपायर का इशारा 1+1 रन द 2 रन एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्टेड रन इस वक्त एज अ फॉर्म ऑफ वाइड। इस वक्त 2 रन यहाँ पर मिलेगा, वाइड +1 रन। 5 balls remaining 12 have to get the badly required big shot। बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त जरूर चाहिए और इस मैच को जीतना है तो टीम ननबन पाने मंगलूर के लिए। the 5 balls remaining 12 have to get। yes इस बार अच्छी गेंद आखिरी मौके पर लाइन पर आते हैं सीधे गेंद और अंपायर इस वक्त निज़ाम के लिए एक वार्निंग वहाँ पर
शायद नहीं देते हुए अंतिम क्षण पर कुछ हद तक वहाँ पर इशारा नहीं करते हुए और इसी के साथों साथ बिंदी गेंद के साथ 4 balls remaining 12 have to get and now the calling for third umpire अब इस वक्त तृतीय अंपायर मदद मांगते हुए वाइड के लिए और देखे जाए तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर इशारा यहाँ पर करते हैं तृतीय अंपायर अब शायद बॉस वॉरियर्स की मालक जलील बॉस कुछ अंत तक यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं देखना पड़ेगा कि क्या मैच बॉस वॉरियर्स यहाँ पर जीते या ननबन पाने मंगलूर बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए जीते या नहीं देखना पड़ेगा and it's a wide call by the umpire और गेंद लाइन की बाहर की ओर निकलते हुए और टिप्पा खा चुकी थी और इसी के साथ साथ वाइड का इशारा यहाँ पर देते हुए इन वाइड के साथ रनों की संख्या पर एक और रन एक्स्ट्रा की तरफ से यहाँ पर मिलते हुए पिछली गेंद पर 3 रन एक्स्ट्रा की तरफ से यहाँ पर मिलते हुए 5 गेंद बाकी 11 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 5 balls remaining full toss 1 oh my goodness chasing from the fielder and oh it's a floppy game सीधे गेंद वहां पर इतना टाइमिंग्स है सीधे गेंद को वहां पर हाथ से छू सकती थी विकेट को वहां पर और कमरुद्दीन फिर से वहां पर गलत करे और इस बार ऐसे गलत यहां पर टीम नन बन के लिए एडवांटेज यहां पर हो सकती है सिंगल्स के बदौलत 3 रन शायद यहां पर मिलते हुए 3 on the board. Now they have to get 4 balls remaining. 8 have to get. The match is now in balance. मैच इस वक्त दोनों टीम की बराबरी पर जाते हुए 4 गेंद बाकी 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 50-50 एट द सिचुएशन और अगला गेंद लेकर तैयार निजाम इस बार अच्छी गेंद और इसी के साथों साथ विकेट गिर चुका है द सेलिब्रेशन इज बिगिन इन द डगआउट ऑफ अ टीम बॉस वॉरियर्स कुदरोली द 3 balls remaining 8 have to get and new batsman into the middle 3 balls remaining 8 have to get have to go once again bowling mark Mr. Nizam and not even collecting the properly and फिसल चुकी थी आगे की ओर निकलने के बाद गेंदबाज करने के बाद अब इस वक्त only 2 balls remaining 7 have to get the jersey number 07 now they have to get 7 the 1-6 for team Nanban Panemangalore. The one dotted delivery can boost for Boss Warriors Kudroli. And it's going in that deep, wideish, long on area. Collected the ball. The 1 ball 6 required. एक गेंद 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए पानेमंगलूर इस वक्त के भविष्य इस वक्त बल्लेबाज फारिस के हाथों पर और बॉस वॉरियर्स की भविष्य इस वक्त
निजाम के हाथों पर यहाँ पर दिखाई देता है। 6 हैव टू गेट रिमाइनिंग 1 डिलीवरी, एक गेंद यहाँ पर बाकी, 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और थोड़ी सी फिर से क्षेत्र रक्षक यहाँ पर बदलावन करने के बाद 6 रन मिड ऑफ की निशान पर, शॉर्ट थर्ड मैन की निशान पर बल्लेबाज इस वक्त क्षेत्र रक्षकों को बदलावन करते हुए। द 1 ball 6 required. Now the 1 bad hit required for Nanban Panemangalore. The 1 dotted delivery. The 1 boundary can save. 4 runs also okay for Boss Warriors Kudroli. Here we go. The 1 ball 6 required. And that's it. The team Boss Warriors Kudroli won the match. Congratulations, team Boss Warriors Kudroli. And all the best, team Nanban Panemangalore, for your future matches. And team Friends Kuttar won the toss and elect to field first. और इस वक्त खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई देते हुए, खुशी का चेहरा इस वक्त जलील बॉस टीम की मालक इस वक्त अपने सभी खिलाड़ियों के हाथ यहाँ पर मिलाते हुए। और इसी के साथ साथ टीम बॉस वॉरियर्स थ्रोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। अभिवादन, कंग्रेचुलेशन टीम बॉस वॉरियर्स कुद्रोली। And next match playing between Friends Kuttar taking against team Brothers Makyar.
Ball check. ಅಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುತ್ತಾರ್ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಿಲ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾದ್. ಆಟ ಚೆನ್ನಿನ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಿಲ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಿಲ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2. ಸನಿಲ್ ಪ್ರಥಮ ಹುದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಆರ್ ಅವರ ಉದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಸಿಹಾದ್ರ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಶಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನಿಗೆ ಪ್ರೇತಮ ಹುದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಸನಿಲ್ ರವರು ನೌಶಾದ್ ರವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮದ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಆದರೆ 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಸಾಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮದ ಓಡಾಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಸನಿಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ
ಒಂಟಿ ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಹುದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. So the first over completed here from Sunil, and it's very surprising seeing that Mahesh did not bowl that first over. He's taken the responsibility of bowling the second over. Maybe that from the far end, Mahesh he did not want to bowl from the far end, so he did not choose to bowl. So the play which is starting from the near end, from the commentary box end, Mahesh has taken up the responsibility of bowling the over number 2. He is one of the bowlers who has been very much unpredictable because he's got every variation in his arsenal. He can bowl the off cutter very quickly, and he has got a quick turning leg cutter as well. Most of the times he's using the leg cutters, and a slower one as well. Slower one, which is the main thing. Mahesh has been one of the most successful bowler this season. His slower ones have taken most of the wickets for him, and the field setup is perfectly placed for Naushad and Nawaz. Mahesh balls. Ball is racing far away from the line of stump. Wide is a signal from the main umpire Azmal Nandavara. So 1 into the account of extra. Scoreboard now completes double digit 10 on the board. 10 runs in total on the board. Mahesh Kuttar once again takes his time, needs to get back to his composure and bowl a good line in length. Oh, this is what I'm talking about. Perfect usage of the leg cutter. Drifting away from the right-handed batsman. And his line and lengths are the main reason why he is always keeping the batters struggling. And that variation. So 10 on the board for the loss of 1 wicket. Fast delivery. Now Shah couldn't manage to cut that one, and he knows that if he had managed to cut that one, there's a vacant area in that third man region inside the power play. He can just easily place the deliveries and he can get runs. He would need to find gaps in the fielding department to score runs. Naushad is one of the most experienced and clever batters from the side of Brothers Makyar. Wanted to sweep, reverse sweep the ball, couldn't manage to get any connection at all. And Mahesh is trying his level best to get the ball far away from the reach of the batsman and just inside that trim line. And on the other hand, wicketkeeper Santosh doing a great job. Santosh Kumar, one of the most experienced player in the side of Friends Kuttar. But whenever he's doing the job of wicket keeping or is in the field, it almost looks like he's a very youngster, very energetic in the field. And he absolutely loves the game of underarm cricket. And the passion is the only thing that keeps you going for a long time, even after going past 40 years. You can play cricket if you are very much passionate and fit. So that goes to the boundary. So 1 bounce, 2 bounce and into the fence. This is what Naushad is all about. It's brilliant. Look at that footwork. Getting it in the line of the delivery. Played it across. And the ball which is traveling into that backward deep square leg region for 4 runs. And scoreboard now gets up to 14 on the board. That's a good total on the board. Mahesh once again balls. Oh, what a stroke! Up and over. And 1 more boundary is into the scoreboard. Up and over. What a play. This is from Naushad. So Mahesh once again after conceding 2 consecutive boundaries. Naushad.
Oh, wanted to go across the line of the delivery. Couldn't manage to connect the ball. Dotted delivery. So Mahesh has conceded 9 runs in his 5 deliveries. Even after getting hit for 2 consecutive boundaries. Mahesh is making a great comeback with that dot ball. So the last ball. Oh, swept that one into the vacant deep third man area. Jagadish with a good collection. They're coming back for the second. Could be in trouble. Could be in trouble and not out at all in the mind of the square leg umpire. This is a suicidal attempt for running. Not at all required while you're striking the ball very well. Why you need to go for the risky runs? And now Shad blaming himself because he knows he has fallen short of it. It's not the problem of his partner Nawaz because that was clearly room for the second run. And now Shad is really disappointed with his own self. And now new batsman into the middle. Amir Ukuda, one more man, is also a powerful striker. Anything in his hitting range, he can dispatch it very easily out of the park. He is such a quality batsman. Mahesh conceded 10 runs in his over, which included 1 wide, 1 single, as well as 2 boundaries. So bowler Pradeep being introduced, the captain of the side, has taken the responsibility of bowling the over number 3 on his shoulders. From the far end, Pradeep. Some changes in the previous match. He had bowled from the near end, from the commentary box end, but now he's coming up from that far end. It looks like certainly different strategies. And if Brothers Makyar keep on collecting runs at this current run rate, which is standing at 9.50 exactly, and if they keep on collecting runs in that fashion, they could cross 50 runs, the projected score, quite easily. They could put 50 plus on the board if they go on this pace. Oh, nicely driven that one. Jagadish tried his very level best, almost reaching close to that ball, but that ball at the last moment lost its trajectory and landed right in front of Jagadish. So that they just got a single for that. And so Amir at the facing end, facing his very first delivery. Amir just pushes the ball into that deep extra cover where Nishan is present. He collects the ball perfectly. It certainly looks like Brothers Makyar are very much comfortable against the strong bowling lineup of Friends Kutar, even though they have lost wickets. One in the form of run out. That was an unfortunate dismissal of Naushad. Another one, the wicket of Shiab inside the power play. First power play over. Sanil managed to get him out. Directed required towards the non-strikers, and in the meantime Sanil collected the ball. Batsman had time to complete that risky run in between the wicket. So 3 balls and 3 singles of the Pradeep's first 3 deliveries. And you're watching Mahesh Kutar setting the field. He's been one leader who has led the team from the front with his outstanding bowling in every tournament, outstanding batting. He's a top-class leader, leading with an example. When your team's leader, the senior player, is doing a wonderful job, you're always going to have a lot of confidence. And the most successful captain of our team, Friends Kutar, Pradeep, he has also done a great job this season. Friends Kutar have become one of the most prominent teams under his great leadership this season. So the most successful captain Pradeep from the bowling mark. 4 deliveries completed, 5th time in his bowling mark. Struck that one into that deep square leg region. Well played there from Nawaz. So that single going to get scoreboard once again moving up to 24 for the loss of 2 wickets. Last ball which is remaining from Pradeep. So far he has been economical but not at all
posing any danger to the batters. They are very much comfortably playing. Oh, that's a fantastic delivery. That could have put batsmen in some jeopardy. They were looking a little bit uncomfortable because that had a lot of turn. So dotted delivery to end the over for the captain. So Captain Cool finishes the over with the 5 runs conceded. And now we are watching the young master in the bowling department, Adi, in the screen. And they have introduced Adi for the over. And the cameramans of Shine Sports, they exactly know that Adi is a man. He could be the next one to bowl because even in the previous match got 2 wickets. And you can watch the stats. Shine Sports doing a great job in giving all the bits and pieces of information along with the wonderful high quality live telecast through their broadcast camera. You're seeing the footage from the broadcast camera, one of the most high quality live telecast. Shine Sports covering all over the ground with their cameramans doing a wonderful job and their technician as well. Once again, for the first time, Adi in this match, ball which is far away from the length of stump, and straight away Tyagraj as well as Adi, they are both very confident, saying they want to review it to the third umpire that it might be a legal delivery. They are very confident looking at their body language, because Adi, I think, is tried to bowl that off cutter, but we are just going to wait for the third umpire. Vivek, the third umpire, Vivek Bolur, is going to review that decision, and the Shine Sports doing a wonderful job. Wide, which is a decision coming from the third umpire, because that ball is going straight over that wide line, and that's a good decision from on-field umpire Azmal. This is why Azmal is recently been one of the names in umpiring, especially in Ullal Cricket Association matches. We have seen him do a great job. Oh, this is a fantastic off-cutter to the right-handed Nawaz. Adi doing a great job bowling that off-cutter. For Adi, is a left-handed bowler. For him to bowl such a good off-cutter, he would need to bowl it like a leg cutter. Normally, is bowling leg cutter to the left-handed batsman with that action. But for the right-handed batsman, Nawaz is bowled it pretty well. Good execution. And Naveen, one of the finest pair of hands, one of the most quickest feeds in underarm cricket. He is one of the quickest runners and is a physical education teacher as well. So he needs to be very quick as well, because the fitness level is very high. Whenever he is running in between the wicket, whenever team friends Kutar are in a difficult situation, Naveen is always there to lift them from that difficult situation. They are just appealing for that white ball, and a review which is taken from batting team. Nawaz, who is standing at the non-strikers end, has taken the review for the white ball. Main umpire Azmal, he said that it's a legal delivery. He wasn't interested in saying that it's a white ball. He was very much satisfied with the delivery. And if you look at the replay in the Shine Sports, the umpire Vivek is reviewing that one. This is the second time a review for wide which has been taken. Friends Kuttar, they took a review when umpire Azmal said it's a wide, and then it was well kept from the third umpire, as it was a wide delivery. But here Brothers Makyar have taken a review. This is interesting. Very early stages of the game. It's just that over number 4 which is in progress. And the remaining, excluding this over, the remaining 2 overs are going to be very, very important for Brothers Makyar. And the dugout of Brothers Makyar, they are very much keenly watching, because they know this is a very important decision. So it's a fair delivery. Once again, main umpire Azmal. It's a proud moment whenever you are getting the distance right. He must be very happy with himself.
Oh, that ball going right into the block hole of the batsman. And is managed to get in a single between the wicket. So yes, both the teams have lost their review. Both the teams are get one review per innings, and both the teams have one unsuccessful review, so they have lost the review. If you are successful with your review, you can take one more review as well. But taking unsuccessful review means you have lost the review. When in the later overs of the first innings, the reviews are going to be very crucial. Adi once again takes his time. Long run up. Oh, what a delivery! I just want to see that in the replay. What a turn! Fantastic delivery. Look at that in the Shine Sports cameraman's view. He just turned it very much. Bowled it incoming one for the Nawaz. And at the last moment, ball just deviating far away. And he's just completely beaten with the turn. And the last 2 overs are remaining, and I would like to welcome Kabir Kudroli into the microphone. Last 2 overs are remaining, Kabir, and 27 on the board for the loss of 2 wickets. Brothers Makyar just lost 2 wickets, and I think what's a good score that they might be targeting, Kabir, because 27 already registered. They are having 2 well-settled batsmen in the middle, Amir and Nawaz. Will they be able to get anything near to 40? Over to Kabir. यस धन्यवाद रशीद और सभी दर्शकों को, सभी खिलाड़ियों के लिए फिर से welcome back all the spectators for watching the wonderful tournament having in the middle. The Friends Urwa proudly presenting the Friends Trophy 2K26 has been going on here after completion of the 4.2 delivery. The scorecard is reaching on exact 28 on the board and asking for the question, what is the total they have to might be maintain. I think the 40 have to maintain because the opposition team having the very good batting lineup like Mahesh Preetham, one of the stacked batter, and they have to get another minimum 40 runs in that first innings, and once again bowled very well. Back to the in there, fallen through. They stopped very fantastically, and the scorecard is stuck around 29 on the ball, loss of 2 wicket after completion of the third delivery. 3 गेंद समाप्त करने के बाद 29 रन पर 2 विकेट इस वक्त नुकसान पर अमीर यस अब और अगला गेंद लेकर था इस बार फिर से गेंद को ऑन साइड के निशान पर गेंद को घुमा दिया. वहां पर फील्डर काफ़ी तेज़ी के साथ थैगराज आई थिंक गेंद को इस वक्त तो फील्ड करते हुए, जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था. फील्ड करने के बाद 30 रन ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಡ್ಡಿಬಲ ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯಚುಮೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. और इस बार गेंद को चल दिया सीधे गेंद लगन वाइड लगन सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए और गेंद इस वक्त इट्स गॉन ऑन द वे. यस इट्स अ बिग गेंद सीमा रेखा से बाहर जा चुका है 6 रन के लिए और द फैंटास्टिकली
ट्राई बाय द फील्डर आई थिंक मिस्टर प्रीतम और इस वक्त गेंद को रुकावट करने के लिए कोशिश करते हुए इस बार फिर से गेंद को चलना चाहा चुके और शायद एक रन वहां पर संपूर्ण करे तो तेज गति के साथ त्यागराज गेंद को वहां पर फील्ड करे तो एक और रन यहां पर बटोरते हुए इस एक रन के साथ एक और रन यहां पर बटोरने के बाद रनों की संख्या पर रन इस वक्त धीरे धीरे से आगे बढ़ाते हुए ब्रदर्स मक्यार they are maintaining the runs and now they have got 37 run. I think over number only 5 completed. Now they have 6 ball remaining and at least they have to get another 6 runs and at least minimum they have to get because opposition having the very good batting lineup and they have Tyagraj Preetham this type of batsman they are having Sanil महेश इस वक्त विपक्षी टीम पर है और ज़्यादातर अब इस वक्त दोपहर के बाद हवा का साथ ले सकती है बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी करने के वक्त पर इस बार सीधे गेंद को घुमा दिया सीधे गेंद डीप स्क्वायर लेकिन निशा पर गेंद जब तक फील करे थोड़ी सी मिस फील्डिंग फायदा उठाते हुए 2 रन यहाँ पर संपूर्ण तीसरे रन की कोशिश पर अब इस वक्त तीसरे रन नहीं मिलेगा तेज गति के साथ काफी दूर थे डीप स्क्वायर लेके बाउंड्री लाइन के करीब करीब फील करने वाले खिलाड़ी कम से कम 6 या 7 कदम आगे बढ़ाते हैं सीधे गेंद को फील करे थोड़ी सी वाइड थ्रो थी ठीक तरीके से गेंद को क्लीन कनेक्शन करने के बाद भी ठीक थ्रो वहां पर थे तो रन आउट हो सकती थी लेकिन काफी वाइडिश थ्रो की वजह इस वक्त 2 रन संपूर्ण कर चुका है अगला गेंद इस बार गेंद को चल दिया गेंद इस वक्त टॉप जो शायद थोड़ी से इस वक्त अंपायर प्रीतम इस वक्त कुछ अजीब वगैरह वहां पर दिखाई देते हुए और आउट का इशारा यहाँ पर दे चुका है क्योंकि कैच तो ले चुकी थी ज़रूर और आखिरी मौके पर ऐसा फरमा रहा है कि मुझे ठीक तरीके से गेंद को देख नहीं पाए थे आखिरी मौके पर क्योंकि सूरज की किरणों इनके आंखें पर लग रहे थे और उसको यहाँ पर ठीक तरीके से गेंद को अंतिम क्षण पर जजमेंट के साथ एक अच्छी कैच वहाँ पर ले चुका है इन कैच के साथ बदौलत विकेट नंबर 3 इज बैक इनटू द पेविलियन ऐसा हो सकता है कि 4 गेंद अभी भी बाकी है कम से कम 4 रन वहाँ पर बने तो एक अच्छी स्कोर वहाँ पर हो सकती है गुड टोटल वहाँ पर हो सकती है और देखना पड़ेगा कि बचे हुए 4 गेंद पर रन कितना और बटोरते हैं बल्लेबाजी टीम देखना पड़ेगा ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಯಾಗಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ और अगला गेंद लेकर तैयार इस बार फिर से गेंद को चलना चाहा ओ व्हाट ए ब्रिलियंट फील्डिंग ओवर देयर सीधे गेंद को फील्ड करने के बाद तुरंत बैक टू द बॉलर की निशा पर गेंद आते हैं तो सीधे गेंद को अंडरआर्म थ्रो वहां पर किए थे और इस वक्त थ्रो डायरेक्ट स्टंप्स के ऊपर लगने के बाद विकेट यहां पर गिर चुका है खासकर इन दोनों टीम ने यूसीओ की अंडर पर यानी कि उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर पर भी ज़्यादा तक मैच खेले थे ब्रदर्स मक्यार और फ्रेंड्स कुतार और एक सशक्त बल्लेबाज और बॉलिंग लाइनअप के बीच यहाँ पर कड़ी संघर्षपूर्ण मैच यहाँ पर चलते हुए और रनों की संख्या पर 29 रन 39 on the board loss of 4 wicket after completion of the third delivery 3 balls they got only 2 runs they are going for a big hit I think this is a wrong decision by the batsman because they have to go for a sensible kick at least 3 balls 3 runs that means that will be a good total for team Brothers Makyar and another wicket is gone now they are having only 3 balls 39 on the board officially the well bowling performance by the bowler Mr. Adi sometime he bowl a leg cutter sometime he bowl off cutter is bar Rashid again directed one more wicket is back into the pavilion the hat-trick wicket for a team फ्रेंड्स कुत्तार इस वक्त 3 गेंद पर 3 विकेट यहां पर प्राप्त कर चुका है
पहला गेंद पर 2 रन लेने के बाद 3 गेंद इस वक्त 3 विकेट यहाँ पर होते हुए और इन 2 गेंद अब बाकी है। आधी छोटे कट के खिलाड़ी कम से कम अंडर 19 हो गए। उन्होंने अब इस वक्त छोटे उम्र पर मैंगलोर परिसर की दिग्गज टीम घोरियांग बॉयज पांडेश्वर पर खेलने वाले खिलाड़ी है और मेरे ख्याल से 2 साल तक इन्होंने पांडेश्वर पर खेलते हुए अपने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ बातचीत ज़्यादा तक करते हुए अपने सहायकों के साथ अब थोड़ी सी लिटिल बिट एक्सपीरियंस अब आ रही है। फ्रेंड्स गुत्तार की एक अग्र क्रमांक की खिलाड़ी माना जाता है, अग्र क्रमांक की गेंदबाज माना जाता है। आदि अपने 2 ओवर यानी कि पहला ओवर समाप्त करने के बाद 1.4 ओवर इस वक्त फेंकने के बाद भी सिर्फ 5 रन दे ओवर काबिल तारीफ करनी चाहिए और अंतिम 2 गेंद यहाँ पर बाकी। इस बार सीधे गेंद को चलना चाहा और इसी के साथ साथ बोल्ड एम क्लिंच में 1 मोर विकेट इज बैक इनटू द पेविलियन। द 4 बॉल 4 विकेट, 4 गेंद पर 4 विकेट इस वक्त गिर चुका है बिना रन यहाँ पर बनाते हुए। विकेट इस वक्त गिर रहे हैं और खासकर काबिल तारीफ इस वक्त आदि को भी करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने कोटा पर 5 गेंद 1.5 डिलीवरी फेंकने के बाद भी अपने विकेट इस वक्त 2 प्राप्त करे और 5 रन सिर्फ यहाँ पर दे चुका है। प्रीतम टीवी मॉनिटर पर इस वक्त दिखाई देते हुए द फास्टेस्ट ऑफ सेंचुरी इन द सौहार्द ट्रॉफी 2K26 देरलाकट्टा के ग्राउंड पर एक फास्टेस्ट ऑफ सेंचुरी किए थे प्रीतम ने। अब इस वक्त टीवी मॉनिटर पर दिखाई देते हुए और अंतिम गेंद इस वक्त बाकी और ब्रदर्स मक्यार के लिए पिछले ओवर इनके पक्ष पर जा रहे थे। अब इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार की पक्ष पर इस वक्त इस ओवर यहाँ पर जाते हुए अंतिम गेंद यहाँ पर बाकी और गेंदबाजी पर इस वक्त आदि तैयार। अंतिम गेंद आशिक इस बार रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेलना चाह आखिरी मौके पर गेंद इस वक्त सैयद बल्लेबाज की 22 का इशारा, कोई वहाँ पर संपर्क नहीं बल्लेबाज की बल्ले पर और 22 का इशारा पर रन से इस वक्त मिलते हैं एक्स्ट्रा की तरफ से और एक और रन के साथ रनों की संख्या पर 40 रन 40 इस टोटल एंड 41 रन इस वक्त चेजिंग टोटल फॉर टीम फ्रेंड्स कुत्तार के लिए एक 41 रन के लक्ष्य इस वक्त रख चुका है। देखना पड़ेगा कि इस लक्ष्य को किस तरीके से गेंदबाजी टीम डिफेंसिव करते हैं और इस लक्ष्य को किस तरीके से यहाँ पर पीछा करते हैं टीम फ्रेंड्स कुत्तार की बल्लेबाजियों। और इस वक्त माइन अंपायर टीवी मॉनिटर पर आते हुए अजमल नंदावरा एज ए क्रिकेटर प्लेइंग फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा और अब इस वक्त अंपायरिंग का कार्यभार निभाते हुए और स्कोर अंपायर मिस्टर प्रदीप कोट्टारी। ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜುನೈದ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ.
Yes, and the second innings is starting up here after completion of the first innings. The 41 is the chasing total for team फ्रेंच कुत्ता. शुरुआत का गेंद इस वक्त लेकर आशिक तैयार. इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर निकालते हुए वाइड का इशारा. आज का दिन सुबह का दिन आज का सवेर है. आशिक इन्होंने 2 ओवर फेंकने के बाद सिर्फ 9 रन दिए थे. इनमें से 2 विकेट प्राप्त कर चुके थे और ऐसा गेंदबाज यहाँ पर करनी चाहिए क्योंकि विपक्षी टीम पर एक भला बैटिंग लाइनअप है. अब इस वक्त इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बार अच्छी गेंद अंदर की ओर आते हुए आखिरी मौके पर ठहर लेते हुए सीधे गेंद अंदर की ओर आए और प्रीतम इस वक्त ऐसा सोचते होंगे कि गेंद बाहर की ओर टिपका जाएगा, लेकिन आखिरी मौके पर सीधे गेंद टिपा करने के बाद अंदर की ओर आने के बाद डॉटेड डिलीवरी यहाँ पर हो चुका है. अगला गेंद इस बार अच्छी गेंद सीधा गेंद it's gone on the way. Yes, it's a biggie. The distractive opener प्रीतम इस वक्त शायद कुछ टीम के अन्य खिलाड़ियों वहाँ पर माय गुडनेस कैच आउट भी हो सकती थी, लेकिन काफ़ी मुश्किल के साथ अपने संपूर्ण प्रयत्न इस वक्त करते हुए और इसी के साथ छक्के के साथ रनों की संख्या पर 7 रन बिना कोई विकेट के पर विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट. द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 7 ऑन द बॉल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड डिलीवरी. दूसरी गेंद पर एक बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है प्रीतम के बल्ले के और इस बार फिर से गेंद को चल दिया. गेंद इस वक्त सीधे लगॉफ सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. जल्द से जल्द यहाँ पर ये विकेट वहाँ पर लेने ही चाहिए क्योंकि इनफॉर्म प्लेयर इस ऋतु के एक दिग्गज बल्लेबाज और खासकर इस सीजन पर अच्छी फॉर्म पर खेलने वाले खिलाड़ी है और इतनी जल्द वहाँ पर इनकी विकेटें उखाड़नी चाहिए, यहाँ पर लेनी चाहिए और कितना जल्द हो सके. और इन 2 गेंद सामना करने के बाद 3 गेंद यहाँ पर संपूर्ण करने के बाद रनों की संख्या पर 13 रन. नाउ 4th बॉल इन प्रोग्रेस. इस बार फिर से गेंद को चल दिया. गेंद इस वक्त सीधे गेंद लगन 1 बाउंस ओवर द टॉप फॉर अ बाउंड्री. 4 रन बन चुका है. प्रीतम इज ऑन फायर. जिस तरीके से पिछली गेंद यानी कि पहले गेंद वाइड थे और इसके बाद भिंदी गेंद दूसरी गेंद पर छक्के लगन के हिसाब पर और चौथी गेंद सीधे गेंद तीसरी गेंद पर लगॉफ की निशा है और अब इस वक्त लगन 1 बाउंस ओवर द टॉप बाउंड्री के साथ प्रीतम बल्लेबाजी कर रहा है. इस बार बोल्ड एम क्लीन अप यू मिस इट आई हिट इट यहाँ पर कहते हैं आशिक ने. एक बढ़िया इनिंग्स के एक बढ़िया प्रहार करने वाले खिलाड़ी की विकेट इस वक्त गिरते हुए खासकर आरंभिक पावर प्ले ओवर ज़्यादा तक अच्छी तरह के यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाले सीधे यूज करने वाले खिलाड़ी. वन ऑफ द इनफॉर्म बैट्समैन इज बैक इनटू द पेविलियन. टीवी रिप्ले पर देखे जाए तो सीधे गेंद ऑफ कटर गेंद थी. परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी स्लोवर बन रखे थे, खासकर उतना तेज नहीं था कि गेंद बल्लेबाज अपने बल्ले को उठा दिए और सीधे जाकर टकराए. गिल्लिया इस वक्त उड़ने के बाद बेल्स इज नाउ कमिंग ऑफ और बाउंड आउट के जरिए विकेट इस वक्त गिर चुका है. इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर after completion of the ball number 5. Now the 1 ball is remaining. Now they got Pritham, but one thing is remaining. The Sunil, the sensible cricketer, ज़्यादा तक sensible cricket खेलने पर माहिर खिलाड़ी है. अब इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आ चुका है. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಬಲ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಬಲ ತಂಡದ ಜುನೈದ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. इस बार अच्छी गेंद और इसी के साथों साथ ओवर की समाप्त हो चुका है. The first over has been completed here. Now the scorecard is reaching on 17 on the board. They got a wicket, but they lost run. They given 17 run because he is the one informed batsman, distractive opener
the fastest 50 in this season. He got individual 16 runs, the facing of only 4 delivery, I think only 5 delivery, and in fact he got 2 6 and 1 4. The very good innings comes to an end after the completion of the over number 1. The scorecard is reaching on 17 on the board. Loss of 1 wicket. Now 30 balls remaining, 24 have to get. 30 गेंद अब बाकी है और 24 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और देखना पड़ेगा कि क्या बल्लेबाजी को इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर बांध कर रखने के लिए कोशिश करते हैं गेंदबाज, किन गेंदबाजी के यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते देखना पड़ेगा। अब गेंदबाज ऐसे ही गेंदबाजी करने चाहिए जिस तरीके से इकोनॉमिक डिलीवरी गेंदबाज ओवर इस वक्त साबित होनी चाहिए। इस मैच पर कम बैक करना है तो बाउंस बैक इस वक्त करने का मौका जरूर है, और किस तरीके से यहाँ पर बाउंस बैक करते कम बैक यहाँ पर करते देखना पड़ेगा। ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮುನ್ನಾ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಡೈ as soon as possible. Yes, the second over starting up in that यस फ्रेंड्स ट्रॉफी फ्लेक्स एनक्योर्स इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सीधे गेंद को ढकेल दिया वाइडिश लगन के निशान पर गेंद जाते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। कुछ अंत तक लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदबाजी को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने फील्डिंग वहाँ पर सजावट करते हैं तो बदलावन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा तक ऑन साइड पर खेलने वाले खिलाड़ी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को अब इस वक्त फिर से अब क्षेत्ररक्षकों को परिवर्तन के दौर पर इस वक्त बदलावन करने के बाद इस बार रिवर्सेबल, माय गॉडनेस, कैच भी हो सकती थी लेकिन रनआउट की खतरा हो सकती थी। ठीक तरीके से गेंद को कलेक्ट किया जाए तो थोड़ी सी स्लो कनेक्ट किए और शायद ऐसे सोचे होगी कि मिसफील्डिंग हो जाए तो 4 रन हो सकती है। अब इस वक्त इस बात को मद्देनजर रखने के बाद सीधे गेंद को सीधे कलेक्ट करे और बल्लेबाज 1 रन संपूर्ण कर चुका है इस बार। त्यागराज वन मोर बिग हिटर, ओह माय गॉडनेस, आई थिंक it's better to throw in the non-striker end region because batsman is too late in that going to the non-striker end, but the ball is throwing to the striker end region and collected well and waiting for the umpire decision because he given to asking for the third umpire. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದರ್ಶ ಬೇಗ ಫೆಬ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಮುಗಿಗೆ. And it's gone, out call by the umpire, and very good fielding. In fact, a short mid-wicket area, the well fielded by the fielder and throwing to that wicket keeper. Wicket keeper does not make any mistake. Fantastic job has been done, and it's gone. और अब इस वक्त 2 विकेट इस वक्त गिर चुका है 19 रन पर। ऐसा विकेट की इस वक्त सख्त ज़रूरत है, बिंदी गेंद की सख्त इस वक्त ज़रूरत है। मैच पर कमबैक करना है तो टीम ब्रदर्स मक्कियार के लिए, और खासकर गेंदबाजी के बारे में हम कहा जाए तो सफ़र मंजिला के लिए ज़्यादा तक कप्तान के द्वारा उन्होंने कई सारे इनाम पाए थे, और वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन फॉर सफ़र मंजिला प्लेयर मिस्टर मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी पर आगे बढ़ाते हुए मंगला देवी क्रिकेटर्स के लिए कई सारे मैच इन्होंने खेले थे। एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, एज ए बॉलर इन्होंने कई सारे इनाम पाए थे, और स्नेहा क्रिकेटर्स मालेमार के लिए भी कई सारे मैच इन्होंने खेले थे, और काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस इस वक्त अनुभव इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी पर मुन्ना फिर से तैयार गेंदबाजी पर आगे बढ़ाते हुए इस बार फिर से गेंद को वहाँ पर गेंद को अकेले ऑफसाइड के निशान पर गेंद इस वक्त शॉर्ट गली के निशान पर गेंद को
तुरंत खेलने के बाद एक रन संपूर्ण कर चुका है। दौड़कर एक रन यहाँ पर संपूर्ण करने के बाद रनों की संख्या पर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बॉल नंबर 4। 4 गेंद समाप्त करने के बाद द वन मोर बिग हिटर, द हार्ड हिटर बैट्समैन Thagraj. He played plenty of match and is having one more experience. Campaigner asking for the LBW is given. सीधे गेंद को वहाँ पर स्वीप करना चाहते थे, उछलना चाहा आखिरी मौके पर, और टीवी रिप्ले पर देखे जाए तो मुन्ना गेंदबाजी पर गेंदबाजी करते हुए सीधे गेंद को फडल स्वीप करना चाहा, गेंद जाकर पैड पर लगे और सीधे फ्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ विकेट वहां पर गिर चुका है। इन विकेट के साथ विकेट नंबर 3 इज बैक इनटू द पेविलियन। विकेट की सख्त जरूरत है अब इस वक्त, विकेट यहां पर खुलते हुए टीम फ्रेंड्स को तार के, और देखना पड़ेगा कि ऐसे भिंदी गेंद विकेट के साथ गेंदबाजी करे तो मैच पर वापस आती कर सकती है। और विकेट इस वक्त गिरने के बाद एज अ नंबर 5 बैट्समैन इनटू द मिडल आफिल इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आ रही है एज अ नंबर 5 बैट्समैन। देखना पड़ेगा कि क्या कुछ खास इस वक्त टीम फ्रेंड्स कुत्तार के लिए यहाँ पर करते या नहीं, देखना पड़ेगा क्योंकि गेंद वहाँ पर देखे जाए तो 25 गेंद 21 रन सिर्फ चाहिए, और संतुलन किए जाए तो 4 गेंद अभी भी एक्स्ट्रा है बल्लेबाजी के लिए, और रन इस वक्त आसानी के साथ यहाँ पर बना सकती है। द प्रेशर इज नॉट एट इन द बैट्समैन, बल्लेबाज को इस वक्त दबाव नहीं है, और इस वक्त अपने फ्री माइंडेड के साथ बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगला गेंद लेकर तैयार, इस बार सीधे गेंद को खेलना था, बोल्ड हिम, क्लीन स्वीप, द वन मोर विकेट इज बैक इनटू द पेविलियन। व्हाट ए बॉलिंग मिस्टर मुन्ना। सीधे गेंद अलोंग द कारपेट, जैसा अंग्रेज में कहते हैं बिल्कुल जमीन के सहारे, और ऑफ कटर गेंद थी। आखिरी मौके पर सीधे गेंद बल्लेबाज को वंचित करते हुए वहां पर स्टंप्स के ऊपर लगने के बाद गिल्लिया इस वक्त उड़ चुका है। द बेल्स इज कमिंग ऑफ, और इसी के साथ साथ विकेट यहां पर गिरते हुए इस विकेट के साथ चौथी विकेट, द 4th विकेट हैज बीन फॉलिंग डाउन हियर। द स्कोर कार्ड इज स्टैक्ड 20 ऑन द बोर्ड। ಅಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಜಲೀಲ್ ಬಾಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಯೋಜಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, after completion of the over number 2, the scorecard is reaching on 20 on the board. Now the back into the attack. Ashik has given 17 runs, but he got a wicket of Preetham. That is the advantage. And first ball trying to go for onside area stroke, but byes call by the umpire. And one run has been completed here. Now the experienced campaigner, the backbone of the team, Mahesh Kuttar in the middle, is having the capability to take a single as well as a double. Sensible cricket player, sounded well sounded batsman, technically well player in the middle, as a all-rounder of the successful all-rounder of Prince Kuttar in the middle. अब इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए दूसरी गेंद गेंदबाजी पर आशिक अब दूसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार अच्छी गेंद, सीधे गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधे गेंद को अकेले ढकेल दिया। ओ माय गुडनेस,
कदमों को इस्तेमाल करते हुए सीधे गेंद को ढकेल दिए थे एक्स्ट्रा कवर की निशान पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की निशान पर कोई फील्डर नहीं, जगह बनाते हुए काली क्षेत्र वहां पर ढूंढते हुए सीधे गेंद को अकेले और फील्डिंग करने के वक्त पर मिस फील्डिंग वहां पर होते हुए फायदा उठाने के बाद 2 रन संपूर्ण कर चुका है। फैंटास्टिक रनिंग अब इस वक्त कहना पड़ेगा। इस बार फिर से गेंद को ढकेल दिया, लग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, यहां पर 4 रन के लिए। शायद पिछली गेंद पर गेंद को एक्स्ट्रा कवर की निशान पर गेंद को खेलने के बाद जो खिलाड़ी लॉक ऑफ के करीब थे उनको एक्स्ट्रा कवर के साथ फील्ड करने के लिए वहां पर बुलाए, तो क्षेत्ररक्षक वहां पर नहीं थे लॉक ऑफ के इशारे पर, और इस वक्त खाली जगह ढूंढने में सफल। वेल सक्सेसफुल कैंपेनर फ्रॉम द साइड ऑफ फ्रेंड्स कुत्तार। इस वक्त महेश अपने कई सालों के एक्सपीरियंस के अनुभव इस वक्त इस्तेमाल करते हुए और खेल इस वक्त दिखाई दे रही है। 2 गेंद सबने करने के बाद 6 रन। द 27 on the ball, loss of 4 wicket. The 4th ball in progress. Ashik, the changing in the fielding setup. Now the one fielder bringing inside the circle from the deep third man to short third man, and going the mid off fielder going back to long off area. अब इस वक्त अगला गेंद इस बार शायद भल्ले की बेहतरीन किनारा वहां पर लग चुकी थी या नहीं, वहां पर नहीं, 22 का इशारा पर भल्ले इस वक्त पिच पर वहां पर सीधे मैदान पर लग चुकी थी, वहां पर पिच पर बल्ले वहां पर लग चुकी थी। सीधे गेंद विकेट कीपर को वंचित करने के बाद बल्लेबाज की बल्ले पर संपर्क नहीं और बैकअप के निशाने पर गेंद फील्ड होने के वक्त पर एक और रन यहां पर बट हो चुका है। ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಮರ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಮರ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ। और 22 का इशारा पर इस वक्त एक और रन यहाँ पर बटोरते हुए इन 1 रन के 7 रनों की संख्या पर कुल मिलाकर 28 रन, 28 ऑन द बोर्ड। आई थिंक महेश चेंजिंग द बैट बिकॉज जस्ट लिटिल बिट ऑफ changing. In fact, last ball he got by single run and 28 on the board. Loss of 4 wicket after completion of the 4th delivery. Just little bit injury for a bat, not a person, and the last 2 ball is remaining. अब इस बार सीधे गेंद को ढकेल दिया है लगन के निशाने, यहाँ पर लगन के करीब गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए और गेंद इस वक्त एक और रन बटोरने के बाद 29 रन, 29 on the board. Last 1 ball is remaining. The 3rd over in progress and now they are in right and top. अब इस वक्त सीधे गेंद को स्वीप किया, 1 रन वहां पर मिलेगा दूसरे रन की कोशिश पर और इसी के साथों साथ 2 रन यहां पर संपूर्ण कर चुका है। इन 2 रन के बदौलत टीम फ्रेंड्स कुत्तार now they are in the right and top. अब इस वक्त सही जगह पर दिखाई देते हुए फ्रेंड्स गुत्तार 31 रन 3 ओवर समाप्त करने के बाद 3 ओवर अभी भी बाकी है और देखना पड़ेगा कि अब बचे हुए 3 ओवर पर सिर्फ 10 रन और चाहिए मैच को, 10 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस मैच को यहाँ पर जीतना है तो बचे हुए 18 गेंद पर और 18 गेंद इस वक्त बाकी और रन इस वक्त चाहिए सिर्फ 11 रन, 10 रन। देखना पड़ेगा कि क्या कुछ जादूपन वहाँ पर गेंदबाजी करनी चाहिए, जिस तरीके से विकेट टेकिंग डिलीवरी और भिंदी गेंद और मैडन ओवर इस वक्त सख्त ज़रूरत है टीम ब्रदर्स मक्यार के लिए। और 18 गेंद 10 रन चाहिए इस बार। सीधे गेंद को स्टीयर किया, गेंद इस वक्त डीप कवर पॉइंट के निशान पर गेंद जाते तो बल्लेबाज के पास मौका था, 1 या 2 रन इस वक्त संपूर्ण करते हुए इन 2 रन के 7 रनों की संख्या पर आगे बढ़ चुका है। 33 रन, 33 ऑन द बॉल, लॉस ऑफ 4 विकेट। नाउ दे हैव टू गेट अनदर 8 रन्स
remaining 17 delivery. This is a easy chasing for Prince Kuttar, but cricket is always unpredictable game. We can't predict last runs. अंतिम रनों तक भी मैच आ सकती है और अंतिम गेंद तक मैच के बारे में कुछ कह नहीं सकते। और इस बार सीधे गेंद को ऑनसाइड की निशान पर घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद इस वक्त थोड़ी सी फील्ड होते हुए और इसी के साथ साथ बिंदी गेंद यहां पर रख चुका है। और 16 गेंद 8 रन चाहिए। इस बार गेंद को रिवर्सिव के जरिए गेंद को अकेले गेंद इस वक्त 1 bounce, 2 bounce and 3 bounce collected the fielder and बैट्समैन हैविंग द एम्पल टाइम टू कंप्लीट द सेकंड रन। 2 रन यहाँ पर संपूर्ण करते हुए इन 2 रन के साथ 15 गेंद यहाँ पर बाकी और 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 15 बॉल्स रिमेनिंग, 6 हैव टू गेट और इस बार टॉप एज एंड टेकन इन कैच के साथ। इन कैच आउट के साथ और अब इस बार सीधे गेंद को खेलना चाह टॉप एज एंड टेकन। The one more wicket is back into the pavilion. The प्रदीप कैप्टन इस वक्त विकेट यहाँ पर देते हैं, अपने विकेट इस वक्त ढकआउट यहाँ पर होते हुए और इसी के साथों साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इन विकेट की बदौलत रनों की संख्या पर 35 रन ऐसे यहाँ पर काम करनी चाहिए थे। तीसरी ओवर या दूसरी ओवर पर एक अच्छी काम मुन्ना ने किए और तीसरी ओवर पर फिर से रन्स देने के बाद चौथी ओवर पर इस वक्त विकेट इस वक्त लेते हुए खिलाड़ियों और इसी के साथों साथ रनों की संख्या पर 35 रन और विकेट इस वक्त गिर चुका है। 6 विकेट 13 गेंद 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 13 बॉल्स रिमेनिंग, 6 हैव टू गेट और देखना पड़ेगा कि क्या बल्लेबाज इस वक्त किस तरीके से बल्लेबाजी अपनाते हैं। और नए बल्लेबाज एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इन द मिडल संतोष इज एक्सपीरियंस कैंपेनर और इस वक्त अपने अनुभव के साथ बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजी यहाँ पर उतर चुका है। संतोष इस बार सीधे गेंद को ढकेल दिया है, लेकिन गेंद और बल्ले को कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्त हो चुका है, डॉटेड डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्त हो चुका है। एंड विकेट कीपर ऑल्सो मेंशनिंग दैट द फर्स्ट एड्ज हैज टेकन। अब इस वक्त बातचीत यहाँ पर होते हुए देखना पड़ेगा कि क्या भारा गेंद इस वक्त 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 12 बॉल्स रिमेनिंग, 6 हैव टू गेट। Yes, 12 balls remaining. Munna back into the attack. Given only 3 runs in that last over, and run out is not taken. In fact, misfielding and just गेंद को यहाँ पर थ्रो करने के बाद विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और इसी के साथ एक और रन यहाँ पर बनते हैं। ओवर थ्रो की वजह एक्स्ट्रा के सर यहाँ पर तरफ से एक और रन यहाँ पर मिल चुका है। इस 1 रन के साथ 11 गेंद यहाँ पर बाकी, 5 रन चाहिए, कम से कम 1 रन वहाँ पर दिए। 5 गेंद बल्लेबाज को इस वक्त बांध कर रखनी चाहिए।
देखना पड़ेगा कि क्या कमबैक इस वक्त करते मुन्ना टीम ब्रदर्स मक्यार के लिए। और बल्लेबाजी पर संतोष द मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपनर इस वक्त सीधे गेंद को ऑन साइड के लिए ऑन साइड की जगह यहाँ पर बनने की कोशिश पर रन इस वक्त नहीं मिलेगा। डॉटेड डिलीवरी। अब ऐसे बिंद गेंद यहाँ पर सख्त जरूरत है। 4 गेंद अब बाकी और प्रिंस कुत्तार के बल्लेबाज संतोष तैयार। अगला गेंद मुन्ना गेंदबाजी पर इस बार गेंद को वहां पर उछालने की जल्दबाजी पर सीधे बैक टू द बॉलर की निशान पर गेंद जाते हुए और इसी के साथ साथ 1 मोर डॉटेड डिलीवरी। 1 मोर डॉटेड डिलीवरी। बिंदी गेंद इस वक्त गिरते हुए 3 गेंद अब वहां पर इन बल्लेबाज के यहाँ पर बांध कर रखे तब मैच पर वापसी कर सकते हैं। बाउंस बैक इस वक्त करने की मौका। अगला गेंद रिवर्सिप टॉप एज और फील्डर काफी सही है दूर। अब 2 गेंद यहाँ पर बाकी। 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 8 बॉल्स रिमेनिंग 4 हैव टू गेट। The 8 balls remaining and played very well. In fact, into that deep, very long on area and collected very clearly. And batsman completed the single. The 7 balls remaining, 3 have to get. Yes, 7 balls remaining, 3 have to get. Once again, bowling mark, Mr. Munna. And once again played very well. A chance for the run out if it is direct hit. It might be and for non-striker and batsman, but a single has been completed here. Now the scorecard is reaching on 39 on the board and they have to get 2 runs. The 6 ball is remaining. Remember the match. Team फ्रेंड्स कॉलोनी प्रस्तुत वहाँ पर कर रहे थे। इसी हफ्ते में मैच चलते हुए एनम और यंग फ्रेंड्स के बीच 6 गेंद पर 3 रन की आवश्यकता थे। उस वक्त पर पहला गेंद पर सिंगल लेने के बाद 5 गेंद पर 2 रन वहां पर चाहिए थे। 3 गेंद 3 विकेट मैच जीत चुके थे एनम मैंगलोर ने। अब ऐसे याद दिलाना चाहता हूँ और इस मैच पर कमबैक करना है तो ऐसे गेंदबाजी की सख्त जरूरत है। बल्लेबाज इस वक्त संतोष स्ट्राइकर के और बल्लेबाजी यहाँ पर करेंगे। The 6 balls remaining, 2 have to get. The news for the center. Boss Warriors on the toss and elect to field first. And the next match playing between Boss Warriors playing against Reliance Katipalla. And the 6 balls remaining. इस बार ओ माय गुडनेस सीधे गेंद एक रन यहाँ पर मिलते हुए शायद जोरदार अपील वहाँ पर कर रहे थे और इसी के साथ साथ 1 रन यहाँ पर मिलने के बाद 5 गेंद यहाँ पर बाकी और रन इस वक्त चाहिए सिर्फ एकमात्र रन। टीम की दिग्गज खिलाड़ी महेश इस वक्त सीधे गेंद को ड्राइव किया एंड सीधे गेंद को इस वक्त कलात्मक शैली के साथ इस मैच को यहाँ पर टीम 1 रन यहाँ पर लेते हुए प्रिंस कुत्तार जीत चुका है। एंड कंग्रेचुलेशन टीम प्रिंस कुत्तार थ्रूइंग टू द क्वार्टर फाइनल एंड ऑल द बेस्ट ब्रदर्स मक्यार फॉर योर फ्यूचर मैचेस। एंड नेक्स्ट मैच, वन मोर इंटरेस्टिंग मैच हैज बीन कमिंग अप हियर। टीम Boss Warriors taking against Reliance Katipalla. News for the center. Team Boss Warriors on the toss and elect to field first. Next, the change in voice. इस वक्त यहाँ पर माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहता मेरे साथी कमेंटेटर इस वक्त माइक्रोफोन पर आ जाएगा। रशीद इस वक्त अगला मैच की शुरुआत से आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेगा। रशीद, आइए रशीद जी।
Hello, check. So thank you, Kabir. And it's a green signal to start the play here for the match between Reliance Katipala taking against team Boss Warriors Kudroli. Boss Warriors captain won the toss and elected to field first. And even in the previous match, Reliance Katipala, they lost the toss. They were forced on to bat first. They put a very good total on the board and they successfully defended it against their opposition. Here, same kind of situation. Oh, struck that one! I think, has he done just enough to save that one? Look at that one in the replay. Far away from his reach, and a young man, Sahal, is just tried his level best. And yes, the third umpire's help has been taken. Square leg umpire is not happy. He wants the decision to be seen from the third umpire, Azmal. Yes, Sahal has done just enough to save that couple of runs. I think more than the couple of runs, I think 4 runs certainly. Because yes, 5 runs he saved because they just took a single there. So yes, 5 runs are saved. That's a valuable save. This is why you need to have the best fielders outside the 30-yard circle. Oh, Yogesh played it towards the back to the bowler drive. Luckily survived. Riaz. 1 run on the board. Riaz once again takes his time, bowls. Oh, what a stroke! What a stroke! No protection at all there, vacant area, and it crosses the fence for 4 runs. Even the fielder tried his level best to stop that one, but that was something else. What a stroke! Massively struck that one, Yogesh. And I think some chat umpire is having with the striker Yogesh for running in the pitch. The first warning has already been issued for Yogesh. Yogesh, the new addition in the side of Reliance Katipala, but he's played a very good contribution even in the wicket keeping department. So dot ball, no room for any runs. 5 on the board, good comeback from Riaz. Once you are conceding runs, you need to make sure you bowl a good delivery. At least try and take the wicket or maybe get a dot ball. And that's what exactly Riaz is doing. With the dot ball, the pressure is off from the bowler's shoulders. Now just 2 deliveries are remaining in this over. 5 on the board. So 1 more dot ball, 1 more fantastic bowling. This is from Riaz. The experience shows in his bowling. Why he has represented many big teams in the past. This is the reason. Oh, what a delivery. What a delivery. Perfect example of experience which comes into play. After conceding a boundary from Yogesh, he has bowled 3 consecutive dot balls. This is fantastic bowling. This is the reason why he is the face over of the team. Inside the power play. Brilliant bowling from Riaz. So that's it from the first power play over 5 runs without any wicket lost here for team Reliance Katipala. So Sahal has been called on to bowl the over number 2. Sahal, the youngster, has been very impressive with his bowling. Even in the previous match, getting wickets as well inside the power play.
Oh, just struck that one. Couldn't quite manage to reach towards that, Riza. But quite nicely put a lot of power behind the strokes, dragging his bat away and got that one into that whitish long on region, getting a single into the scoreboard. Sahal. Once again, Sahal bowls. Brilliant delivery, brilliant bowling. This is from Sahal. So 6 runs on the board. Sahal with a good dot ball. Sahal once again takes his time. Very clean action. He's got a very neat release. In the air, Nizam takes it comfortably. No room for any errors. Is a safe pair of hands. Takes it comfortably just outside the 30-yard circle. And wicket number 1, which is departed for Reliance Katipala. So Azhar into the middle at number 3 position. Today he hasn't been much impressive with the bat, but he's one batsman for him. Anytime he could play a good innings. He can contribute very well with his bat at any time. And what a first over Riaz bowled. After being hit for a boundary, made a great comeback. 3 consecutive dot balls. Not an easy job at all. And if some youngsters are watching, they need to take from these kind of experienced bowlers. They need to learn how to get that dot balls. Once you have already conceded a maximum amount of runs, you need to try and stop getting the wickets. You need to bowl away from the batters and then get some couple of dot balls, which is going to put automatic pressure on the batters once you are bowling away from the wickets. And Sahal is doing a great job as well. After conceding a single, he has bowled 2 deliveries in which he got a wicket as well. So fantastic bowling. Oh, there's a big appeal. There's a big appeal, and main umpire Vivek says that you are right in front of me. I cannot see the wickets or the batsman. So this is going to be, I think, the first warning for the bowler for blocking the vision of the umpire. So yes, the first warning has been issued. And I think that one came from the bat. So yes, a run which is added into the scoreboard of the batsman as well. Sahal bowled it right into the bats of Azhar, but he couldn't manage to get the distance, even though it's the end which is favorable to the batters. But he straight away got a missed timing on that stroke, or else it would have cleared all the way straight away into the hands of the fielder there. It takes a catch comfortably. So 8 on the board for the loss of second wicket for Reliance Katipala. And it's surprising to see Rahil has been promoted in the batting order. Normally he's coming in the lower middle order. And against the team Nanban Panemangalore in his first match, Sahal, you can see the bowling figures he got in his 2-over spell. He got 2 wickets for 7 runs. And now he has already got 2 wickets for just 3 runs. In first 5 deliveries he has bowled. Still one more remaining in this power play for Reliance Katipala. They are having a very low total on the board. 8 for the loss of 2 wickets. It is looking quite a difficult situation for team Reliance Katipala. And I think that's the main reason why they are sending this man Rahil into the middle. He's a clean
striker is technically well sounded. He's got a very good defense. He can sweep the ball very well. And that is the exact reason why I think they have sent him into the middle. Junaid misses that one. But nonetheless, he has already done the damage in this over. Scoreboard is having 23 on the board. 23 runs are on the board. Last ball remaining. And it's going to be one more extra. And Riaz, I think those maximums definitely has put him under some pressure, because he knows he needs desperately finish the over with the dot balls, because he has already conceded 2 maximums in this over. Oh, they are interested in the second run, but no, at the last moment they are not at all going to take any risk. So over which is completed, over which comes to an end. Scoreboard having 25 for the loss of 3 wickets after the completion of 3 overs. Riaz, this turned out to be a very expensive over. In this over he conceded 16, and in 2 overs spell he conceded 21 run, just getting a single wicket. But they can still make a great comeback. They need to get the wickets. The early evening time in this UCG Urwa cricket ground, you can definitely chase 40 to 45 runs in 6 overs play. Inside 50 is a chaseable total as well for Boss Warriors Kudroli. But the only problem they would need is good bowling from this point onwards. They would need to restrict the opposition from getting big runs. So Muzammil from the bowling mark for team Boss Warriors Kudroli. Balls. Oh, there's a big appeal, and directed connected as well, but no danger, which poses to the wicket of Rahil. He reaches the danger and right in time. So scoreboard is having a total of 26. Oh, that's a good delivery. Leckett bowled away from the off stump line, outside the off stump line, and straight away just cuts it. Oh, there's a good delivery, but wicketkeeper made a mistake. And they are leaking runs in the form of byes. So 28 on the board. 3 deliveries have been completed from Muzammil, and so far has done a great bowling. And Rahil thinking to sweep the ball into that vacant deep point region, and also there is no deep third man in place, so he's trying to get boundary or maybe at least a couple of runs for that stroke, if he can place it perfectly. Rahil, very clever batsman, always tries manipulating the gaps in the fielding department. They're going for the run. Directed would have sent Junaid back into the pavilion, but quite nicely he makes it to the danger end. So scoreboard is having a total of 29. Last 1 ball remaining in this over. Oh, he just wanted to defend that one and get in a single, but couldn't manage to get any connection with the bat. It's a plain dot to finish off the over for Muzammil. He bowled a very good over.
only conceded 4 runs, in which one which came in the form of byes. So 3 runs, 2 which came in the form of byes. So yes, only 3 runs which is conceded from Muzammil. Good bowling from Muzammil. Now he has shifted the momentum a little bit towards team Boss Warriors Kudroli. If they want to make a great comeback, they need wickets more than economical overs, because 2 batters who are in the middle, they are very well settled. Both of them are known for their good running in between the wicket, and they play very less dotted deliveries. So even if you manage to get a couple of dot balls, they are going to score runs in any way, shape or form. And this is a good choice from the captain of Boss Warriors Kudroli, bringing Sahal into the bowling mark. 29 on the board for the loss of 3 wickets. And the scoreboard is having 29 for the loss of 3. And that means in the remaining 2 overs play, even if they get 12 runs, that's going to put them in a comfortable position for the second innings. But it's a chaseable total here, especially in the evening time. Oh, just swept the ball. They should come back for the second. And in fact, they are going for the second as well. Could be a close call, but throw which is coming off quite poorly, far away from the reach of the wicket keeper. He had to come in the way of the batsman Rahil, and they collide each other. I think both of them have hurt. Rahil has hurt his shoulder, and wicketkeeper has hurt his face. Oh, that collision definitely going to hurt for both of them. Rahil looks in trouble for his shoulder. On the other hand, Boss Warriors wicketkeeper looking in trouble, is holding his face right away. (31) for the loss of 3 wickets. Sahal with his very fast delivery straight away conceded a couple of runs. In his previous over, he just conceded 4 runs. It was a very good over from Sahal. Sahal continues. Back a field right in place. Collects it perfectly. It's going to be wide +1. 2 more runs added. Sahal, he needs to work one thing, that if he wants to perform in the big stages, that is to stop bowling the extras. Wide balls is a main huge problem for any youngsters, especially young bowlers. They are coming into the big stages, especially UCG Urwa. If you're bowling extras, it's going to get the match far away from your hands. And wide +4. This is huge mistake. 5 runs in the form of gift from Sahal to Reliance Katipala. Now they are going to be in a very commanding position in this game. 38 in the scoreboard. (38) in the scoreboard. Sahal balls. Oh, this is a good delivery. This is a line he just need to keep experimenting much with the line.
definitely costed him a plenty of extras. Wide plus boundary means huge extra. So Sahal once again takes the responsibility of bowling. That's a good delivery from Sahal. So yes, last 3 more balls are remaining. 2 consecutive dot balls. Finally some good comeback from the young man Sahal. Once again takes his time. Oh, again Spectra wide. This is a Spectra wide from Sahal. So that is going to get them 1 more run. So Sahal, he just need to finish off the over because bowling extras is going to keep the pressure mounting on his shoulders. So if he can manage to finish the over with those remaining 2 deliveries, it's going to be much more reliable for him. Played nicely into that deep cover region. They are easily coming for the second. Last 1 more remaining in this over. Final ball of the over remaining. 43 already for the loss of 3 wickets. And there's been a good partnership between Junaid and Rahil. Once that wicket was down, for the 3rd wicket was down, these 2 joined and they definitely made a good comeback. Oh, played in the air and taken very comfortably. And finally a good partnership comes to an end. They had joined at 16 runs while Reliance Katipal had lost 3 wickets for just 16. And once these 2 joined in the middle, they just kept putting pressure on the bowlers, making them commit mistakes, and that easily made sure that they had ample total on the board. 43 for the loss of 4 wickets after the completion of 5 overs. And who is going to bowl the last over? It certainly looks like Charan. So yes, bowled away from the batsman. Good bowling here from Charan. Charan bowled that fast delivery right into the area. And all 4 fours in the scoreboard. We can see that Nandan Kulashekar in the physical scoreboarding duty. 44 for the loss of 4 wickets. Oh, direct hit would have put some trouble for the batsman Rahil. So now scoreboard is having so yes, white +1, so 46 on the board. Oh, swept it. The fielder is chasing after it. Munna, will he be able to stop that one? In fact, the confirmation which is coming from the main umpire, he couldn't manage to stop that one. This is turning out to be a big scoring game for Team Reliance Katipala. They're putting a lot of pressure on the opposition. And Rahil, look at that, is very calm and composed in the batting department. Very focused. Oh, Munna, unlucky for him.
total mistiming. And timeout, which is taken place. That means one fielder need to be called inside the 30-yard circle for the rest of the 4 deliveries. Charan is going to ball. They are going to need, they should keep only 4 fielders. So that is going to get Team Reliance Katipala towards 51 runs on the board. 51 runs, so that's a massive total on the board. So the last 3 more remaining. Charan balls, brilliant delivery in the air, could be a chance for a catch, and Nizam comes underneath it and ball just deflected, and no room at all for more than 2. They tried for the third, but once seeing that the throw came right in time, they returned towards that danger and getting only 2 runs. Oh, Taufik! What a hit! This is massive! Big hit! Absolutely monstrous batting. This is from the little master Taufik. What a stroke. Have a look at that in the replay. Charan balled it right into that outside the off-stump line, and straight away Taufik advanced out of his crease and put it onto that deep mid-wicket, slightly into that cow corner region, and it's all the way over the fence for a huge maximum. Now that maximum takes a scoreboard moving up to 15-9 on the board. Last delivery of the first innings remaining. This is turning out to be a poor performance from the bowlers of Boss Warriors. Oh, once again Taufik swings it in the air, could be a catch. He has taken comfortably from the fielder just inside the 30-yard circle. That means 15-9 is what the score Reliance Katipala managed to get in the first innings, 6 overs play. And when the chase begins here from Boss Warriors Kudroli, they would require 60 runs as a target to chase down, which is not going to be easy against such a formidable bowling lineup of Reliance Katipala. They got some of the best bowlers in the side. It's not at all going to be easy. And the changes here in the commentary box in national language Hindi. I once again heartily welcome Kabir Kudroli into the microphone. Over to Kabir Kudroli after a short break. Kabir Kudroli, when the chase begins here from Boss Warriors Kudroli, will they be able to chase down the massive 60-run target set from the batters of Reliance Katipala?
Yes, welcome back all the spectators for watching the wonderful tournament having in the middle. Friends Urwa proudly presenting the Friends Trophy 2K26 and the pre-quarter final up in the air, and it's dropped. And the only one run conceded here. I'm not saying that Munna is not going for straight hit. He's a very good hitter of straight bat, but he's going for a slog sweep. It doesn't matter. And one run has been completed here. The first run for team Boss Warriors. 60 run is a chasing total for Boss Warriors Kudroli. इस बार सीधे गेंद कॉन्सर्ट के निशान पर जगह पर आने की कोशिश पर सीधे गेंद को खेलना चाह चुके डॉटेड डिलीवरी. And the very good hitter batsman and the two hitter batsmen in the middle, Ramesh, and the one more experienced campaigner in the side of Boss Warriors Kudroli. And the third ball, here we go, going for a big hit once again, and collected by the fielder, the captain of the side, Reliance Katipalla, Mr. Junaid. And collecting the ball, the scorecard is reaching on 2 on the board after completion of the third delivery. And here we go, the Munna, the straight hit batsman, and in the strike. इस बार सीधे गेंद को चल दिया, टॉप एज पर लग चुका है और इसी के साथों साथ विकेट यहाँ पर गिरते हुए. सीधे गेंद ऑन साइड के निशान पर आते हुए गेंद अब ज़्यादा तक बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर आते हुए और ब्लॉक कॉल के निशान पर गेंद को रख चुके थे और गेंद सीधे टॉप एज पर लगने के बाद शॉर्ट कवर के निशान पर कैच होते हुए और इसी के बदौलत विकेट यहाँ पर गिरते हुए. 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर द माइंड स्क्रीन वी कैन सी दैट jersey number 18 and now they're saying that as a number 3 batsman into the middle, Mr. Nizam, B-Boys Ullal की एक दिग्गज बल्लेबाज बढ़िया स्ट्रोक खेलने पर माहिर खिलाड़ी. And the Junaid, the successful captain for the season 2K25-26 and from the captain of Reliance Katipalla. In the mind screen we can see that and number 3 batsman निज़ाम इस वक्त बल्लेबाजी पर आते हुए और देखना पड़ेगा कि क्या निज़ाम कुछ खास यहाँ पर बॉस वॉरियर्स के लिए यहाँ पर बनाते. इस बार गेंद को चल लिया. ओ माय गॉडनेस, द ऑफ वाली स्ट्रोक इस वक्त खेल चुका है. सीधे गेंद को ओ स्ट्रोक वहाँ पर दम नहीं था कि बाउंड्री लाइन को बिल्कुल पार कर सके. ऑफ वाली स्ट्रोक यहाँ पर कहना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रोक ज़्यादा तक पावर जनरेट वहाँ पर नहीं कर पाए और ठीक तरीके से पावर वहाँ पर जनरेट कर रहे हैं तो गेंद बाउंड्री लाइन की बाहर 1 बाउंस वहाँ पर हो सकती थी. इस वक्त ऑफ वाली स्ट्रोक इस वक्त खेलने की वजह रन्स यहाँ पर रुकते हुए और विकेट इस वक्त प्राप्त हो चुका है. इन विकेट के साथ 2 गेंद 1 गेंद यहाँ पर बाकी इस ओवर की. रन इस वक्त बन चुका है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर. नाउ द नंबर 5 batsman into the middle, Sahal is on hat-trick now. राहुल गेंदबाजी पर हैट्रिक करने का मौका इस वक्त जरूर है. अंतिम गेंद लेकर तैयार. इस बार गेंद को उछालना चाहा चुके और विकेट कीपर शायद कैच आउट हो सकती थी क्योंकि एड्ज लग चुकी थी और आखिरी मौके पर गेंद बिंदी गेंद होते हुए पहला ओवर समाप्त करने के बाद 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर.
Yes, after completion of the over number 1, the scorecard is reaching on 2 on the board. Now the new bowler into the attack. The one more new bowler from the side of Reliance Katipalla. The fresh over begins up. The brother of Rahul, Mr. Rakshit, once into the attack. Oh my goodness, what a stroke that one. Switch comes into play. What a stroke that one. Reverse sweep played by the batsman Mr. Ramesh. जिस तरीके से तिरछे बल्ले इस वक्त इस्तेमाल करते हैं गेंद को रिवर्सिप के साथ गेंद को खेले और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर जा चुका है. डीप थर्ड सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए. एक अच्छी स्ट्रोक यहाँ पर रमीज के द्वारा और इन चौके के 7 रनों की संख्या पर 7 रन. ऐसा स्ट्रोक यहाँ पर बिल्कुल खेलनी चाहिए क्योंकि पावर प्ले इस वक्त इस्तेमाल फ़ायदा उठानी चाहिए क्योंकि लक्ष्य काफ़ी दूर है और इस लक्ष्य को यहाँ पर पीछा करना है तो रन इस वक्त ज़रूर बननी चाहिए पावर प्ले ओवर पर. और वाइड के साथ अगला गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन अंपायर का इशारा, भाइस का इशारा, सीधे गेंद नीचे की ओर आते हुए और बल्लेबाज अपने गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और इसी के साथों साथ एक और रन 22 की तरफ से यहाँ पर मिलेगा बल्लेबाजी टीम के लिए. इस एक रन के साथ यहाँ पर आगे बढ़ चुका है. अगला गेंद इस बार फुल टॉस वन एंड इट्स गोइंग टू बी वाइड कॉल बाय द अंपायर. सैयद गेंदबाजी जो है रक्षित अपने गति को इस वक्त बदलावन करते हुए यानी कि तेज गति के साथ गेंदबाजी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब इस वक्त वो तेज गति के साथ कोशिश करें तो असफल यहाँ पर होते हुए और शायद इस वक्त 2 गेंद यहाँ पर फेंकने के बाद सिर्फ 7 रन दे चुका है. थोड़ी सी स्लोवर वन यहाँ पर रखनी चाहिए थी इस बार अलॉन्ग द कारपेट जैसा अंग्रेज में कहते हैं, बिल्कुल जमीन के साथ है और बल्लेबाज को कोई मौका नहीं देते हुए और बल्लेबाज इस वक्त वंचित करने के बाद सीधे विकेट कीपर की दस्तानों पर जाकर टकराए. डॉटेड डिलीवरी. अगला गेंद इस बार फिर से ब्लाइंडेड स्ट्रोक और इसी के साथ साथ एक और भिंदी गेंद. सीधे लाइन वहाँ पर गेंद की गति नहीं देख पाए, लाइन पर नहीं आ पाए और बल्ले को सिर्फ यहाँ पर घुमाते हुए इस बार और शायद अंतिम क्षण पर लेग बाइस का इशारा देते हुए क्योंकि आखिरी मौके पर गेंद जो पैड पर शायद लग चुकी थी जरूर लेकिन शायद स्टंप्स पर नहीं लगने वाले गेंद थे और इस बार फिर से गेंद इस वक्त बल्लेबाज के पैर पर नहीं बैट पर वहां पर लग चुकी थी. और अंपायर इस वक्त कुछ अंत तक लेट यहाँ पर इशारा करते हुए 22 का इशारा और इन 22 के 7 रनों की संख्या पर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अब रन से इस वक्त बननी चाहिए 48 रन. They have to get remaining 24 delivery exact to 12.00 run rate. This could be just little bit difficult for batsman for team Boss Warriors team. अब देखना पड़ेगा कि इस दुस्थिति पर जिस तरीके से यहाँ पर किस तरह के यहाँ पर बल्लेबाजी अपनाते देखना पड़ेगा क्योंकि कम से कम 6 गेंद यानी कि 12 रन की आवश्यकता है प्रति ओवर पर. अब एक ओवर यहाँ पर एक छक्के या चौके इस वक्त ज़रूर बननी चाहिए और किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी अपनाते देखना पड़ेगा. कुदरोली परिसर के कई सारे प्रेक्षकों इस वक्त मैदान पर मौजूद है क्योंकि बॉस वॉरियर्स कुदरोली परिसर की टीम है. अब इस वक्त इस टीम के सपोर्टर्स के साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए इस मेगा श्रृंखला पर फ्रेंड्स उर्वा प्रस्तुत यहाँ पर करते हुए फ्रेंड्स ट्रॉफी 2K26. इस बार गेंद को वहाँ पर ड्राइव किया, एक्सपांसिव गेंद इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन की निशा पर और सिर्फ एकमात्र रन यहाँ पर मिलेगा. इस 1 रन के साथ शायद रन इस वक्त बढ़िया रन से यहाँ पर बननी होगी इस मैच पर आगे को निकलना है. तो अब दूसरी गेंद लेकर तैयार अनीश द वन मोर टैलेंटेड प्लेयर इस वक्त गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद बल्लेबाज की पैड पर लग चुका है. फिर से बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त खेलने की कोशिश पर पूरे इस वक्त कोशिश करते हुए
लेकिन गेंद बल्ले के कोई संपर्क नहीं। अगला गेंद इस बार स्लोवर वन, गेंद इस वक्त सीमा रेखा की बाहर जा चुका है। यस इट्स अ विकेट। अंतिम क्षण पर वहां पर परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी स्लोवर वन रखे थे, आखिरी मौके पर थोड़ी सी बल्ले को घुमाते हुए और सीधे गेंद को खेले। गेंद इस वक्त लगन सीमा रेखा से बाहर, अच्छे रन खेले। इस छक्के के बदौलत रन इस वक्त जंप हो चुका है और 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगला गेंद इस बार फिर से गेंद को चल दिया, टॉप एज विकेट कीपर और इस वक्त कैच को ले चुका है। पिछली गेंद पर छक्के वहां पर लगाने के बाद ऐसे सोचते होंगे कि अब एक और छक्के यहां पर लगाए तो मैच इस लक्ष्य के करीब करीब वहां पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद ज्यादा तक बाहर की ओर रखते हैं वो जानबूझकर इस वक्त ऐसे ही गेंदबाजी किए थे, क्योंकि पिछली गेंद पर विकेट के करीब, स्टंप्स के करीब गेंदबाजी की है, लेकिन अब इस वक्त थोड़ी सी बाहर की ओर गेंद इस वक्त करने के बाद गेंद की गति इस वक्त ठीक तरीके से रमीज देख नहीं पाए और बल्लेबाजी पर टॉप एज पर लगने के बाद विकेट इस वक्त गिरने के बाद एक और विकेट इस वक्त गिरते हुए 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब नंबर 5 खिलाड़ी आते हुए मुजामिल, द वन मोर हिटर बैट्समैन, पिछली मैच पर आते हुए पहले गेंद पर छक्के इन्होंने लगा चुका है और ऐसे इस वक्त खेलनी चाहिए। अगला गेंद इस बार उछाल दिया, सीधे गेंद डीप स्क्वायर के निशान पर 1 रन वहां पर मिलेगा। दूसरी रन की कोशिश पर यहां पर रन नहीं मिलेगा। तेज गति के साथ वो जाने जाता है कि अब गति इस वक्त दुस्थिति है और लय प्राप्त करना है तो राइट ट्रैक इस वक्त वापसाती करना है तो एक स्कोर इस वक्त बढ़िया स्कोर यहां पर करनी चाहिए। इस बार वेट 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 एंड गो। देखिए वहां पर अनीस जिस तरीके से परिवर्तन के तौर पर जानबूझकर स्लोवर रन इस वक्त रख चुके थे, आखिरी मौके पर लेग कटर इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट पर गेंद वहां पर उछालने के जल्दबाज थे वहां पर, लेकिन आखिरी मौके तक बल्लेबाज अपने गेंद के लाइन पर आते हुए सीधे गेंद को उछाल दिया। बड़ी इस लगान सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ आई थिंक बॉस वॉरियर्स कमबैक जरूर यहां पर हो चुका है। 27 रन 27 ऑन द बॉल, लॉस ऑफ 3 विकेट, एग्जैक्ट 9.00 रन रेट के साथ यहां पर आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से पिछली ओवर की शुरुआत से पहले 12.00 के रन रेट थे, अब इस वक्त 11.00 पर आ चुका है, यानी कि इन 2 छक्के मैच की नक्शा इस वक्त बदल चुका है और देखना पड़ेगा कि क्या मुजामिल ऐसे बल्लेबाजी करते हैं या साहल इस वक्त अपने बल्लेबाजी पर अपनाते हैं और आगे की ओर ऐसे खेल यहां पर खेले तो मैच पर इस लक्ष्य को यहां पर पीछा कर सकते हैं इन बॉस वॉरियर्स के खिलाड़ियों। अब साझेदारी की शक्ति इस वक्त जरूर है और देखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों बल्लेबाज अपने साझेदारी को अपनाते हुए इस मैच यहां पर जीतते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा। कुछ अंत तक रिस्ट्रिक्ट पावर प्ले यहां पर समाप्त करने के बाद अब 3 ओवर यानी कि 50% ऑफ द मैच इस वक्त इनिंग्स समाप्त हो चुका है। अब 18 गेंद बाकी है, लेकिन बात यहां पर हो रहा है कि श्रेयस की ओवर अभी भी बाकी है। खासकर इन्होंने पिछली 2 मैच पर 4 विकेटें, एक ही मैच पर 2 ओवर वहां पर फेंकने के बाद 4 विकेटें गंवाए और ऐसा गेंदबाजी है। कभी स्पिन मांत्रिक माना जाता है, मैजिशियन ऑफ रिलायंस का टिपल्ला इस वक्त गेंदबाजी पर आते हुए और अगला गेंद लेकर तैयार। 4थी ओवर के शुरुआत का गेंद श्रेयस लेकर तैयार। फुल टॉस 1 आई थिंक यस फार फ्रॉम द ऑफ साइड, वाइड प्लस 1 रन और इन एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत यहां पर हो चुका है। जिस तरीके से अनीस की ओवर पर रन्स आए थे, अब इस वक्त थोड़ी सी प्रेशर गेंदबाजी टीम से भी यहां पर नजर आते हुए। अगला गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूके डॉटेड डिलीवरी और बॉस वॉरियर्स के खिलाड़ियों के लिए छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम इस वक्त मसूद हीरो फ्रेंड्स के सदस्य इस वक्त रखते हुए इस बार ओ माय गुडनेस इस वक्त विकेट यहां पर गिर चुका। वाइड कॉल बाय द अंपायर, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जिस तरीके से इन्होंने
छक्के यहाँ पर लगा चुके थे और विकेट इस वक्त गिर चुका है साहल के एक खासकर बढ़िया स्ट्रोक खेलने पर माहिर खिलाड़ी है। अब इस वक्त इनकी विकेट यहाँ पर गिरने के बाद रनों की संख्या पर वाइड के साथ एक और रन से यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 30 रन और एक गेंद यहाँ पर समाप्त हो चुका है। समाप्त यहाँ पर दूसरी गेंद इस वक्त एक गेंद यहाँ पर समाप्त होते हुए It's a fair delivery call from the third umpire and yes, umpire reversing the decision. It's a fair delivery and run out taken in the non-striker end and it's gone. And one more talented. The 29 on the board. Once again, bowling mark. Oh my goodness, just inches missing the stumps. Otherwise, it could be a trouble for the batsman. It could be a bowled. I think it's gone. And it's a dotted delivery. And 3 ball completed. Only 2 runs conceded. But he is a man, the danger man for opposition. Muzammil going for a reverse hit. I think he's not cleared the fence. It's a top edge and it's taken clearly in the long off region and it's taken by the fielder. इस वक्त रिवर्सशिप के साथ गेंद को बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गेंद टॉप एज पर लगने के बाद गेंद इस वक्त क्या चोट होते हुए और विकेट इस वक्त गिरने के बाद रनों की संख्या पर 29 रन 29 on the board. Loss of 5 wicket after completion of the ball number 4. The fourth over in progress. The fourth over in progress. I think after completion of the over number 2, they are back in the match. 27 run. But in this over, only 2 run conceded here. Shreyas, one of the experienced campaigner for the Reliance Katipalla. अगला गेंद इस बार सीधे गेंद को उछालना चाहा चूके और गेंद इस वक्त भिंदी गेंद यहाँ पर रख चुका है। सन्नोट भंड माहौल इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ मैदान की चारों ओर दर्शकों की संख्या इस वक्त थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा बढ़ते हैं। इस बार गेंद को उछाल दिया सीधे गेंद पावर हिट खेला चाह लेकिन स्ट्रोक पर इस वक्त इतना दम नहीं था कि बाउंड्री लाइन तक पहुंच पाए और सीधे गेंद इस वक्त फील्डर के हाथों पर सुरक्षित जाते हुए टिप्पा करने के बाद सीधे गेंद को कलेक्ट कर चुका है। अब रन्स यहां पर बन चुका है 30 रन यानी कि 50% of the chasing total has been completed here. Now they have to get another 30 runs remaining 12 delivery. 12 गेंद 30 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और देखना पड़ेगा कि क्या इस ओवर पर कमबैक यहाँ पर बॉस वॉरियर्स के खिलाड़ी यहाँ पर कमबैक करते हैं या नहीं देखना पड़ेगा। द वन मोर चांस फॉर टीम बॉस वॉरियर्स कुदरली। दिस इज द पेनल्टीमेट ओवर। दिस इज द पेनल्टीमेट ओवर। अब इस वक्त पेनल्टीमेट ओवर की शुरुआत फ्रेंड्स ट्रॉफी फ्लेक्स की ओर से इस वक्त शुरुआत करते हुए 5वीं ओवर की पहला गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह सीधे गेंद को वहां पर खेले और गेंद इस वक्त बड़ी सीधे मिड विकेट के साथ यहाँ पर गेंद जाते हुए और इसी के साथों साथ 1 रन यहाँ पर दौड़कर प्राप्त किया है। अभी इज द वन मोर टैलेंटेड ऑलराउंडर फ्रॉम द साइड ऑफ बॉस वॉरियर्स कुदरोली। अब देखना पड़ेगा कि अगला गेंद इस बार फार फ्रॉम द लेग साइड, फार फ्रॉम द लेग साइड, वाइड कॉल बाय द अंपायर। इस वाइड के साथ रनों की संख्या फिर से आगे बढ़ते हुए अब 11 गेंद बाकी है और 28 इस वक्त रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 28 हैव टू गेट 11 balls remaining. Once again going for a big hit but not connected properly. Only single he has taken
एक रन यहाँ पर मिलेगा बल्लेबाजी के लिए और इस एक रन के साथ रन से इस वक्त आगे बढ़ चुका है 33 रन 33 on the board, loss of 5 wicket, 10 balls remaining, and once again going for a big hit, missed that completely, beaten by the face. The bowler knows that he wants to go for a big hit, and that's why he is making the ball far from the batsman. And once again, bowled him, cleans him up, you miss it, hit it, यहाँ पर कहते हैं वे सीधे गेंद पिछली गेंद पर ऑप्शन की और गेंद किए थे, गेंदबाज किए थे। अब इस वक्त सीधे मिडल स्टंप पर गेंद इस वक्त इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज इस वक्त वंचित होने के बाद जिस तरीके से बल्ले को वहां पर घुमाए है लेकिन टाइमिंग इस वक्त नहीं मिल चुका है, यानी कि गेंद ज्यादा तक नीचे की ओर अलॉन्ग द कारपेट जैसे अंग्रेज में कहते हैं बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुके थे और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए बल्लेबाज और इसी के साथ विकेट इस वक्त गिर चुका है। इस विकेट के साथ रनों की संख्या पर 33 रन, 6 विकेट, 8 गेंद बाकी, 27 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और इन 2 गेंद पर फलितांश प्रकट हो सकती है। बॉस वॉरियर्स के लिए कमबैक यहाँ पर जरूर हो सकती है, छक्के या चौके इस वक्त जरूर करनी चाहिए। इस बार सीधे गेंद को खेलना चाहा, आखिरी मौके पर गेंद इस वक्त शायद और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है स्ट्राइकर के इशारे पर। स्ट्राइकर इस वक्त विकेट वहाँ पर गिरते हुए अंपायर अपने उंगली उठाने से पहले अवेज सीधे पेविलियन की रास्ता यहाँ पर जाते हुए पेविलियन की ओर से यहाँ पर जा रहे थे और इसी के साथ एक और विकेट इस वक्त गिरते हुए और जिस तरीके से तीसरी ओवर पर मैच पर कमबैक किए थे टीम बॉस वॉरियर्स कुदरली और इसके बाद तुरंत श्रेयस को वहां पर बुलाया जुनैद। वो जाने जाता है कि अब श्रेयस की आने की वक्त है और उस वक्त पर श्रेयस कमबैक किया है रिलायंस का टिपल्ला के लिए और अब इस वक्त 5वीं ओवर पेनल्टीमेट ओवर और इस वक्त वो भी साबित यहाँ पर कर रहा है कि एक दिग्गज खिलाड़ी रिलायंस काटीपाला के लिए यहाँ पर अपनी गेंदबाजी पर कुछ इस वक्त खास यहाँ पर करते हुए अगला गेंद इस बार सीधे गेंद को खेलना चाह बोल्ड one more wicket is back into the pavilion. What a delivery, what a terrific delivery. क्विकर वन परिवर्तन के दौर पर धीमी गति के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी के लिए ऑफ कटर गेंद थी, सीधे की ओर आते हुए गेंद थी और देखिए वहां पर ऑफ स्टंप गिरते हुए यानी कि पहला स्टंप इस वक्त गिरते हुए और साइड स्टंप इस वक्त गिरने के बाद बोल्ड आउट के जरिए एक और विकेट इस वक्त गिर चुका है। इन विकेट के साथ रनों की संख्या पर 33, 8 विकेट यहाँ पर गिरते हुए 6 गेंद बाकी, 27 रन चाहिए मैच को जीतने के। 27 have to get remaining 6 delivery. Now he have to go for a big hit. 6 गेंद पर इस वक्त 27 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त जरूर लगनी चाहिए। पहला गेंद इस बार सीधे गेंद को खेलना चाहा और गेंद इस वक्त सिर्फ एकमात्र रन यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ रन इस वक्त एकमात्र नहीं बननी चाहिए, इस वक्त बढ़िया स्ट्रोक ज़रूर खेलने चाहिए थे। और अगला गेंद इस बार फिर से गेंद को रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेलना चाह चुके और अंपायर इस वक्त शायद 22 का इशारा यहाँ पर देते हुए इस 22 के साथ 4 balls remaining, 25 have to get. Once again going for a big hit, and beat that completely and miss that completely. Now the 3 balls remaining, 25 have to get without ball and no ball. They will victory and entering into the next round, that means क्वार्टर फाइनल राउंड। इस वक्त बिना वाइड के साथ वहां पर गेंदबाजी करे तो इस मैच पर जीतकर अपने अगले अंत यहां पर प्रवेश कर सकती है। और इस वक्त फिर से अगला गेंद इस बार उछाल दिया, सीधे गेंद जो टॉप एज पर लगते हुए दोनों खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और इसी के साथ सिर्फ एकमात्र रन यहां पर मिल चुका है। दैट्स इट। नाउ द 2 ball is remaining, 24
That means only the formality is remaining. औपचारिक इस वक्त सिर्फ बाकी और 2 गेंद इस वक्त बाकी होते हैं. इस बार सीधे गेंद को खेलना चाहा, आखिरी मौके पर अंदर की ओर आते हैं गेंद और बल्लेबाज को वंचित करने के बाद. Now the 1 ball is remaining. और अंतिम गेंद इस वक्त श्रेयस और इस बार फिर से गेंद डॉट होने के बाद. That's it. The end of the innings number 2 and the end of the match number 6. The quarter-final match and the pre-quarter-final match has been completed here. Now the congratulations for the team Reliance Katipala for the next round and winning this match and through to the next round. And all the best to team Boss Warriors Kudroli for participating this match, and all the best for your future matches. Thank you, Boss Warriors Kudroli team. And the next match playing between team, the one more high voltage match, Reliance Katipala taking against team Friends Kutar. इस मैच का यहाँ पर हमारा साथ इस मैच पर साथ जुड़ने वाले Yambi Sadasiva, the state vice president of JDS DK district, the JK Madegowda, the district president of JDS DK district, the president of JDS student union DK district, Nihal S Kortuguli, and Sadasiva Shetty, the quality group, Jeevan Pereira, the Francis Casey, Kiran Pai, the Lady Hill, the science sports event, Jeevan, the Umesh Karkera, the Vasant Pujari, JDS, Arun Prasad Maroli, Santosh Shetty, Suresh Chandra Shetty. And thank you for your contributing for this prestigious, the Friends Urwa proudly presenting the Friends Champions Trophy 2K26. And the next match will be having the very good match, and the very interesting match, the very high voltage match playing between Reliance Katipalla versus Friends Kutar. I like to call the change in the voice. Rashid will be joining for the upcoming commentary. Welcome, Mr. Rashid.
I request both the team captains, Reliance Katipalla captain and team Friends Kuttar captain, please immediately come to the mic point for the tossing ceremony. I request both the captains, please immediately report to the mic point for the tossing ceremony. ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ತಮಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಭವಗಳಿದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ BC ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇವತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕನಕದ ಸ್ಕೂಳೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇರುವ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಸೊ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜುನೈದ್. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹ್ಯಾವ್ won the toss against team Reliance Katipalla. ಸೊ ಎಸ್, ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್.
So yes, Mahesh Kuttar starting the proceedings here for team Friends Kuttar. After winning the toss, captain of Friends Kuttar, Pradeep, elected to field first. And first ball itself, that shows why the captain of Friends Kuttar elected to bowl first. And one more good addition we are seeing in the side of Friends Kuttar. We are seeing Taif. Oh, what a delivery! What a delivery! There's an excited appeal which is coming from the wicket keeper. Santosh Kumar, he knows that he has done a great job. I think he's very much confident that there could be a huge chance for the wicket. And we are seeing a split screen in action. And the third umpire, Pradeep Kottari, is going to review that decision. It's going to be a little bit close. It could be a close call. We are just waiting for the confirmation. And out! This is why the confidence shows. That man, lot of experience, and still is rocking as solid as his youth days in the wicket-keeping department. What a performance. That shows the confidence. And no one else, even the close-by fielder wasn't even appealing. Santosh Kumar single-handedly convinced the square leg umpire to go for the third umpire. And he's got a result for that. So the first wicket, big wicket of Riza is back into the pavilion. This is going to be a huge setback for Lions Katipalla. These two teams in the local pool, they are like rivals. Always, whenever these two teams come face to face, the matches have been very, very exciting. Especially in the Zaman Boys tournament. The ZBB trophy, which was presented here in this same UCG Urwa ground. These two teams faced each other. And Reliance Katipalla, they got a better of Friends Kuttar in that tournament. But here, Friends Kuttar, they have learned from their mistakes. They have become the champions of Namo Trophy in the previous tournaments. So they know exactly what is required, how to adapt to the conditions. And even in the 30 over Underarm World Cup, UFCA RR Prime Memorial Trophy, Friends Kuttar, they came till the semi-finals, defeating so many big names. So they are very much confident this season. Oh, what a delivery! What a delivery! This is a fantastic leg cutter, I want to tell you. It came like an off cutter to the left-handed Azhar. And Azhar certainly is thinking that he almost survived a very lucky escape for him, because ball which is going very close to the wicket. So far Mahesh, so he hasn't conceded a single run. This is turning out to be a fantastic proceedings. This is why always Mahesh needs to open the bowling department for Friends Kuttar. He is such a very effective power play bowler, always getting the wickets with the new ball. Oh, close throw from Nishan. Good fielding, absolutely good fielding. Nothing mistake from the fielders. You can look at that in the replay as well. And this is a very good technology used from the Shine Sports technicians using that split screen. You can see that every different angle as well in the same time, and you can see that perfectly. Mahesh, the throw was pitching right in front of him. That's the main reason why he couldn't manage to collect that ball perfectly. So once again Mahesh Kuttar to Yogesh. Oh, that is a slider, and Mahesh himself admitting that it's a ball which is going to be a wide. And if you closely follow the test cricket back in the 2000 era, we had in the international test cricket one of the most greatest leg spinner, Shane Warne, using that slider, almost the ball which is sliding away from the batters. And that's the kind of delivery Mahesh was trying to bowl in that previous occasion. But that drifted far away from the tram line and wide was called there. But here Mahesh makes a good comeback, just conceding a single. And scoreboard which is standing at 3 on the board. It looks like in this evening time, the dogs are also enjoying the game of cricket. They absolutely loves this UCG Urwa cricket ground. And it's always good to see as well the cricketers never disturbing the dogs in the field. They're always very much minding their own business, and everyone doing a wonderful job in the field. Even the umpires in this evening time. We have got two fantastic umpires, on-field umpires for this last match of this day.
number 2 of Friends Trophy 2026. And Mahesh bowled a brilliant over, finishing the over with just 4 runs conceded, which included 1 extra as well, 3 runs, which is taken from the batters, and 1 gifted run in the form of wide from Mahesh, and a total 4 runs on the board after the completion of first power play over. So for the loss of 1 big wicket, and that wicket is absolutely valuable one, because Riza, even in the previous match, he showcased some power hitting. He's got that technique right. He can clear the fence. So getting his wicket is definitely very important for team Friends Kuttar. But Lions Katipala, they're a formidable side. They got some quality batters still remaining. Taufik in the previous match, as well as Junaid, as well as Rahil. They all performed very well. It's just that Azhar is the one who is not at all performing up to the mark, because he is such a key batsman in that top order batting department. He is a one man who is always contributing. He can play big shots quite easily. The left-handed Azhar definitely needs to perform up to the mark if his team want to enter into the semi-finals. Already team SDC Jaipur, they have secured their position yesterday in the local pool A division, and we are seeing the new addition in the side of Friends Kuttar, Taifulal, brother of Bashit in the side. He's been called out to play in this Friends Kuttar side, and if he's there in the side, it is a good addition, because he's quite a good all-rounder. He can bowl as well, he can bat as well in the top order. So that's a very good addition for team Friends Kuttar. Oh, played in the air, could be taken. Fielder underneath it, takes it comfortably. I think the man who took the catch, Gunakar. Yes, it's Gunakar, the man. And one innings which I can remember, Gunakar hitting that 6 against SDC Jaipur in Namo Trophy. I think when they defeated opposition team, courtesy of that maximum, and Mahesh Kuttar was adjourned as the man of the match, but for that maximum, he just handed over that man of the match to Gunakar. He's such a quality batsman, Gunakar, and a good pair of hands outside the 30-yard circle. So 1.3 overs proceedings are complete. Sunil from the far end is always very, very effective bowler. So 3 balls which is completed, and we are seeing Azmal doing a great job. Umpiring is one of the most toughest job, especially more than the overarm cricket. Underarm cricket is really, really difficult for the umpires. You have to be very much alert, and also it's physically very straining job for the umpires. It's not at all easy thing. Good collection there from Santosh. No mistakes at all. Santosh Kumar straight away collects the ball and tries for the stumping, but Taufik's back foot was landed absolutely in place without even moving away. So now 6 on the board for the loss of 2 wickets. This is a similar kind of situation even in the previous match. For the 8 runs, Reliance Katipalla had lost 2 wickets, but then what a comeback their middle order batsmen made, especially Junaid coming in, and from the very get-go, he is getting a maximum and turning whole momentum in favor of Reliance Katipalla. Oh, that's a good stroke into the deep extra cover. Pritham going a long way from the 30-yard circle and managed to collect that one finally. And the wicketkeeper interested, but the square leg umpire says batsman is reached quite safe to his mark. Vivek challenge bowler, the main umpire, square leg umpire, the main umpire. We got Azmal Nandawara. He's a fantastic player as well.
So yes, 8 on the board. 8 for the loss of 2 wickets. Oh, directly required. Nishan misses the Nishana here. Definitely, if it would have been a direct hit, I think there was an opportunity to get one more wicket. Nishan, the man is very quick inside the 30-yard circle. You need to be very careful if you play the stroke towards Nishan. You need to be very, very careful because that man is very quick in his fielding. He doesn't miss the target. Oh, Asmal, look at that one. Very, very close for the main umpire, Asmal. He almost dodged that one. Coming towards him. Oh, misses the target very closely. That is definitely lucky escape for Asmal. That would have caused some danger for Asmal. But luckily he survives there. So 9 on the board for the loss of 2 wickets after the completion of 2 overs. This is the exact situation Team Reliance Katipalla were in the previous match. Now the field setup is very interesting. And we are seeing the man behind the success of this great cricket tournament, Vinci, as well as the 2 guests, Umesh Karkera and Kanakadas JDS as well. Oh, stuck that one into that onside of the wicket. Tawfiq is interested in coming back for the second. But Yogesh, he knows that it's not a wise option. Because losing wickets, even in the previous match, Tawfiq, due to Tawfiq's misunderstanding, there was 2 run-outs which had cost, not in the previous match, I think in the first round match. In that match, Tawfiq made some mistakes and Junaid got out, and then Rahil as well. They performed very well in the previous match. Oh, in the air, Gunakar takes it comfortably. Easy catch practice for Gunakar. Not at all power behind the strokes, just guiding the ball into the onside of the wicket. You can look at that. The ball is off cutter, far away from the reach of the right-handed batsman Yogesh. He just pulls it towards the onside of the wicket, and the ball straight away landed in the safe hands of Gunakar in the mid-wicket region. And we are seeing physical scoreboarding duty, Dhanraj sir as well. He did a great job in the committee department as well. And for the cricket lovers in this same lots of underarm cricket, there's going to be one more good cricket tournament coming up, which is proudly presented by Smart Alliance Real Estate Underarm Day and Night Floodlight Cricket Tournament, Shantinagara Champions League 2026. Kaur 8 local pool teams and Bajpay 8 local pool teams, as well as with the entry prize of 10,000 with a cash prize of 60,000 for the winners, as well as 40,000 for the runners as well. This is a wonderful cricket tournament coming up. Oh, in the meantime, coming back to the game. Oh, direct it. We are just waiting for the square leg umpire's decision, and he's referred it to Pradeep Kottari, the TV umpire. And as I was mentioning, the dates for this wonderful cricket tournament which is coming up in this same venue, Shantinagara Champions League 2026, at March 30 and 31 and on April 1. 3 days of cricketing carnival in this Urwa cricket ground, the Lords of Underarm Cricket. This season, so many good cricketing tournaments. 8 local pool teams from Kaur region, as well as 8 teams from Bajpay local pool as well. So this is a good cricket tournament, and heartily welcome to all the cricket lovers to the ground for this wonderful cricket tournament. Also, it's going to be live telecasted as well. So not out, which is the signal coming from the third umpire. So very close call. Luckily, batsman survives. Rahil, the man. Rahil and Tawfiq are going to be key for Team Reliance Katipalla. They're in a difficult situation after losing that 3rd wicket. Oh, that's a good leg cutter delivery, bowled right outside the off-stump line. And Tyagraj, the man is not at all having a good day in the fielding department. Is losing his balance all the time. And you can look at the Friends Kuttar team. They're always fired up. Whenever someone makes a mistake, everyone is fired up. And that's the spirit required. Because then only the fielders are going to be very attentive. They're going to be having a lot of more match awareness.
But nonetheless, they managed to get that wicket in the striker's end. And Rahil is back into the pavilion. So yes, they got 2 runs added, but at the last moment, he just left the stumps quite early, and Rahil got out in the form of run out. So second wicket which is falling, one in the form of catch out, and we are seeing man in form, in his golden form, Pritham Najat Ullal, one of the most destructive batters at the present time. The kind of innings he played, if you want to see what this man can do to the opposition bowling lineup, you just need to watch a semi-final match between team Najatullal and Lucky Star Rantadka in the Savarth Trophy. In the meantime, bowled out. Adi strikes here with the wicket. Tawfiq is back into the pavilion now. This is a big blow. Reliance Katipala, they are looking in a deep troublesome situation. But the match is not at all over. They are having a good batter still in the mix-up. Anish into the middle. Anish, the man walking into the middle. Oh, just swept the ball. What a play. This is intelligent cricket, I want to tell you. But they should have converted that stroke into 2. But a quick fielding from Nishan. Always is very much quick in collecting the deliveries. And that kind of fielding always saves runs for the team. And also the bowlers are going to be much more confident. Whenever the fielders are giving wonderful support, the bowlers are much more confident, and they're going to really bowl well. And friends Kuttar, they're having a lot of difficulty choosing who is going to bowl the next over. And I think finally, after a short recess, they took a decision of giving Taif the bowling responsibilities of the over number 4. It's a good decision from friends Kuttar, because Taif in this condition is a quality bowler. In these conditions is much more effective than the later overs, because he can bowl according to the situation. He's got a cutters as well as he's got a straight deliveries as well. He can bowl quickly. He can bowl along the carpet. He can bowl one top as well. A lot of variations with this man. And his brother, elder brother, is the captain of Torpedoes Khana, Bashit. This is the younger brother of Bashit Ullal, Taif Ullal in action. Balls, brilliant delivery. One top which is used from Taif. And this is what exactly the reason why friends Kuttar, they decided to give the bowling to Taif, because the batters are playing safe strokes. They know that losing the wicket is going to put them in trouble. Junaid and Anish, they are playing a responsible innings. 14 in the board. 5 wickets are already back. They are still having 17 deliveries remaining in this first innings. Taif making some changes in the fielding department. Junaid, that's the facing end. Oh, played in the air. Oh my goodness, that was landed in the vacant area. Naveen, one of the fastest legs in the field. Even though he's one of the senior cricketers in the field, but still is one of the most fastest cricketer. Is a physical education teacher as well. So the fitness level is quite high. Oh, just struck the ball into that short point region. The captain of friends Kuttar, Pradeep, collects the ball perfectly.
16 runs on the board for the loss of 5 wickets. Oh, just played off the toes. Ball which is going into that mid-wicket region. Pritham collects it perfectly. Oh, throw which is coming right into the hands of wicket-keeper Santosh. He couldn't manage to collect that one because difficult collection for the wicket-keeper. Whenever the throw is coming very flat, wicket-keepers have a very difficult job. If wicket-keeper Santosh had collected the throw, you can clearly see it in the replay. Junaid was no way close to the picture at all. It could have been an easy run out, but opportunity missed. Difficult opportunity. You cannot say that it's a mistake. It's an opportunity which is missed. Unfortunate for friends Kuttar. Junaid, he could be very dangerous in the later overs. He can strike the ball very well. He can play according to the situation. Anish as well is done the job very well. The responsibility that was given to him from the team Reliance Katipalla to rotate the strikes, to get the singles, not to play the dot deliveries, and he has done that perfectly. You can see that he's batting on 3 after facing 3 deliveries, and that's what exactly required here for team Reliance Katipalla. And one extra, Taif bowling that extra, definitely not a good choice from Taif. At this situation, no need to panic at all, because the bowling team, friends Kuttar, they are in the control. So Taif, he need not experiment with the line and length of the deliveries. He just need to follow the basics. And this is a good bowling from Taif. And just 1 run which is completed. Scoreboard is having 21 runs after the completion of 4 overs play. So this is 6 overs per side. So 2 more overs are still remaining. So 2 more overs are still remaining. 21 on the board for the loss of 5 wickets. So Adi bowls, brilliant delivery ball which is going down the leg side, and they are giving that bias run. Sunil couldn't manage to collect the ball right in time. He should have created an opportunity for the run out, but the non-striker Junaid is very quick in leaving that non-striker's end. That shows the presence of the mind the batter Junaid has. And always I'm noticing his batting grip. It's very unique. The way he holds the bat with his index finger down the top end of the bat, which almost gives him that hard swing which can direct the ball very quickly. And you're seeing the dogs also enjoying the weather condition here at this Lords of Underarm Cricket UCG Urwa. Oh, ball which is racing down the legs offside, and wicketkeeper has done the job perfectly. This time around, Sanil has done his job perfectly. Anis couldn't manage to keep that same presence of mind that was shown from Junaid in the previous delivery. He was quite late in leaving that non-striker's end. Junaid was very quick in the previous occasion. That's the reason why Sanil panicked. But this time Sanil doesn't panic. He collects it perfectly, and throw collected rightly from the wicketkeeper Santosh Kumar as well. And we are seeing Gautam Bandi, one of the most big supporter, as well as we are seeing the owner of Young Friends Urwa, one of the pillars, one of the backbones of Young Friends Urwa, Tilak Guru, in the screen as well. And these two, hearty welcome to these two gentlemen to this prestigious Friends Trophy 2026. Tilak Guru as well as Gautam Bandi is shining with that very unique shirt, very colorful shirt. Yes, and he's got a lot of huge fans. Everyone here in the commentary box is definitely cheering for that man as well.
So Rahul sent into the middle at number 8 position for Team Reliance Katipalla. This man, he can bat very well. He's got that cheeky batting style. He can... oh, what a delivery! What a cutter! He wasn't expecting that one. He had freshly entered into the middle. What a delivery! Almost that ball had a double pitch, and once you are having that two pitches, it's very, very difficult. Look at the second pitch, completely deceived him. And also third pitch before hitting the wicket. So fantastic bowling. This is from Adi. So look at that in the replay. The split screen perfectly shows it here in the Shine Sports live telecasting. They're having a lot of new technologies implemented. Shine Sports, one of the few organizations in the live telecasting department who are always experimenting and bringing something new to the table of live telecasting. After the live telecasting started, I think Underarm Cricket has reached a new goal. Oh, that is definitely not going to be stopped. Sunil couldn't manage to stop the ball. Ball straight away hits the fence. I think it came off the bat. So the toe edge of the bat, and straight away that nick of the bat carries the ball into that vacant third man region. Even though Sunil was standing behind the wicketkeeper at that slip position, but couldn't manage to stop it. Last 3 more remaining. 27 on the board. 27 runs on the board. And this is a good job from the captain of Reliance Katipalla. Even the friends Kuttar, they did not notice that the physical scoreboarding was having a 29 on the board. And straight away Junaid with a good sportsman spirit saying that something wrong with the scoreboard. And so now scoreboard is having 28 runs. So Adi once again takes his time. The time this young man was seen first time in the big stages was in the Swaraj Maidan, Moodabidri. And one of our co-commentator, one of my good friends, mentor as well, Shamir Mallar, was commentating. And he described that this man one day is going to be a future star. But not a huge time has taken part. And he has become one of the most dangerous bowlers for the batters. Any top batters, they are going to struggle against him. And we have seen so many hard-hitting batters, so many technically well-sounded batters struggle against Adi. And that's a long vision Shamir Mallar had shown and seen, and he had predicted, and that has come right. Oh, Mahesh Kuttar making the misfielding. That should cost them, I think, couple of more runs. Oh, Junaid can't come back for the second Shreyas. He was tired a lot. I think in the form of leg by. 3 runs are added into the scoreboard. A silly small mistake cost 2 more extra runs. Adi collected that throw and straight away threw it towards the wicket. He couldn't manage to find the target, and Mahesh Kuttar failed to gather that right in time. And the ball which is misses the hand. Make sure that Reliance got 3 more runs. These are valuable runs for Reliance Katipalla, because if they can manage to get near to that 40-run target, this is going to be a fighting total on the board. The way they have started this innings, losing wickets for just 6 runs, I think for just 10 runs they had lost 3 wickets, and for 12 they had lost 5 wickets at a stage. But then they made a great comeback. They're having 32 for the loss of 7 wickets now. This is a good comeback made from the courtesy of the batting from Junaid, as well as Tawfiq, as well as Shreyas contributing with the boundary as well. So courtesy of that boundary, as well as some good knock from the bat of Junaid. They're having a total of
32 runs on the board. Team Reliance Katipalla, if they can manage to get past that 40 run mark in the evening conditions, that's going to be challenging total for Friends Kuttar to chase down. Especially Reliance Katipalla, they would be targeting the main opening pairs. The time is up. The time is up for Friends Kuttar. They need to bring one fielder inside the 30-yard circle. In the first innings, always, especially in the death overs, bringing one fielder inside the 30-yard circle means it's a huge punishment, because the batters are searching for the big runs. If they can manage to get in that one gap, that could easily get a boundary. Or in the meantime, in the air, Naveen takes it comfortably. The tall man, he's got a strong pair of hands. And especially the evening time, those kind of strokes are not getting the distance quite easily. Half-hearted stroke, not a lot of power behind the strokes. Normally, Junaid, if he goes for the elevated aerial root strokes, it's putting a lot of power. But the bat swing definitely did not put ample amount of power. So the scoreboard is having 33 for the loss of 8 wickets for Team Reliance Katipalla. So Afnan into the middle. And it's surprising, we are seeing the absence of his brother Arafat. Afnan is a very capable striker as well, but his brother is a more technically well-sounded batsman. But Afnan, he lacks some experience, but he's got the power to clear off the fence. He can clear the fence, but it's not going to be such an easy job, especially when Mahesh Kuttar is bowling the final over. Oh, look at that delivery. Look at that one. Sunil makes a mistake in the fielding department. And one run which is added in the form of byes. Signal which is came from the main umpire Azmal Nandawara. So scoreboard is having 34 for the loss of 8 wickets. Last 3 more balls are remaining from Mahesh. So far he has done a great job in this over. Oh, good delivery. Absolutely good delivery. And Mahesh saying that no need to throw at all. And Santosh, the experienced wicketkeeper, did not take the throw as well, because they know at this situation more than anything they need to get a dot balls, because even more than getting the wickets, if they do the job of getting the dot balls, that's enough. Oh, what a stroke! What a stroke! This is surprising to see from Shreyas, because normally he's struggling to make connection, but it requires a lot of skill to play that switch it reverse, right on the money, right on the block, and straight away he dispatches it into that deep extra cover region. But Taif is present there, he collects it, and batsman Shreyas had ample time to get in a couple of runs between the wicket. 36 on the board for the loss of 8 wickets. This is the final ball of the first innings. Ball which is going into the deep extra cover region, and it crosses the fence for 4 runs. Taif couldn't manage to stop that one. Shreyas, what a knock this is. 2 boundaries in this innings from the bat of Shreyas. 7 balls and scored 12 valuable runs. This could be the match-winning innings from the bat of Shreyas. I want to remind that the later innings, the second innings is going to decide. This could be the runs which could result in the victory of Team Reliance Katipalla. And Team Friends Kuttar, they would be regretting if they lose the match by a couple of runs margin. They would be really regretting that one. You can see that Taif is not at all in the picture, not even close to that delivery. And some mistakes, I think, in the fielding department. They should have kept the fielder a little bit close towards that deep extra cover, the wideish long off region. And Shreyas straight away playing that right into that area, and scored 12 valuable runs with the help of 2 boundaries in just 7 balls. Those could be the winning runs from the bat of Shreyas. So 41 is the target from 36 deliveries. And changes here in the commentary box. This is me, Rashid Sankolege, for the final time in day number 2 of Friends Trophy 2026. And before start of the second innings, I would like to call upon one of the exciting Hindi and English commentator, Prashant, to the microphone. Over to Prashant, sir. Thank you, Rashid. What an innings by Shreyas and the tail ending end. What a batting. He struck
boundaries as well as he scored all over the ground in surprising with the reverse sweep against the bowler Mahesh. Is experienced man of Underarm cricket from side of Friends Qatar. Friends Trophy 2026. This is the second quarter-final match, I think, of this tournament. Will be playing between Reliance Katiballa versus Friends Qatar. Ratish is a man in the manual scoring end. The live telecast done by Shine Sports of this tournament. They are spreading Underarm cricket all over the world for Underarm supporters as well as the fans out of the country who they love Underarm cricket. So a little bit cloudy moment. So a little bit cloudy moment today. So bowler introduced to attack Rahul from the mess command. Here comes the ball. Want to go for the sweep shot. Complete only beach and wicket keeper fumbled. Well gathered by the backstep fielder. The shot third man Rajan. The power play is on. 41 to get. 41 runs is the target set by Reliance Katipalla for Friends Kutta. Here comes the ball. Second time. Again a swing and miss. Again well gathered by the fielder. The shot third man. The fastest delivery bowled by Rahul. 2 consecutive dot deliveries now. Pritham and Tyagaraj, the opening players from Friends Kuttar. Pritham is on the striking end. Tyagaraj is on the non-striking end. The shorter man want to go for the sweep shot because he knows that when the power play, just only 2 fielders we can keep out of the circle for save the runs. Here comes the ball. Yes, good delivery. Brilliantly bowled. Brilliantly bowled. This is now the batsman under pressure. 3 consecutive dot balls in the power play. 3 consecutive dot balls in the power play. It builds pressure in front of the batsman now. Little bit cloudy moment in Mangalore today. 4 time is over. Oh, it's again, but it's far from onside region this time. White signal by the umpire, Mr. Azmal. Experienced man of Underarm cricket, Azmal. As well as Vivek. Followed by Vivek Bolur. Excellent all-rounder from Challenge Bolur. Oh, it's a well bowled and well stumped. Well stumped, and question will be asked. He goes for the upstairs now. Little bit exercises for one of the topmost players among Mangalore, who has the responsibility of TV umpire, Mr. Pradeep Kotari. It was a quick stumping, but I think he's safe. Yes, he's safe. Not out signaled by the umpire, TV umpire. The green signal. So green light will be on. Here comes the ball. 2 deliveries left. Good over, turning it to the side for Reliance Katipalla. 41. That's beautiful. Every single moment captured by the cameramans of Shine Sports, Savas and Samas. These 2 pretty handsome guys in the camera, and well bowled. Jotted again. Batsman under pressure now. Batsman is under pressure now. I think the right end will be handed over by the captain to bowl for Rahul. Right arm medium fast. Here comes the ball. Oh, he's not giving such a room for the batsman to free their arm. Just gentle push on the mid off region for a single. Open the account and end of the over. Signal by the umpire after completion of first over comes on to 2 without losing any wicket by the side of Friends Qatar. Yes, after winning the toss, they decided to ball fast. शुरुआती पर रसिद रक्षण करने के लिए यहाँ पर निर्णय ले चुके थे और 40 रन इस वक्त विपक्षी टीम को इस वक्त देने के बाद 41 रन के लक्ष्य इस वक्त रख चुका है और इस 41 रन लक्ष्य यहाँ पर पीछा करने के वक्त पर पहला ओवर समाप्त करने के बाद 2 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर
So after the completion of first over, score is on 2 runs for no loss. Still, they need 39 runs in remaining 5 overs. Still, one power play over is there. Shreyas introduced to attack. Shreyas introduced to attack from side of Reliance Katipalla. This is a good field setting for by the captain of Reliance Katipalla. Well bowled, well outswing. Started with the outswing. It's a good swing. Is a getting swing now for Shreyas. Just 2 steps and his arm action. Look at that. Oh, it's a brilliantly bowled. Brilliantly bowled. Well bowled. Excellently bowled by the bowler. Completion as it missed out by the batsman. Pritham is in trouble now. He is in trouble now. He is under pressure. Both the 2 power play bowlers not giving such a room for the batsmen free their arms against him. 41. It's a good target to defend. Look at that clarity of the camera of Shine Sports. These 2 handsome guys capturing every single beautiful moment of this tournament in front of the spectators. The live telecast done by what a delivery that is. Quicker one by Shreyas for Pritham. Just again general position in the mid-on region for a single. With that single scores on to 3 runs on the board. Excellently bowled. Is these 2 overs is tidy overs in power play. Very, very tidy overs in power play. Here comes the ball. Oh, is again in swing. Variations. That's the important thing in underarm cricket. Variations are needed when you are in front of a good team, in front of a good batsman. If you would have been bowled the dot deliveries, you have to do the variations. Here comes the ball. Oh, straight into the black hole. Straight into the black hole. The googly one. Googly tried by Shreyas. Completely beaten straight into the black hole. The bowler says, oh boy, you will be missed. I'll be hit. Timbers would have been broken in the form of bowled out. The first wicket fall in the contribution of 3 runs. The France Qatar. They are in deep trouble now. They are in deep trouble now for 3 for 1 in a power play. What an over. What an over by the 2 bowlers by Reliance Katipalla, Shreyas and Rahul. That shows definitely in first class cricket. The previous over will be dotted by the bowler. This is a pressure, under pressure. Your second over will be getting a wickets. Last delivery of second over. New man walks into the middle at number 3 is Nishan. Nishan is on the striker end. Here comes the ball. Oh, not easy boy. What a shot. Struck and straight into the long striker end, wicket end. So it will be end of the over. Tidy over. Another tidy over from the Reliance Katipalla after completion of 2 overs. Score moves on to 3 with the loss of 1 valued wickets. यस दूसरी ओवर यहाँ पर समाप्त करने के बाद 3 रन पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है. जिस तरीके से वो जाना जाता है कि श्रेयस अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त रिलायंस काटीपल्ला के टॉप सीडेड गेंदबाजों में एक माना जाता है और इस वक्त अपने 2 ओवर पहला ओवर राहुल अच्छी तरह से वहाँ पर गेंदबाजी किए. अब दूसरी ओवर पर इस वक्त श्रेयस ज़्यादा तक वहाँ पर देखे जाए तो पिछले 3 मैच पर दूसरी ओवर के वहाँ पर फेंकने वाले खिलाड़ी रक्षित थे, लेकिन अब इस वक्त थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद श्रेयस को यहाँ पर बुलाए. वो जाना चाहता है कि अब बल्लेबाज खासकर बढ़िया बल्लेबाजी है और इन बल्लेबाजी को यहाँ पर रुकावट करना है तो इन गेंदबाजी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. अब इस वक्त सोचबूझ के साथ इस वक्त इंट्रोड्यूस यहाँ पर करते हुए तीसरी ओवर की शुरुआत का गेंद, पहला गेंद इस बार सीधे गेंद ऑफिस से काफी दूर निकल चुका है. ओ माय गॉडनेस, जिस तरीके से वहां पर गलती किया है पहले इनिंग्स में विकेट कीपर फ्रेंच कुत्तार की, अब इस वक्त रिलायंस काटीपल्ला के विकेट कीपर थोड़ी सी यहाँ पर गलत कर रहा है. रन इस वक्त एक्स्ट्रा की ओर से निकलते हुए और देखना पड़ेगा कि अब अगला गेंद पहला गेंद लेकर तैयार. अब इस वक्त इस बार सीधे गेंद को स्वीप करना चाहा, बॉल्ड एम क्लीन हिम अप. आई थिंक
is gone. Bold या ऑटोमेटिकल स्टंपिंग देखना पड़ेगा क्या कुछ यहाँ पर क्या हो चुका है देखना पड़ेगा इस बार सीधा बोल्ड एम क्लींस अप द second wicket has been going on here going back to pavilion now 5 रन बनने के बाद 2 विकेट यहाँ पर गिर चुका है और देखना पड़ेगा कि बचे हुए अब रन्स और चाहिए मैच को जीतने के लिए 36 रन 36 हैव टू गेट रिमाइनिंग रिमाइनिंग 23 डिलीवरी और 23 गेंद यहाँ पर बाकी 36 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और दूसरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी पर इस वक्त राहुल अपने विकेट यहाँ पर प्राप्त करने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जब गेंदबाज वहाँ पर विकेट लेते हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ते हैं क्यों बच्चू जी और 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 गेंद समाप्त करने के बाद अब तीसरी गेंद इस वक्त गेंदबाजी पर राहुल तैयार इस बार सीधे गेंद को उछालना चाहा चुके और अंतिम क्षण पर इस वक्त गेंद बल्लेबाज के बल्ले पर लगते हुए बेहतरीन किनारा और 3 ball has been completed here now. Oh my goodness! अंतिम क्षण पर ज़्यादा तक along the carpet गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी अब थोड़ी सी बदलाव करने के बाद एक टिप्पा खाते हुए सीधे बल्लेबाज के बल्ले पर आते हुए गेंद last 2 balls remaining. Last 2 balls is remaining. The scorecard is reaching only 8 runs, but one thing is remaining that Pritham is on. जिस तरीके से माइक्रोफोन पर फरमाना चाहता है कि अब भी प्रीतम बाकी है लेकिन अब जैसे ही इन्होंने प्रीतम का नाम सुना है तो सीधे गेंद इस वक्त सीमा रेखा की बाहर यहाँ पर जा चुका है Yes, Kabir, there is a chance, but when there is a chance and it's a 6 signaled. It's a 6. Yes, it's a big hit. It's a big hit. Score moves on to 14 runs on the board. Still hope is there because Mahesh, you know very well that a man can pull the match from the against side. Now that is dominated. There is again the big wicket. Big wicket after striking our 6. He took a revenge. Rahul not giving again much easier to the opponent. What a bowling that. Look at that ball. Look at that swing. And it's outside behind the wicket. Wicketkeeper made no mistake. It's out. Score moves on to 14 with the loss of 3 after the completion of 3. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. Yes, after completion of the 3 over, the scorecard is reaching on 14 on the board. Now, the special thing is Shreyas is back. Yes, Kabir, Shreyas. That's the right thing of the captain. If I would have been the captain there of Reliance Katipalla, I will be hand over the ball for Shreyas because he's my the regular bowler, not a part-time bowler. I have to use Shreyas because in these kind of crucial conditions, if 2 more wickets will be fallen of Prince Kutar, there is chance to restrict a run. A good shot by the left-handed man in the deep mid-on region for a single. With that single, score moves on to 15 on the board. Now look at that man. Mahesh is the captain. He's well-known. He's a well-known player. He knows very well of this ground. He had a lot of experience and he made a team of friends, Kuttar, and he spread it all over the Mangalore. There is a friends, Kuttar. His team is there. He played sensible cricket. He is a gentle all-rounder. He's one of the topmost players among Mangalore. Here comes. See, he is going for the reverse. That is a sweep shots against Shreyas. He's a very
difficult because he can do the in swing and out swing both. He'll be bowling tidy overs, so he'll be putting pressure on the batsmen. But he's scoring against Shreyas in that typical manner. If that would have been connected, definitely that would have been the gap in the deep mid wicket region. Definitely that would be chance for the boundaries. He's looking after for boundaries when you are chasing 41 runs. Just 16 lost for 3 wickets in 3.2 overs. बिल्कुल इस रिलायंस का टिपला के एक प्रमुख अस्त्र माना जाता है और इनके सामने वहां पर स्वीप शॉट खेलना है तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा। अब इस वक्त ऐसे वहां पर हो चुका है, देखिए गेंद आने के वक्त पर रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेलना चाह आखिरी मौके पर गेंद इस वक्त बल्लेबाज को वंचित करते हैं, सीधे गेंद विकेट कीपर की दस्तों पर जाकर टकरा है। तो अब बिंदी गेंद के साथ अगला गेंद लेकर तैयार श्रेयस गेंदबाजी पर इस बार सीधे गेंद को वहां पर ढकेल दिया, एक्स्ट्रा कवर के निशान पर कोई फील्डर वहां पर नहीं थे और 3 या 4 5 6 कदम आगे बढ़ाते हुए दौड़ते हुए गेंद को फील करें और बल्लेबाज इस वक्त अपने स्थान को यहां पर बदलाते हुए यानी कि 2 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इन 2 रन के साथ रनों की संख्या पर 18 रन 3 विकेट इस वक्त गिर चुका है और 5वीं गेंद श्रेयस फिर से तैयार, फ्रंट फुट लेकर गेंद को वहां पर उछालना चाहो, ओह माय गॉडनेस, कैच हैज बीन ड्रॉप्ड। सीधे गेंद को वहां पर आगे की ओर निकलते हुए फ्रंट फुट लेकर सीधे गेंद को उछालना चाहा, बैक टू द बॉलर की निशान पर गेंद आते हुए सीधे गेंद को कैच लेना चाहा लेकिन वो कैच ठीक तरीके से ले नहीं पाए और इसी के साथों साथ इस वक्त सिंगल के साथ रन आगे बढ़ाते हुए द 13 balls remaining 20 to have to get, oh my goodness, bowled him, crazy up, you miss it, I hit it, यहां पर कहते हैं जिस तरीके से आपने फरमाया है श्रेयस एक ऐसा गेंदबाजी है लेग कटर ऑफ कटर दोनों इस्तेमाल करते हुए और अब इस वक्त थोड़ी सी बाहर की और गेंद कट होते हुए हैव अ लुक एट दैट इन द टीवी रिप्लाई, सीधे गेंद लेग कटर वन थी लेकिन शार्प लेग कटर नहीं, थोड़ी सी स्लोवर वन लेग कटर, आखिरी मौके पर एक टिप्पा और दोनों टिप्पा करने के बाद सीधे स्टम्प्स के ऊपर लगने के बाद गिल्लिया इस वक्त गिर चुका है। नाउ द बेल्ट इज कमिंग ऑफ एंड द बिग मैन, द मैन behind फ्रेंड्स कुत्तार, the backbone of the team इस वक्त back to the pavilion यहाँ पर जा चुका है। Yes, it is a big wicket. Definitely Vinci Bhai, you said look at that bowler and when if the batsman will be missed out, that definitely that will be hit stumps. Vinci Bhai, he is a legend of underarm cricket. He knows very well, played for Galera Balaga for experienced man of underarm cricket. So he said just now look at that Shreyas deliveries. He's not giving such a room for the batsmen to free their arms. If it would have been missed that delivery, definitely it will be going to bowl and that will be happened for Mahesh is a big man and the big wicket is a turning point I think for Reliance Katipalla, that wicket by taken by Shreyas from Reliance Katipalla. What an over. It's excellently bowled. Anish, one more experienced man of underarm cricket, handed over the ball by the captain. And that's a broadcast cameras will be used in Shine Sports. Look at that clarity, look at that clarity. White signal by the umpire. Yes, that's a clarity. Look at that clarity. What an clarity. It's like a international one. Oh, it's a confusely. There is again far from off-stump region for the left-handed man. He is missing line and length by Anish. He's a good bowler, I think. The wicket-taking outswing bowler, bowling wide deliveries, and is a little bit have a chatting with the umpires. He is missing his line and length. 12 deliveries, 20 need. Anything can be happen if these two will be goes on with the bowler. Here comes the ball. Oh, well bowled. Good comeback by the bowler now. It's the fastest delivery. The fastest delivery bowled by Anish. 11 left, 20 need still. 6 wickets in their hand. Franz Kuttar. I'm really a big fan of Mahesh because he left his wicket. Now is a complete unbeaten again. Behind the wicket, wicket keeper making no mistake over there. Everyone under pressure now. Everyone in under pressure of a batsman by the side of Franz Kuttar. The left-handed, right-handed combinations. Oh, is going for the big shot, but it's landed safely in front of the fielder. Just a single for the batsman. When you're not getting a ball for the big shot, just to try to rotate the strike, make it single and come closer to the target. Now just 19 need in remaining 9 balls. Loss of 4 valid wickets. 6 wickets still in the hand. बिल्कुल अब इस वक्त ताहिफ बल्लेबाजी पर आते हुए वो जाना जाता है कि द ब्रदर ऑफ बासित उल्लाह
ज़्यादा तक बढ़िया स्ट्रोक खेलने पर माहिर खिलाड़ी है। इनकी बल्ले पर एक छक्के इस वक्त लगा है तो मैच की नक्शा बदल सकते हैं और 1-6 कैन चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द मैच। और इस वक्त ऐसे यहाँ पर बढ़िया स्ट्रोक ज़रूर चाहिए टीम फ्रेंच कुत्तार इस वक्त कमबैक करना है तो ज़ोरदार अपील वहाँ पर, लेकिन शायद आखिरी मौके पर गेंद लेग स्टंप की बाहर जाने वाले गेंद थे और अंपायर इस वक्त सिर्फ लेग बाइस का इशारा यहाँ पर देते हुए और थोड़ी सी ठंडी हवा यहाँ पर मैदान पर आते हुए और 4 ओवर इस वक्त cool and calm situation now coming up here और the cricket Kashi, the lords of Underarm cricket Mecca इस वक्त UCG ground और इसी के साथों साथ थर्ड अंपायर तृतीय अंपायर की मदद मांगते हुए इस मैच श्रृंखला यहाँ पर आयोजन करते हुए फ्रेंड्स उर्वा proudly presenting the French Trophy 2K26 that's day number 2, the last match of the prestigious day number 2 is going on here. Team French Kutta taking against Reliance Katibal after winning the toss. They decided to ball fast. They given 40 runs and 41 is a chasing total for French Kutta. Now 9. The 7 ball 16 in this situation. 7 गेंद 16 रन की आवश्यकता थी और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है. दिस इज अ बिग ब्लो फॉर द टीम फ्रेंच कुत्तार. It's a touch and go is 50-50 ball at the end when the wicketkeeper collecting just bells Mose and he is in behind the line just 6 inches away. That's out should be given by the TV umpire, is experienced man of Underarm cricket, Pradeep Kothari. He is played for young UFCA as well as United Mangalore. One of the topmost wicket keepers in Underarm cricket I would have been seen in Mangalore. Yes, there is a founder of Young France, is Pradeep Kothari. He's called as Mohammad Azharuddin of Mangalore. At that time, he's playing that flick shots I have seen here. What and that shot in a flick of risk in leg stump region, the square leg region. Quickly, when he's getting a ball, just flick for a single. Excellent. He's playing excellent that shot. That's what it would be called as Mohammad Azharuddin of Mangalore. Now his match is on still. 25 runs, loss of 5 wickets. Yes, 6 balls remaining, 16 have to get. 6 गेंद यहाँ पर बाकी, 16 रन चाहिए और बल्लेबाजी पर सनी लाते हुए इस बार गेंद को चलना चाहा चूंकि bowled him. 1 more wicket is back into the pavilion. और देखिए वहाँ पर सीधे गेंद स्वीप करना चाहा, आखिरी मौके पर अंदर की ओर आते हुए गेंद सीधे गेंद अलोंग द कारपेट, जैसे अंग्रेज में कहते हैं, बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुके थे. एक्स्ट्रा क्यों करना, काफी तेजी के साथ परिवर्तन के तौर पर धीमी गति के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाजी इस वक्त वंचित होने के बाद इनके पैर और भल्ले के बीचों बीच इस वक्त गेंद निकालते हुए और सीधे जाकर स्टंप्स के ऊपर लग चुका है और गिल्लियां इस वक्त उड़ते हुए. द बेल्स इज नाउ कमिंग ऑफ. नाउ द व्यूअर्स आर गेटिंग मच एंड मोर. साइंस स्पोर्ट्स इस वक्त इस मैच श्रृंखला के लाइव टेलीकास्टिंग यहाँ पर करते हुए. So new man walks into the middle at number 7, Mr. Naveen. So my college mate, Naveen. He's my college mate. We are together in college, Gokarnatheshwara College. Me and Naveen is excellent overarm player. I think you have to be promoted for 4th number because he's excellent single taking batsman, rotating the strike, has the ability to hit big shots. He finds the gap, going for the reverse sweep, and what a shot! What a shot by Naveen! He's going for the reverse sweep, but he can get only 2 runs. They are coming back for the 3rd chance of run out, and under pressure again. One more, and it will be completion of runs. Good running between the wicket. Excellent. Naveen is a reverse sweep and getting a 4 runs for that shot. What a shot. Look at that connectivity. Fabulous hit by Naveen. So I know very well because I was a college partner of him. We are studied in Gokarnatheshwara College. We are together played for lots of cricket in Overarm. So I know very well. He's excellent cricketer, Overarm also, and now he's making to trying getting that target for Franz Gupta. 4 remaining, 12 to get.
या बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने एक अच्छे स्ट्रोक वहां पर लगाते हुए थोड़ी सी मुश्किल सामना करते हुए खिलाड़ी गेंद को फील किए थे और अब अगला गेंद इस बार गेंद को सीधे खेले गेंद इस वक्त स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड इस वक्त टीम की कप्तान अपने जिम्मेदारी के साथ वो जाने जाता है कि अब गेंद सीधे अच्छी तरफ से यहाँ पर फील्ड करते हुए और कुछ बातचीत यहाँ पर गेंदबाजी के साथ यहाँ पर करते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा यूसी परिसर पर एक दिग्गज खिलाड़ी बेल्ट एरिया के एक अनुभवी खिलाड़ी है यह प्रदीप द कैप्टन ऑफ द साइड इस वक्त गेंद को सीधे वहाँ पर चढ़े और इसी के साथ एक और रन यहाँ पर बन चुका 2 balls remaining 10 have to get Yeah, just 2 remaining. They have to get 10 runs, but still match is on for both the two sides. Naveen, you have to think for one big shot. There is yes, broadcast cameras used by Shine Sports of live telecast, and the 3 handsome cameramans will be capturing beautiful moments of this underarm cricket. Naveen looking after the fielding set for him by the bowler. Here comes the ball. And he goes for the big one, but could not be connected in the right path. Coming back for the second, and they can get easily over that. With that, 2 score moves on to 33 runs on the board. 1 left, now 8 needed in last delivery. Anything can be happen if the bowler bowled no balls or wide deliveries. There will be one more chance. If no ball bowled, there is a free hit. If it would have been 8-6, definitely there would have been a chance for the match. Scores are to make a tie. But now all eyes will be on the bowler, and it should be legal, I think, and legal delivery. Naveen missed out, and victory for Reliance Kadipalla. Congratulations for the winners, and better luck for losing captain for your future games. Friends Kuttar, I really love this team because by Mahesh is a one man, is the backbone of that team. Actually, he shows there is a one team. Franz Kuttar will be there. He can give a tough fight for any team for the Mangalore. That's a big teams in big tournaments. That's a Friends Trophy 2026 organized by Friends Urwa, the legends. And now this is the second quarterfinal match of this tournament, and they are qualified. Reliance Kadipalla, one of the topmost teams among Mangalore, for the semi-finals. So I would like to thank all the sponsors once again, and the 3 cameramans, they're capturing again the beautiful single moments over there, the handshaking that shows the discipline. Look at that discipline by Franz Kuttar, lining up and wishing the partners, but they never in their mind they lost their matches, but they're appreciating, they're wishing for Reliance Kadipalla. Look at that discipline. Congratulations once again, Reliance Kadipalla, and better luck for losing captain for your future games. Franz Kuttar, one of the top teams among Mangalore. Now I would like to thank Mr. Ratish in the manual scoring end, as well as Shine Sports, the total crew with owned by Jonas and Rizwan, the owners of Shine Sports, as well as cameramans Samas, and one more man, Iftaz, in the economic scoring end. Thank you so much, everyone, and I would like to thank Mr. Vivek Bolur, as well as Mr. Kabir, the co-commentator, as well as Mr. Asmal, the one of the topmost players among Mangalore. Thank you so much once again. We'll be meet tomorrow morning at 8:30, I think, in the sharp time of Indian timing. Until then, Shabakar, good night. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you so much. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent